माननीय सभापति जी, Thank you. Thank you. Part and parcel of my family. जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपने मामलों को अनुमोदित पाठ के तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने की कृपा करें। श्री दयानिधि मारन जी। Sir, vanakkam sir, Bharga Tamil. Sir, the Union Budget 2025 had higher significance than the other annual budgets, as this was a full year budget of the NDA's third term, sir. But once again, sir, the NDA's budget favors only the corporates over the common man. The government should have present a budget that prioritizes the needs of the common man. The structural issues plaguing the Indian economy, like unemployment, price rise, and lack of demand in the economy, which have to be addressed by the NDA. So the combination of shrinking employment opportunities and rising costs of essential goods has left the middle class and the lower income households unable to make ends meet. Sir, as the saying goes, you can wake up a person who is really sleeping, but it's very, very difficult to wake up a person who is pretending to sleep. So today, I register my protest against this budget, which is unjust, biased, and fails to address our Indians' real problem. So, sir, the stage was set for a growth of 8% by our former Prime Minister, late Thiru Manmohan Singh's UP era. And you had everything in you needed to go big and bring in much reforms and inspire the growth where Dr. Manmohan Singh left. So, but what we got instead were a set of hollow promises and biased budgets of hoodwinking states which are going to elections. Sir, this budget is a missed opportunity. Sir, India's economy is slowing growth. The growth has now fixed at 6.4. It was 6.4% in 2024-25, and this year it is projected at only 6.8%. And the budget does nothing for the growth. The rupee has fallen to 87.35 against the US dollars. And you won't believe, in just the month of January 2025, 8 billion in foreign investments have left India in the stock market. Shame! It's just a one-month story. So the rupee has fallen to historic low against the US dollar. So the finance minister, I thought she will be here, sir. As usual, she is bunking it. I don't know why she likes to bunk whenever the opposition tries to raise the points. So anyway, it doesn't mean we'll also bunk when we'll boycott when she's replying, sir. So rupee has fallen to a historic low against the US dollar. When you were in the opposition, the same Mrs. Nirmala Sitharaman went on interviews and said the UPA government had to resign. When it was 68, said Amu Sulta, it's not even 86, it is 87.5. You want us to ask, or will you resign on your own? Sir, anyway, sir. But what will the finance minister say to us? You're wrong. Rupee is not getting weaker. Dollar is getting stronger. And we have to accept it. What does it mean? Sir, the food inflation has risen from 7.5% to 8.4% in 1 year. Sir, the common man, especially the middle class, is struggling with high prices and very low wages. The so-called tax relief benefits only 2.5 crore people at the most. That is hardly. कृपया आप खड़े मत रहें, कृपया बैठ के बात करिए। दिलकेश्वर जी, सदन में दिलेश्वर जी, कामत जी, a couple of days ago. Congratulations, Finance Minister.
I would like to start on an unusual note. The finance ministers asked this House to appropriate 20,517 crore for the Ministry of External Affairs. Usually the MEA does not figure in a budget speech, but I want to start with the MEA. I'll tell you why. In 2023-24, the past year, we allocated 28,915 crore. In the current year, the revised estimate is 25,277 crore, almost 3,600 crore less in the current year. And for next year, the finance minister is asking for only 20,517 crore, another 5,300 crore less. I wish the External Affairs Minister is here. I suspect that, and I hope not, I suspect that the Finance Minister is doing a Elon Musk on the External Affairs Minister. Somebody must explain. Are we shrinking our world presence? Are we closing down embassies? Are we closing down consulates? Be that as it may. A more serious aspect of the MEA. MEA stumbled badly in the last week, and I say that with responsibility. It's now clear that the United States informed India about the deportation. They gave a list of deportees. India verified the list and confirmed that 104 or so names are Indian citizens. So this was not a surprise to us. It was a surprise to the rest of the people. The deportation was known to the MEA. The External Affairs Minister met Secretary of State Rubio a few days before the deportation. And that was all published in the newspapers. I asked the government, did the External Affairs Minister raise the matter with Mr. Rubio? Did he know about the SOP? He told this House the SOP has been in place for many years, since 2012. If he knew about the SOP, did he protest the SOP to the Secretary of State of United States? Did he know about the SOP requires them to handcuff, tie the legs with ropes and mask? If he knew about it, did he protest to Mr. Rubio? If he did not protest, why did he not protest? And the most important question, did the External Affairs Minister... Are you yielding? Are you yielding? I'm not yielding. I'm only stating on basis of what he said. He can reply later. Did the External Affairs Minister... He can reply later. Sir, did the External Affairs Minister offer to Mr. Rubio, we will send an aircraft to bring our Indian citizens back? Yes. Another serious matter, another list of 483 Indians who have been identified as illegal immigrants. I don't know when the deportation will take place. I ask a specific question. Will the government send an Indian aircraft to bring back the Indian illegal immigrants? Now I go to the Finance Minister's trump card. No pun intended, sir. Trump card. No pun intended. Sir, when you said twice, I got worried that no pun intended. You said twice, which means pun is intended.
And I'm wondering whether your reference to Elon Musk is a compliment to the Honorable Finance Minister. Sir, I'm to looking take at to my the groove clock. of efficiency. I'm looking at my clock and my whip. I'll add up the time, sir. 1 minute I'll add. No, please, please. Income tax cut is the FM's main thrust of this debate, and she has given a number of interviews. The House should know that only 3.2 crore persons pay income tax, from the last figures available. The rest file returns, but they pay nil tax. She has raised the government has raised the threshold from 7 lakhs to 12 lakhs, and it applies to all taxpayers right up to the highest taxpayer. Now, I've looked at the CBTT statistics of taxpayers, the last available statistics. My rough calculation is about 80 to 85 lakh taxpayers will go out of the tax net from next year, and 2.5 crore will benefit. But the 2.5 crore includes not only the middle class, which the finance minister passionately championed, it includes 2,27,315 persons who returned a total income of more than 1 crore. It includes 262 persons who returned a total income of more than 100 crore. And it includes 23 persons who returned a total income of more than 500 crore. So this is not benefiting the middle class alone, which I welcome, but it's benefiting the very rich and the richest in the world. Yes. Finance ministers also claimed that she had foregone 1 lakh crore rupees. Yet she has claimed that the net tax revenues to the center will grow by 11.1% in 25-26. In 24-25 also it grew by 11%. So it's about the same number. After foregoing 1 lakh crore, in this budget, how does she claim that the net tax revenues to the center will grow by the same 11%? This is pure magic, not mathematics. I will reserve how this magic unfolds, and I will comment on it later. Secondly, the finance minister says this 1 lakh crore will go into consumption, and that consumption will boost the economy. I find initially a lot of cheerleaders accepted that claim. But in the last 2-3 days, even the finance minister's cheerleaders are becoming skeptical about it. I asked the Honorable Finance Minister, will not part of the 1 lakh crore go into savings? SBI chairman has hoped that part of it will come to him and the banking system. Will not part of the 1 lakh crore go into repaying old household debts? Will not part of the 1 lakh crore go into travel abroad? Will it not go for educating children abroad? And will it not go into consuming imported goods? If you deduct all this, how does the Honorable Finance Minister claim that the entire 1 lakh crore will go into consuming domestic goods and services? It's only consumption of domestic goods and services will boost the GDP rate. And besides, what is 1 lakh crore when compared to the size of the GDP? The size of the GDP this year is 324 lakh crore. 1 lakh crore of 324 lakh crore is 0.3. You are
are you seriously saying, and are you asking this House to believe that 0.3% will boost the economy? My humble advice to the finance minister is, don't rely on only one engine of growth, consumption. Look at other engines of growth like exports, capital investment. Those other engines must be revved up. You can't rely upon one engine of growth. Most of this consumption will not go into consuming domestic goods and services. Now contrast what she has forgotten. She remembered the middle class, but I congratulate her for that. But what about the section of the people whom she has forgotten? Look at the plight of Indian households. I'm taking purely from government numbers. Between 2012 and 2024, in the 12-year period, food inflation was 6.18%. Education inflation was 11%. Healthcare inflation was 14%. These have crippled Indian households. Household savings have fallen from 25.2% to 18.4%. And household consumption saving in September survey in 2023 shows, and mark these numbers, average monthly per capita expenditure of a rural family is only 4,226. And in urban areas, it is 6,996. Now we must examine these numbers more closely. This is the average for the whole India, 4,662 and 6,996, average for the whole India. But the bottom 50% will be even less. And bottom 50% of the 50% will be even less. Now, what has this budget done for the average Indian household in the bottom 50% and the bottom 25%? Nothing. What relief has the Honorable Finance Minister given them? She could have done one of several things. I'm not saying she should have done all the four things that I'm mentioning. She could have done one of several things. One, instead of cutting income tax, or along with cutting income tax, she should have cut the GST. Everybody pays GST. The richest and the poorest pay GST. She could have cut GST. She could have cut the tax on petrol and diesel. Everybody indirectly or directly uses petrol and diesel. She could have increased the Maganrega daily wage. She could have increased that rate because the poorest are the ones who are going to Maganrega work. And she could have raised the statutory minimum wage across the board under the Minimum Wages Act. That would have benefited thousands and thousands of labour. She did nothing, but she was focused on income tax and she was focused on the Delhi election. Let me turn to another subject. The most gravest challenge facing the country is unemployment. I think all of you will agree, unemployment is the gravest challenge. Even the treasury benches must agree. Now, the periodic labor force survey, popularly known as PLFS, concluded that unemployment rate is 3.2%.
Now, if the unemployment rate is 3.2%, and that the economic survey also repeats that, if the unemployment rate is 3.2%, I'm sure the London School of Economics, as well as every other university, teaches us that any unemployment rate less than 5% is equal to full employment. I won't get into the intricacies. If unemployment rate has fallen to 3.2%, why should we worry? We should all be happy because it's full employment according to economic theory. The same PLF says youth unemployment is 10.2%. The same PLFS says graduates unemployment is 13%. If youth unemployment is 10.2 and graduates unemployment is 13, how does it conclude that the total unemployment rate in India is only 3.2? For every job, for 100 jobs, there are 1 million applicants. For 1,000 jobs, there are several million applicants. The economic survey, sir, I quote, we need to create 78.5 lakh non-farm jobs every year until 2030. I asked the Honorable Finance Minister, what is her plan? What is the way forward to create 78 lakh non-farm jobs between now and 2030? They will be in government until 2029. So the bulk of the period is their government. They should tell us clearly a path to create 78 lakh jobs every year until the end of the government. Sir, the next I come to the famous PLI. The budget has 8 lines of expenditure on employment generation. I've looked at it closely. If I'm wrong, the Honorable Finance Minister will correct me. There are 5 lines of expenditure under PLA. There's 1 line of expenditure called New Employment Generation Program. There is 1 line called Prime Minister's Employment Generation Program. There's 1 line called Skill India. I don't know the differences between these acronyms. What is the difference between Prime Minister's New Employment Generation Program and the New Employment Generation Program? We don't have a new PM, we have the same PM. On the 8 lines in the current year, mark these numbers, sir. On the 8 lines together, I've got the breakdown, but I'm taking all 8 lines of expenditure. In the current year, the budget allocation when she presented the budget last year was 28,318 crore. This is the gravest challenge. You allocated 28,318 crore. But what will you spend? By March 31, you will spend only 20,035 crore. Why are you not spending 8,000 crore on the challenge, which is the gravest challenge facing the country? Yes. The PLI scheme is a spectacular failure. Yes. Otherwise, you would have spent this money. Employment generation is a spectacular failure. Now I look at another aspect. The wages of salaried male worker as well as female worker, but I'm giving the numbers of the male worker. The wages of salaried male worker has fallen in the last 7 years from 12,665 per month to 11,858 per month. This is own numbers. From 12,665 to 11,858. The wages of self-employed male worker has fallen from 9,454 per month to 8,591 per month. So what is the position, sir? The position is incomes are falling,
wages are falling, government expenditure is not keeping pace with the promises, household net savings have fallen, household debt has arisen. Yes. This is the plight of the bottom 50% of India. Yes. There's nothing in this budget for the bottom 50%. I think we cannot divide this House into one half speaking for the top 50% and one half speaking for the bottom 50%. I'm quite happy to speak for the bottom 50%, but I want the Treasury benches also to impress upon their ministers to speak for the bottom 50% of India. Yes. Man ki baat. Sir, let's take Make in India. They made such a hullabaloo about Make in India, Made in India. What was Make in India became Made in India. In global manufacturing trade, India's share is 2.8%. China's is 28.8%. So we are not a big player in manufacturing goods trade. The share of India's manufacturing in the GDP has fallen under this government. Yes. And I give the numbers from the economic survey. 2014, it was 15.07%. 2019, it has fallen to 13.46%. And 2023, it is 12.93%. These are the numbers of the World Bank. Economic survey has proportions in the GVA, but that has also fallen from 17% to 14%. So manufacturing as a proportion of GDP has not increased under this government. So manufacturing is a spectacular failure. PLI is a spectacular failure. So what has this government got to boast about after the last 11 years? I come to my penultimate point. Now, budget is about numbers. I don't want to burden the House with numbers, but I have to mention some numbers. So the budget is about numbers. Now, the FM, Honorable FM, claimed in a number of interviews that she has not only met the fiscal deficit target, but has improved upon the fiscal deficit target. Absolutely true. If you look at the numbers, 4.9, achievement was 4.8. But how did she achieve this 4.8? She cut capital expenditure by the central government by 92,682 crore. Not revenue expenditure, sir. Capital expenditure by the central government was cut by 92,682 crore. She cut the grants in aid to states for creating capital assets, that's another form of capital expenditure, by 90,887 crore. So total cut in capital expenditure by the center and the states, I'm not apportioning blame, but the center and the states in the current year will be 1,83,569 crore. By cutting capital expenditure by such a humongous amount, she saved on the fiscal deficit 43,785 crore. I can understand if she has saved on the fiscal deficit 1,83,000 crore. It is bad policy, but I will understand. But after cutting 1,83,000 odd crore, she saved about 44,000 crore. Is it good policy? I don't know. Is it good economics? I say no, it is not good economics. Yes. You can't cut capital expenditure and compress your fiscal deficit and say, I have met my fiscal deficit, I've improved my fiscal deficit. On the expenditure side, I want honorable members, all of us are concerned, to look at these numbers. Where are the cuts fallen?
On health, 1,255 crore. On education, 11,584 crore. On social welfare, 10,019 crore. I wish the Agriculture and Rural Development Minister was here. On agriculture, the cut is 10,992 crore. On rural development, it is 75,133 crore. And on urban development, it's 18,907 crore. Why do you make these cruel cuts? There are other unkind cuts. I won't give the numbers on Poshan, Jal Jeevan Mission, National Social Assistance Program, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Crop Insurance Scheme, Urea Subsidy, PM Garib Kalyan Yojana. In all these programs, there have been cuts. The most cruel cuts are, I hope I'm pronouncing this correctly, sir, Anusuchit Jati Yojana. Anusuchit Jati Yojana. 1,340 crore has been cut. Young Achievers Scholarship, 455 crore. Post-Metric Scholarship for Scheduled Caste, 860 crore. Program for Development of Scheduled Tribes, 670 crore. You cut money for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and Anusuchit Jati. And you say, I have reached my fiscal deficit, I've improved my fiscal deficit. Look at the grand announcements in this budget. One grand announcement was Urban Challenge Fund, para 58 of the budget speech. I was impressed. Urban Challenge Fund, 1 lakh crore was announced. What is the allocation? 10,000 crore. Jal Jeevan Mission, para 55 of the budget speech. Jal Jeevan Mission says, we have provided water to 80% of the population of India, and we will provide for the remaining 20%. We are therefore extending the scheme. The budget estimate for the current year was 70,163 crore. Actual expenditure is 22,614 crore. I mean, this is pure magic, sir. You don't spend 1/4 or 1/3 of your money, and you claim that everybody has been provided water. Now I come to my last point. Sir, you will give me 1 more minute. I would, sir. I would. I'd undertake it. Yeah. Now, what did the CEA say? The Chief Economic Advisor is a reasonably autonomous office. I'm glad the Honorable Finance Minister has given him the freedom to speak his mind and to be frank and forthright. I congratulate the Honorable Finance Minister in the end for that also. What did he say? Get out of the way. Yes. It's all we are saying, get out of the way. In a different context. Deregulate. Deregulation drives growth. Work towards giving to people back their agency and enhancing the economic freedoms of individuals and organizations. What is the response of the Honorable Finance Minister? To get out of the way and to deregulate, her response is to announce in the budget speech 7 new schemes, 8 new missions, and 4 new funds. Now, where will the money come from these schemes and missions and funds? I don't know, because there's no allocation. Sir, in conclusion, I want to say this. Half a minute. Governance is in the present. There is a government, but I'm sorry to say there is little governance.
There is no philosophy, therefore no policies. In 1991, we faced a graver situation. There was a man entered this parliament, entered the North Bloc. Yes. He had an economic philosophy. Yes. He followed it with policies that required wisdom and farsightedness. Dr. Manmohan Singh had them. And I'm urging the Honorable Finance Minister to recapture the wisdom and the farsightedness of Dr. Manmohan Singh. One last question. This is through the Finance Minister to the government. Why have you not conferred a Bharat Ratna on Dr. Manmohan Singh? I thought the former finance minister would cheer and congratulate the present finance minister for having created a record of presenting 8 consecutive budgets, surpassing that of C.D. Deshmukh. The House takes note of it. It's a history information. Rest of the issues for the two sides to deal. I call upon Dr. Dinesh Sharma. Sir, your time is 25 minutes. श्रीमान मानी हमारे नेता के द्वारा मुझे 35 का अनुमति मिली थी. How much time? 35. It stands revised. Dr. Dinesh Sharma, 35 minutes. हमारी सभापति महोदय, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे केंद्रीय बजट पर 2025-26 पर बोलने का अवसर आपने मुझे दिया. आपका धन्यवाद. और वास्तव में ये ऐतिहासिक अवसर है जब हमारी सम्मानित वित्त मंत्री के द्वारा लगातार ये मोदी 3 जो तीसरी बार इंडिया की सरकार है, उसमें 8वीं बार उन्होंने बजट को प्रस्तुतिकरण किया है. इस पूर्णकालिक केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं को मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं. मानवर ये एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की संपूर्ति करने वाला ये एक असाधारण रूप से सफल बजट है. और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसने विभिन्न वर्गों को जहां छुआ है, वहां निम्न स्तर पर जो कम आय वाले लोग थे उनकी आय का सृजन करना, उनकी आय में समृद्धि करना, ये भी इस बजट का उद्देश्य रहा है. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आवास, शहरी मामले, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं. और मैं जानता हूं कि बजट के प्रस्तुतिकरण, हालांकि ये बजट की व्यवस्था तो पहले तो 1997 तक शाम को 5 बजे होती थी, क्योंकि अंग्रेजों का जो उस समय होता था वो 11 बजे होता था. अब इसकी प्रस्तुति दिन में होती है. यानी भारतीय व्यवस्था के अनुसार जो इसका प्रतिपादन होता है. मैं माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं उनको वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए बधाई देता हूं. और बधाई इसलिए भी देता हूं कि जो हमारी लक्ष्य है 5वीं अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना, निश्चित रूप में जिस प्रकार से राजकोषीय घाटे को कम किया गया है, जिस प्रकार से हमारी जो विकास की दर है वो स्थिर रूप में लगातार बढ़ रही है, हम 2026 तक चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व के पटल पर आएंगे. और हमारा ये कहना है कि जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जो हमारे इस बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं, निश्चित रूप में ये 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना का एक रोड मैप के रूप में ये प्रस्तुत हुआ है. और ये सही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई है. और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी के बीच एक उज्जवल स्थान दिया है और इसे विकास का केंद्र बनाया है. और जो हमारी मजबूत नीतियों और दूरदर्शी सोच के कारण ही संभव हो पाया है. मानवर मैं जानता हूं, अभी
हालांकि हमारे पूर्व वित्त मंत्री महोदय समोता चले गए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है। आज एक विडंबना है मान्यवर कि भारत में और खासतौर से राजनीति में दो चीजें बहुत तेजी के साथ समाप्त हो रही हैं। एक है व्यक्ति का भरोसा और दूसरा है कांग्रेस पार्टी। ये दोनों बहुत तेजी से समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने इसको ऐसे नहीं कहा, जिन नीतियों के कारण उन्होंने अभी तक जिन बजट का वो विश्लेषण कर रहे थे, कभी गरीब को नहीं छुआ, कभी मध्यम वर्ग को नहीं छुआ। मैंने तो तमाम विपक्षी नेताओं के बयान उस समय पढ़े थे जब वो कह रहे थे कि जो मध्यम वर्ग के लिए आप जो 7 लाख की जो सीमा है उसको 10 लाख तक करिए। प्रधानमंत्री जी ने के मार्गदर्शन पे हमारी वित्त मंत्री जी ने उसको 12% तक का कर दिया, 12 लाख तक का कर दिया। जो 7 लाख करना था उसको 12 लाख तक की छूट दे दिया। यही अद्भुत समायोजन है और नेक नियति के कारण जिस प्रकार से अर्थ संतुलन बना है आज के भारत के हमारे इस आर्थिक व्यवस्था में, मैं यही कहूंगा कि आज मैं कांग्रेस के लिए कभी कभी हंसी में कहता हूं कि खुद चिराग बन के जो वक्त के अंधेरे में, खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरे में, मांगी हुई रोशनी से कभी उजाले नहीं होते। आज वो राष्ट्रीय पार्टी आज छोटे छोटे दलों पर, छोटी छोटी नीतियों पर, आज तमाम विघटनकारी मंतव्यों पर अपनी नीतियों को उद्घाटित करती है। मैं तो आदरणीय खड़गे जी चले गए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और आदरणीय सोनिया जी का उद्बोधन आज हम लोगों ने सुना है। मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और कोटिसा बधाई देना चाहता हूं। आपका जो प्रदर्शन लगातार है, आपने कम से कम दिल्ली की विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर अपनी जमानत बचाई है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप जो है आप कहते रह गए, आप बदनाम करते रह गए संविधान खतरे में है, आप बदनाम करते रह गए कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, और जनता ने आपकी जो बदनीयति थी उसको पहचाना। हरियाणा आया, महाराष्ट्र आया, दिल्ली आया और आगे की तैयारी प्रारंभ है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे मित्र हैं उनसे मैं कहूंगा कि आपकी समस्या के 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि बिना सोचे कार्य करना, जो मन में आया कर डाला, और दूसरा है बिना कार्य किए सोचते रहना। आपने जो किया नहीं उसके लिए भी आप सोचते रहते हो। आदरणीय चिदंबरम साहब ने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न देना चाहिए। आपने क्या दिया उनको? अगर 80 के दशक की बात की जाए, जब वो एक पद पर थे, संवैधानिक पद पे थे, वित्त मंत्री नहीं थे, योजना आयोग के संभवतः उपाध्यक्ष थे, उन्होंने यही जो बजट के बारे में वो कह रहे थे कि ग्रामीण में आपने क्या किया, ग्रामीण में ही तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे जो सीतारमण जी ने किया अभूतपूर्व है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय यही बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी। आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने उस समय क्या कहा था, मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए कि ये जोकरों का समूह है। उस समय मनमोहन सिंह जी जोकरों का समूह दिखाई पड़े थे। जब उनका विधेयक को एक बड़े नेता कांग्रेस के फाड़ रहे थे और वो यूजलेस दिख रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कौन नेता तो आप जानते ही हैं जो जाड़े में भी गर्मी का एहसास करते हैं। मैं यही कह सकता हूं कि आज बदले हुए समय में जब सरकार काम कर रही है तो सरकार के काम के समय आज उनको ये कहा जाता है कि आपने ये वादा पूरा नहीं किया, वो नहीं किया। अगर वादा नहीं पूरा किया तुम सत्ता में कैसे आए, कैसे हमने जीता? मैं तो कहूंगा कि हर वादा दिल से निभाते हैं हम, तभी तो जनता के मन में भाते हैं हम लगातार जीत रहे हैं, आप लगातार हार रहे हैं। और आज इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो जहां हमने वित्तीय अनुशासन को बनाया है, वहीं जो FRBM है, जो बजट प्रबंधन अधिनियम है, उसके द्वारा जो निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए जो राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने का जो संकल्प हमने लिया था, वो आज हमारी सरकार ने बखूबी इसको प्रस्तुत किया है। अगर आप बजट का अवलोकन करें, उसका विश्लेषण करें, तो अद्भुत चीज दिखाई पड़ती है कि जो वर्ष 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारा राजकोषीय घाटा था 4%। जो वर्ष 2025 का था हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ,
वो था 1.9%, और जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, बजट का जो एस्टिमेट है वो आएगा 1.5%। यही एक अर्थ प्रबंधन की कुशलता का मापन यंत्र है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से जो हमारी ये व्यवस्थाएं, अगर यही रुझान जारी रहा तो 2030, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि 2030 तक हमें राजस्व अधिशेष, जिसको आप बोलते हो रेवेन्यू सरप्लस की तरफ हम लोग तेजी के साथ बढ़ जाएंगे, बल्कि हम उसको प्राप्त करेंगे। आप कह सकते हो कि एक बार और प्राप्त किया गया 1981 में, लेकिन उसके बाद आपने क्यों नहीं प्राप्त किया? क्यों भारत को सोना बेचना पड़ा? क्यों भारत एक डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ता गया? आपकी नीतियों ने भारत को कमजोर बनाया और पराधीन बनाया, और वही कारण था कि आपने सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आप अमेरिका से मंगाते थे, यहां पर राशन कार्ड लेके लोग लाइन लगाते थे, लाठी चार्ज होता था और बामुश्किल से वो थोड़ा सा राशन मिलता। आज यही आर्थिक नीतियों के कारण आज कुछ प्रदेशों में तो 10 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है, कहीं 5 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। यही अर्थ प्रबंधन का एक सारांश है जिसको समझने की जरूरत थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज माननीय जो हमारे वित्त मंत्री महोदय हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हालांकि आदरणीय खड़गे साहब बड़े सम्मान से उनको कई बार, मैं तो ये नहीं मानता कि भूल से कहा उन्होंने माता जी कह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आदर मन में भाव रहा हो, लेकिन मां क्या है? मां तो वो है जो घर में सभी बच्चों का ख्याल रखती है, जो कमजोर है उसकी भी संपूर्ति करती है इच्छाओं की, जो सबल है उसको भी प्यार करती है, और पूरे परिवार का संचालन मां करती है। और आज अगर इस बजट को देखें तो आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिए काम किया है, वहीं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किया है, तो वहीं पर बच्चों की शिक्षा के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए बजट का अवलोकन है। तो IIT और IIM के लिए भी यहाँ कुछ न कुछ प्रावधान इसमें दिए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत का, जो लोग कहते हैं कि भारत में कि जो मूल अवस्था है, एक उसकी प्रगति का जो जड़ है, वो प्रगति का जड़ निश्चित रूप में वहां का जो मध्यम वर्ग है वो है। और पिछली सरकारों ने क्यों नहीं मध्यम वर्ग के उस पर ध्यान दिया? आज इस बजट का जो मूल तत्व समाहित है, मैं समझता हूं उसने आज तक के, इसके पहले कभी भी किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा कि हम मध्यम श्रेणी को जितनी इनकम नहीं होती उससे ज्यादा, कभी कभी तो 30% तक का उनको अपनी आय में देना पड़ता था, उसके बारे में नहीं सोचा था। आज का जो बजट है उसने निश्चित रूप से 12,75,000 तक के वार्षिक आय वालों का शून्य ये आयकर कर दिया है। अभी तो आयकर का विधेयक आने वाला है, सरलीकरण भी होगा, तमाम चीजें भी होगी। और मैं कह सकता हूं कि ये जो कदम हैं सरकार के, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले हैं। आज निवेश बढ़ रहा है, मानवर आज आर्थिक विकास तेजी से बढ़ रहा है, और यही शायद अमृतकाल की और मजबूती के साथ हमको ले जाने वाला है। अभी कुछ दिन पहले अभी RBI ने रेपो रेट कम किया है, और कुछ लोग इस पे भी व्यंग कर सकते हैं, लेकिन रेपो रेट कम होने का मतलब क्या है? लोन सस्ते हो जाएंगे, लोगों के हाथ में धन आएगा जिससे वह या तो खर्च करेंगे या उसे बचाएंगे तो निवेश बढ़ेगा, खर्च करेंगे तो उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। सारा चेन एक साथ जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि यही भारत का असली अर्थशास्त्र है जिसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए था। आजादी के बाद में वो करने में कांग्रेस की सरकार असफल रही। मैं इस बारे में भी कहना चाहता हूं कि भारत में तमाम चीजें हमारे सामने आई। हमारा जो विकास दर है, अगर हम देखें तो 25-26 में 6.4 तक इसका वास्तविक विकास दर का अनुमान है। पूंजीगत व्यय को 8.2% तक की बढ़ाने का जो अनुमान है, वो भी मैं समझता हूं कि हमारे अर्थव्यवस्था का एक दो पहलू बनकर सामने आता है कि जो हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाएगा। मान्यवर, हर क्षेत्र में काम हुआ है। अभी आवास के बारे में टिप्पणी हो रही थी। आवास, प्रधानमंत्री जी ने तो महिलाओं के नाम पर आवास का आवंटन किया है। यहां पर अगर देखें तो जो हमारी आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, उसमें तमाम लोगों का घर परिवार सुखी हुआ है। अगर अपना मकान होगा
तो एक महिला स्वस्थ वातावरण में रहेगी, स्वस्थ वातावरण में बच्चे का पालन होगा और वो स्वस्थ मानसिकता अपने अन्य कार्यों के उन्नयन के लिए अपना योगदान दे सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे जो माननीय मंत्री हैं आवास और शहरी मामलों पे, उन्होंने एक अच्छी पहल की है और जो मोदी सरकार जो तीसरी एनडीए की तीसरी बार बनी सरकार है, उसने सबके लिए घर का जो लक्ष्य रखा है, पूरे देश भर में 3 करोड़ और परिवारों को पक्का घर मिलने वाला है। और यही नहीं मान्यवर, इसके लिए योजना के लिए 5,36,000 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। मोदी जी तो कहते हैं वही गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। लोग तो कहते हैं कुछ काम के लिए मोदी जी आपको दिल्ली के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, मोदी जी इसी जन्म में जो बड़ा सा बड़ा काम है वो करने की कुवत रखते हैं। इसलिए ये जो मैं तो कभी कभी अभी वहां पर वो साथी मौजूद नहीं है, आपदा समाप्त हुई है, लेकिन आपदा से संलग्न मैं समझता हूं कि दिल्ली आज खुशहाली मना रहा है। कुछ लोग यहां पर हैं नहीं, उनसे मैं यही कहूंगा कि जाड़े में राजनीतिक व्यक्तियों को कहूंगा कि जाड़े में ठंड और व्यक्ति का घमंड, ये दोनों अकड़ पैदा करता है और अकड़ को जनता राजनीति में बड़ी जल्दी ठीक करती है। और वही हुआ, अगले जन्म की जरूरत नहीं पड़ा, इसी जन्म में फैसला हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर इस बजट से घबराहट पैदा हुई है कुछ लोगों के मन और मस्तिष्क में, और वही के एक राज्य के मेरा मुझसे गलत निकल गया, भूतपूर्व मंत्री, हालांकि भूत भी गलत नहीं है मान्यवर, भूत का विशेषता है कि वो चक्कर काटता रहता है चारों तरफ। भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मान्यवर कहा था ये बात को कि जो बजट है वो गरीबों के लिए, मध्यम श्रेणी के लिए होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्यम श्रेणी के लिए जिसने सोचा नहीं था वो हो गया। उन्होंने 10 लाख की आय सीमा कही थी, यहाँ 12 लाख हो गया। यहाँ रेपो रेट कम हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो गरीब और जो दलित महिलाएं थी उनके लिए किसी ने सोचा ही नहीं था। एसटी के लिए 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन की व्यवस्था हुई है। इसमें कौन सा वर्ग ऐसा है जो अछूता रहा? नहीं रहा कोई। लेकिन मान्यवर ये जो अमृत काल की तरफ हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, ये शायद इसलिए भी संभव हुआ कि हमने जो रोटी कपड़ा और मकान, दीनदयाल जी तो कहते थे कि भूल गए रास रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। अब नून तेल लकड़ी की जिम्मेदारी भी उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, उनके जिसको कहना चाहिए एक शिष्यवत भाव रखने वाले प्रधानमंत्री जी सब कुछ पूरा कर रहे हैं। अब अगर जरूरत है तो दवा सरकार करेगी, बच्चे का विवाह है चिंता सरकार करेगी, शिक्षा है उसके मुफ्त शिक्षा हमारी सरकार करेगी, आज रोजगार है तो मुद्रा लोन की बड़ी भी राशि सरकार देगी। हर चीज की चिंता करने वाली ये चिंतनशील सरकार है मानवर। इसीलिए मैं कहता हूं चिंता जो करे, चिंता करता है तो निश्चित रूप में वो पराभव का भाव लेता है। और जो चिंता करने वाले लोग थे वो आलोचना करते थे, कटाक्ष करते थे, व्यंग करते थे। इन सब के बीच में एक दूरदर्शी न केवल बजट आया, बल्कि बजट ने तो जो 2025 तक 40,000 और घर पूरे करने का जो संकल्प लिया है, 50,000 घर तो अभी उन्होंने एक योजना के अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्कीम, उस योजना में 50,000 मकान दे दिए। 2025 तक हम 40,000 मकान और देने वाले हैं। क्या चाहिए आपको? मैं समझता हूं कि अगर मैं तो वैसे काव्य कोई कवि नहीं हूं, काव्य का रचनाकार नहीं, श्रोता हूं, श्रवण करता हूं और श्रवण करता हूं मुझे कुछ बातें याद आती। एक छत तो हर सिर का अधिकार है, एक छत तो हर सिर का अधिकार है, भारत के घरों में पलता विकास का आधार है। दीवारें नहीं, ये हर बच्चे की मुस्कान है, हर घर में बसता भारत का सम्मान है। और ये जो भारत का सम्मान है, इस सम्मान के उन्नयन के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। और मान्यवर
मैं यही कह सकता हूं कि आज चारों तरफ जो हमारे गरीबों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसमें मैं यही कहूंगा कि जो अज्ञात को खोजने का साहस रखते हैं वही विकास की नई दिशा भी गढ़ते हैं। आज तमाम जगह पर जो नहीं हो रहा था उसको भी खोज के सरकार ने पूरा किया है। अभी 3 दिन पहले तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी के ड्राइवर कमरुद्दीन साहब का एक चित्र देख रहा था उस पे समाचार पत्रों में। कमरुद्दीन साहब सुभाष चंद्र बोस जी के ड्राइवर रहा करते थे और वो एक बेदहाली के वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने खोजा और न केवल खोजा, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का वो किया और प्रधानमंत्री चरण छूते हुए कमरुद्दीन जी के दिखाई पड़े। यही भारत है जो वाल्मीकियों के कुंभ मेले में सफाई कर्मियों का पैर धोता हुआ जहां देश का प्रधानमंत्री दिखाई पड़े, यही भारत का प्रतीक है। और माननीय यही जो विडंबना है विपक्ष के लिए, ये दर्दनाक बनती हुई जा रही है। और वो तरह तरह की बातें जहां पर जो भारत की जो प्रतीक है, भारत की जो सभ्यता है, जो भारत का एक जो सनातन है, उस पर कभी कभी आघात भी करते हैं और बाद में कभी कभी डुबकी भी लगाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो इतना निर्मल पानी था कुंभ में, यह अलग बात है। हमारे राष्ट्रपति जी ने भी दुख व्यक्त किया कि एक अप्रिय घटना घटी, नहीं घटनी चाहिए थी, सबको दुख हुआ। लेकिन जिस तरह व्यवस्था है आज कि एक जमाने में 4 करोड़ आ रहे थे, तो क्या कारण है कि 2025 में आज 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, लोग आ रहे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था भी अच्छी है और लोगों का जो जाति पाति अलग करो, काटो डांटो बांटो अलग करो, राज करो का जो अभियान था, वो सनातनियों ने एक साथ स्नान होता है। केवट साहब अगर नाव का है तो पंडित जी भी साथ में हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो दलित समुदाय जाति नहीं कोई पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता और साथ में मिलकर ईश्वर की स्तुति में अपने को नतमस्तक करते हैं। यही महाकुंभ का जो जिस्ट है, उस जिस्ट को कोई मर्म को समझ नहीं पाया। लोग गए वहां पर, वीआईपी कल्चर में गए, 100 लोगों की सेना लेकर गए थे, 11 डुबकी लगाई। सम्मानित है, हमारे में सम्मान करता हूं। लेकिन जब दिल्ली में वैसे लोग कहते हैं कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग खो जाते हैं, हालांकि कुंभ में खोया पाया का वहां पर वो लगा हुआ है कैंप। लेकिन दिल्ली के चुनाव में, जो दिल्ली का महाकुंभ था चुनाव का, उसमें 2 लड़के उत्तर प्रदेश के खो गए। एक लड़के कह रहे थे कि वो नेशनल हेराल्ड के घोटाले के आरोपी हैं, तो दूसरे उत्तर प्रदेश के लड़के कह रहे थे कि ये शराब घोटाले के ये आरोपी हैं। ये दोनों मिलेंगे, अलग होंगे, वो उनका अपना कार्य है। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने 11 डुबकियां लगाई थी, तो कम से कम यमुना मैया में आप साथ में हाथ पकड़ के एक डुबकी तो लगा लेते। आप नहीं लगाए क्योंकि आपने वादा नहीं पूरा किया, और वादा नहीं पूरा किया तो निश्चित रूप में जनता ने आपको नकार दिया। ये जो बजट है, ये वादों को पूरा करने वाला है। क्रमशः हर जगह पर एक छोटे छोटे वादों का, जनजातियों के संबंध में देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का चलाया है। अगर आपने देखें तो 24,100 करोड़ रुपया का जो बजट रखा गया है, वो न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लिए रखा गया है। अगर आप देखें कि अत्यंत जो पिछड़े जनजाति समूह हैं, उनको जो लंबे समय से उनको उपेक्षित रखा गया था, उनके लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं ये हमारी सरकार ने बनाया है। और शायद पहली बार ये जो जनजाति गौरव दिवस है, उसको मनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं कह सकता हूं कि ये ग्रामीणों के लिए, जनजाति के लिए, दलित महिलाओं के लिए, ये नौजवानों के लिए स्टार्टअप को भी दुगना बढ़ा दिया है। आज मुद्रा लोन को भी दुगना कर दिया है, रोजगार का सृजन करने वाला है। तो वहीं चमड़ा उद्योग में एक नई क्रांति लाने के लगभग 22 लाख नौकरियों का सृजन करने वाला है। तो अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो तमाम प्रकार के एआई, उसके ऊपर भी तमाम पैसा का बजट का प्रावधान किया गया है। हर तरफ ये चौमुखी विकास का, अगर इसको मैं देखूं तो ये हमारे जो लक्ष्य हैं वो मिलेंगे, महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर इसमें कोई बहाना ढूंढता है कोई कि हमने उस समय था, नहीं हुआ, आपको ये करना चाहिए था,
निश्चित रूप में हमको जो करना चाहिए था हम कर रहे हैं। हमने तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक जनजातीय विकास मिशन को शुरू किया है। उद्यमिता के लिए हमने वोकल फॉर लोकल को शुरू किया है। हमने आवासीय विद्यालयों के माध्यम से 1,25,000 आदिवासी बच्चों की गुणवत्ता की शिक्षा को हमने आगे लिया है। हमने 10 वर्षों में हमारी सरकार ने 10 से 30 नए मेडिकल कॉलेज जो है आदिवासी क्षेत्रों में खोलने का निर्णय लिया है। श्रीमान, शायद यही वेदना थी और यही वेदना बजट के राष्ट्रपति महोदया के भाषण के पहले दिन दिखाई पड़ी। आदिवासियों के लिए भाजपा सरकार योजना लाएगी, दलित के लिए भाजपा सरकार योजना लाएगी। एक बड़े नेता, मैं फिर से, क्योंकि वो सदन के नेता नहीं है, प्रतिपक्ष नेता होंगे, लेकिन उनका जोश इतना रहता, सदन में खुद तो सोते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति महोदया भाषण करती है तो कहती उबाऊ भाषण था। एक आदरणीय जो खुद बहुत अमीरी का जीवन जी रही है, वो पुअर लेडी कहती है, सुस्त लेडी या थकी हुई लेडी बताते हैं। कौन थका, इसका निर्णय आप करेंगे। एक संवैधानिक पद पर आसीन एक उच्च पदस्थ आदिवासी महिला के संबंध में इस प्रकार के वक्तव्यों का, मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में यह शर्मनाक है। और यही नहीं, एक उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं, बंगाल से आते, पहले नेता थे उनके, कहते हैं ये राष्ट्रपत्नी के रूप में उनको संबोधित किया। आप अपमान की कौन सी सीमा पर ले जाना चाहते हो। एक नेता जो कभी उनके साथ रह के उनका पूरा का पूरा वो लेते हैं, झूठ का एक पुलिंदा लेकर उनके बारे में कि ये राम मंदिर नहीं गई, ये वहां नहीं गई। अरे आपको क्या पता भाई, माननीय राष्ट्रपति महोदया तो आज कुंभ में स्नान कर रही है। यही भारत की सनातन संस्कृति है। और अगर उनके बारे में पता करना है तो सर्च कर लेना। ये धर्म को प्रदर्शन नहीं करती, वो वास्तव में अगर देखा जाए तो मई 2024 में हमारी राष्ट्रपति महोदया राम मंदिर गई थी और उन्होंने सरयू का स्नान भी किया था, वहां पर पूजा भी की थी, महाआरती में शामिल भी हुई थी। आपको जानकारी नहीं है। आप तो आरोप इसलिए लगाते हैं जिसमें आप भेद पैदा करें, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित, ये दलित, ये इनको बांटो, इनको अलग करो और फिर राज करने की परिकल्पना करो। ये कुंभ में चले जाएंगे तो कुंभ में ये सब आपस में मिलकर एक साथ कैसे हैं। इसलिए इनका जो दुश्मनी था, मैं दुश्मनी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो वो किसी और पे नहीं था, वो कुंभ पे और सनातन पर था, इसलिए कि सब आपस में मिल क्यों रहे। ये दुख की घड़ी आ जाए इसकी तलाश में भटक रहे थे। इनकी जो गिद्ध दृष्टि है वो एक दुखद घटना की तलाश में भटक रही थी, और एक घटना होने के बाद में जिस तरीके से सर्वनाश बयान लगाए गए वो मैं समझता हूं कि उचित नहीं थे। आज समय बदला है मानवर, और इस बदले हुए समय में मैं समझता हूं कि आज ये जो हमारा बजट है, ये बजट एक नई दिशा दृष्टि की तरफ बढ़ रहा है। और इसकी दिशा दृष्टि को मैं इसलिए कहूंगा कि इसमें अटल इनोवेशन मिशन से लेकर नेशनल क्वांटम मिशन तक की इसमें उपलब्धता है। इसमें विजन है एआई और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने से लेकर डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने तक की। इसमें एक सोच है 10,300 करोड़ के ऐतिहासिक निवेश के साथ इंडिया एआई मिशन, यानी भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिदृश्य को क्रांतिकारी रूप में बदलने के लिए भारत को तैयार करने का। मानवर, ये बजट शोध और नवाचार, जिसको आप कहते हैं कि रिसर्च एंड इनोवेशन के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है। ये ऐसे नहीं, अटल जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, अटल जी ने उसमें एक जोड़ा जय विज्ञान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, और जय अनुसंधान के साथ आज ये तमाम नवाचारों के लिए आज हमारे वित्त मंत्री जी ने तमाम इसमें प्रयोग करने के लिए धन का आवंटन किया है। शायद यही परिणाम था कि जो वैक्सीन का उत्पादन भारत ने स्वयं कर डाला, और वैक्सीन का उत्पादन करने के साथ साथ 120 देशों को भारत ने उसकी संपूर्ति की। अब भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब वो याची नहीं है, ये भारत अब दाता बनके 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना की तरफ तेज गति से अपनी आर्थिक यात्रा को पूरा कर रहा है। और मान्यवर,
मैं ये कहूँगा कि आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की तरफ, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ाने की तरफ, और अगर कहा जाए निजी भागीदारी से रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के साथ साथ 20,000 करोड़ के निवेश की तरफ बढ़ रहा है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा जो भारत है वो नवाचार अनुसंधान की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। शायद यही विकसित भारत 2024 की परिकल्पना, 2047 की परिकल्पना है। नारी जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हमने बहुत सारी ये कविता की लाइन को समय समय पर प्रयोग किया है, इसका उल्लेख किया है। लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि उस समय की व्यवस्था थी, नारी जो आधी आबादी की हकदार थी उसको अधिकार नहीं मिला था। उस नारी के अत्याचारों की मार थी, शिक्षा नहीं थी, तमाम कुरीतियों की शिकार थी वो। उसके पास में अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ने की कोई उपाय नहीं थे। तमाम रूढ़िवादिता से घिरी हुई वो नारी के बारे में शायद उस समय, आज से 50 साल पहले की ये उक्तियां कि नारी जीवन है तेरी वो यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, नहीं। आज के मोदी जी के भारत में, प्रधानमंत्री काल के भारत में अब नारी जीवन है तेरी कहानी नहीं है। अब नारी के जीवन में ना आंसू है न पानी है, नारी के जीवन में उमंग है, उत्साह है, आगे बढ़ने की परिकल्पना है। और यही कारण है कि आज मान्यवर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बाल विवाह की मुक्त के भारत अभियान, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये लखपति दीदी योजना, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इनके साथ साथ अगर आप देखो तो 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान, और इनके साथ साथ 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। 1 करोड़ और 15 लाख महिलाएं इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। यही भारत है, यही भारत की अर्थनीति है, यही भारत का प्रबंधन है, यही भारत का स्वराज्य है। और मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने में जो आगे जो है कि जो बीते 6 महीने हैं, ये इसमें 50 लाख महिलाओं ने इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। मान्यवर, बहुत सारी चीजें, मैंने तो एक उक्ति बताई, एक कविता की लाइन बनाई। मैं लखनऊ का हूं और लखनऊ में एक शायर हुए थे, मशहूर शायर मजाज लखनवी। उन्होंने कहा कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अब वो आंचल से वो परचम लहरा रही है। आज वो गृहिणी नहीं है, आज वो फाइटर प्लेन को चलाने वाली भी बन चुकी है, आज वो नेतृत्व करती भी है, तो आज वो राजनीति में भागीदारी भी कर रही है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर ने पूरे विश्व को भारत का विश्लेषण करने के लिए मजबूर किया है। मान्यवर, मैं कह सकता हूं कि आज जो जहां प्रधानमंत्री जी ने, जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि राजकुमार राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनके बारे में कहते हैं कि राजकुमार राम को भगवान राम का बनाने का कार्य जनजातीय समाज ने किया था। आज उस जनजातीय समाज के उन्नयन के लिए जिस प्रकार से काम किया है, मैं समझता हूं कि ये अद्भुत है। और तमाम विश्लेषणों पर अगर देखा जाए तो आज ये 70 साल के बाद भी आज भारत अपने आगे बढ़ने की जो कगार पे चला है वो है हमारे देश का संविधान। और शायद संविधान ने जो कहा था कि हमारे यहाँ का सब निचले स्तर के लोगों का उन्नयन हो, तो आज मध्यम श्रेणी के लोग जो आज 8वां वेतन आयोग बना है, आज उनको रेपो रेट कम करने के बाद लोन की सीमा बढ़ेगी, वो बचत करेंगे। आज जो जिस प्रकार से उनको ये 12 लाख रुपए तक का आयकर की सीमा से वो मुक्त हुए हैं, मैं समझता हूँ खर्च जब बढ़ेगा तो ये जो सीमाएं हैं, वो लाभ हैं, वो भारत की विकासशीलता में आगे बढ़ेंगे। मैं आदरणीय विद्युत जन यहाँ से लापता हो जाते हैं, रोज ही हो जाते हैं। आज क्या है, ये पूरे भारत के परिदृश्य से लापता हैं। मैं उनको कहना चाहता था, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लकीर दूसरों की छोटी करने में क्यों लगे रहते हो? कभी आपने लकीर को बड़ा करने की क्यों नहीं सोचा? मोदी जी कहते नहीं, करते हैं। और शायद यही कारण है कि जो लक्ष्य का निर्धारण नहीं भी था, उस लक्ष्य के निर्धारण के साथ आज हमारा जो प्रकल्प है वो तेजी से बढ़ा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ
कि आज जो महंगाई की दर है वो 10 वर्षों से 5.1% रही। आदरणीय चिदम्बरम जी चले गए, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपने क्यों नहीं किया? आपके पास तो अवसर था, आपने नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में या उसके पहले महंगाई की दर 10 वर्षों में 5.1 रही, जबकि मनमोहन काल में ये दर करीब 8.2% थी। महंगाई की दर 10 वर्षों में इस समय भारतवर्ष की 5.1 है। ये अद्भुत है। और विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ चुका है। आपके समय तो 619 अरब डॉलर था, आज ये जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है आज हमारे समय 619 अरब डॉलर बन गया है, जबकि आपके समय 292 डॉलर था जो कांग्रेस शासनकाल था। आज हम कह सकते हैं कि आज बेरोजगारी की दर जो घटी है 2018-19 में ये 5.8% थी, आज ये 3.2% ये हो चुकी है 2022-23 में। और मान्यवर जो हमारा आज का जो क्रम है, मैं समझता हूं कि चाहे वो भारतीय रेलवे हो, भारतीय रेलवे ने तो अद्भुत काम किया है, हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट का है अद्भुत काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति ने एक क्रांति लाई है, सभी भाषाओं को सम्मान मिलेगा। आज आप शोध सभी भाषाओं में कर सकते हैं, 14 से अधिक भाषाओं में आप परीक्षाएं दे सकते हैं। शिक्षा ने अभूतपूर्व काम किया है। और गृह मंत्रालय ने एक लाइन खींची है, लोग कहते थे कि आप तो झूठा वादा करते हैं, लेकिन क्या हुआ, 70 साल की समस्या 70 मिनट में 1, 2, 3 हो गया और पता चला कि धारा 370 और 35 एक गायब हो गया। आज कश्मीर में सुशासन है, आज कश्मीर अच्छा आगे बढ़ रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज रीजनल ट्रेन का युग है, हवाई अड्डे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, रेलवे, वाटरवे, हाईवे, बुलेट ट्रेन, सुधार हाईवे, ऐतिहासिक सुधार ये जो हाईवे में है, ये सारा कुछ एक अद्भुत दिखाई पड़ता है। मनवर में नागपुर गया था चुनाव में, मैं देख के अचंभित था, क्या काम किया था माननीय मंत्री महोदय ने कि नीचे सड़क है, ऊपर पुल है और उसके ऊपर मेट्रो है। ये भारत आज चुनौती दे रहा है उन विकसित राष्ट्रों को जो डेवलपमेंट प्रोसेस में अब हमारी बराबरी, हम उनकी बराबरी तो कर चुके हैं, हम उनको पछाड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, ये हमारा जो एक लक्ष्य है, मैं कहूँगा कि आज जो हमारा ये बजट है, ये तमाम उपलब्धियों को लाने वाला न केवल है, बल्कि इस बजट के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि हम आज उन बारीकियों को भी देख रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था कि हम एक संवैधानिक व्यवस्था वाला भारत देखेंगे। एक संस्कृत भाषा को वो लाना चाहते थे। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ी भी थी, लेकिन उस समय की सरकार कांग्रेस ने नहीं लाने दिया था। आज कमरुद्दीन उस समय के एक भाषा समिति के व्यक्ति थे, उन्होंने संस्कृत को भाषा में लाने के लिए संसद में भाषण दिया था, लेकिन उस सरकारों ने उस सब चीजों को नहीं किया था। आज शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस मैं इसको समाप्त करता हूं। आज फिर से लिए गए हमारे फैसले विकसित भारत की नींव रखेंगे, एक ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीकी रूप से आगे हो, जहां तरक्की, समृद्धि, नवाचार की रोशनी पूरे विश्व में फैलेगी। मैं माननीय मंत्री, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इतना दूरदर्शी और प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं और इसका पूरा समर्थन करता हूं। धन्यवाद। माननीय नेता सदन। माननीय उपसभापति जी, मैं जब भारत के पूर्व वित्त मंत्री बोल रहे थे तो मैं उसमें इंटरवीन करना चाहता था, लेकिन माननीय पूर्व वित्त मंत्री ने यील्ड नहीं किया, हमें परमिशन नहीं दी। लेकिन जो वो फैक्ट्स बोल रहे थे, मुझे लगता है कि उसको मुझे यहाँ पर क्लैरिफाई करना ये हमारी जिम्मेवारी है। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि चिदम्बरम साहब was speaking on budget or speaking on external affairs ministry. He started his speech where he questioned that did the foreign minister, external affairs minister had a talk with the Secretary of State for Foreign Affairs of America. मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्वेश्चन उन्होंने 2012 में क्यों नहीं पूछा when he was the minister.
मुझे ये प्रश्न हुआ कि why did they didn't ask this question in 2013? Why did they didn't ask this question in 2009? Or the External Affairs Minister has given a written statement, and he has come out, he gave a statement in the House, in this very House, where he explained in detail, and also along with that he took the questions also and gave the clarifications also. The clarifications were given, sir. The clarifications were given. मैं आज फिर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि ये जो डिपोर्ट किए गए ये अमानवीय ढंग से जो हुए, इसकी चिंता आपको ही है। ये अलग बात है कि 2009 में नहीं थी, 10 में नहीं थी, 11 में नहीं थी, 12 में नहीं थी, 13 में नहीं थी, जागे तो 2025 में जागे। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट को कभी भी पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और मैं बताना चाहता हूं, ऑनरेबल members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House the details of deportation from United States of America since 2009. Their numbers year-wise are as available with our law enforcement authorities is as follows: 2009 734, ये सारे का सारा पढ़ा। अंत में एक सेकंड ये हो, सुनो जयराम जी एक सेकंड, आई गेट योर पॉइंट। ये हो तो चुका है, पर होने के बाद माननीय चिदम्बरम जी ने बात कही, इसलिए आप बोल रहे हैं। आई एम चीयरिंग Honorable Leader of the House. Me. I would just like to say, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement authorities. The standard operating procedure, deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, it is effective from 2012 and provides for the use of restraints. ये रिस्ट्रेंट्स में ही 2009 से लेकर के सभी लोग आए हैं, और ये 2025 में भी आए हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस प्रकार से वही चांद कभी अमावस्या में चला जाता है, कभी पूर्णमासी में आ जाता है, तो पता नहीं, जब अपनी बारी आती है तो अमावस्या में रहते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो पूर्णमासी में अपने पूरी चांदनी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है। इतने वरिष्ठ नेता ने बात कही तो मुझे हाउस में इसको क्लैरिफाई करना था, मैंने इसको क्लैरिफाई किया, और मैं इसको ऑथेंटिकेट भी करता हूं। You will get your term after one speaker. All right. I permit one second. I permit very brief intervention by Tiruchi Shivaji. 1 minute. Sir, he gave a clarification that it is happening since 2012 that they are deported in the Air Force flight. But we would like to know whether they are being handcuffed and chained even from 2012. That's what he said. That's what he said. No, sir. No, sir. He said not it. He has not told that. He didn't tell that. The honorable. He didn't tell that. The honorable. He didn't tell that. Happened only this year, sir. One second. Let me clarify. I persuade members of the House, they are very learned, to know about the procedure. Mr. Chidambaram knows it much more than anyone else. The expression used by the Honorable Leader of the House is very categorical restraint. You know that. And restraint means... Sir, 2009 he said so. He exactly says the same thing. ये लोग इधर के लोग कभी जेल नहीं गए हैं। इनको इधर के लोग, अरे भैया मैं इधर बोल रहा हूं। इनको मालूम नहीं है कि जब कस्टडी ली जाती है तो आपको ध्यान में होगा।
ask them to behave actually. मुझे मालूम नहीं है शायद ये किसी जुर्म में गए होंगे, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं यहाँ सार्थक बाबू मैं इधर की बात कर रहा हूँ, क्यों बीच में आ रहे हो? आप उधर की बात क्यों कर रहे हो? प्लीज इन्होंने जेल नहीं देखी है। कस्टडी में जब किसी को लिया जाता है, इसमें सारे एसओपीज लिखे हुए हैं। यू हैव टू फॉलो दोस एसओपीज फॉलो किए जाते हैं, वो सारे एसओपीज फॉलो किए जाते हैं, और वही फॉलो 2009 में भी हुए जो 2025 में हुए। The House is progressing rather well, and ignore the first few minutes. It should not be a precedent. I will make one appeal. The honorable members of this House may work to get more involved with the procedure, and the restraint used quote within quote by the leader of the House and its connotations are sometimes dictated for survival and safety of the person subjected to restraint. Once again, after the External Affairs Minister made this statement, I learnt myself in detail to all that the External Affairs Minister had indicated, and I will share it with Jairamji during course of the day in my chamber, and he will fully appreciate that restraint is sometimes generated for pure safety of the person concerned. I call Sri Ritambra Banerjee. Sir, I stand to make my speech. Ritambraji, you have 15 minutes. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. I stand to make my speech speaking on the budget for the All India Trinamool Congress. As an MP from Bengal, this is a special time to be speaking. Last week, history was being made in my state. Captains of industry, thought leaders, heads of missions of 40 countries, and leading entrepreneurs from across the world were drawn to Bengal for the two-day Bengal Global Business Summit. Last week, many path-breaking projects were announced, from AI to tourism, from steel to energy to telecom. About a mammoth of rupees 4 lakh plus crore in new investments and tens of thousands of prospective jobs made the headlines. One of the world's biggest industrialists said this at the Bengal Global Business Summit in Kolkata, quote, "Now Bengal is also witnessing a renaissance in economy and business, and no power on earth can stop Bengal's resurgence," unquote. Yes, madam, Bengal means business. Now let me dissect the below par union budget presented last week. India has more than 50% of its population below the age of 25 years and more than 65 below the age of 35. Now the question is whether the country looks upon this population as a liability or as a resource. This is the basic question which the budget must deal upon. And sir and madam, in the dark times, will there also be singing? Yes, there will also be singing. There will be singing about the dark times. The previous budget, the Honorable Finance Minister has just left, the previous budget presented by her in July 2024 after the Lok Sabha election had accorded priority to employment and skill development given the nature of the election mandate. The Finance Minister had announced a Prime Minister package of 5 schemes and initiatives to facilitate job and internship opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of rupees 2 lakh crore. However, this year's budget, February 1st, did not refer to the Prime Minister's package even once. There is not even a single mention of the package. What we learned that the cabinet note on employment-linked incentive scheme is under finalization, Ministry of Labour and CII discussing it with the relationship between capital expenditure and employment generation. In simple words, the future of the scheme looks completely bleak. Now the periodic labour force survey, the PLFS, it's a government data. It reveals that in 23-24, youth unemployment rate 15 to 29 years has gone up to 10.2,
and the unemployment rate among graduates 13%. The latest economic survey data is showing that every year the self-employed male workers, the real earnings are decreasing constantly from 17-18. There is a constant decline. The real wage of male workers, salaried workers, constantly declining. Surplus labor inundating the job market combined with high food inflation have severely squeezed the real incomes and livelihoods of an overwhelming majority of Indian workforce. For a finance minister and a government always telling sabke saath, sabka vikas, to overlook this is really, really dangerous. Modi government's mammoth bank heist, bank loot for the last 10 years has taken toll of our hard-earned public money. Over the last 10 years, frauds and corporate sharks frittered away at least rupees 12 lakh crore of rupees 16.11 lakh crore our banking system has written off. Out of this, the nationalized banks alone have written off more than 12 lakh crore. When the Honorable Finance Minister replies, I will urge upon that she must tell the House that how much of these written off loans of nationalized banks have been recovered. Now, we could also compare this 16.11 lakh crore that has been written off, that disappeared over 10 years with the union government budgets for education, where the total expenditure was less than 40% of this, and for health, where it was less than half. To make up for this lost money, banks charge higher and higher user charges for every little service. The rates for loans go up because banks have suffered at the hands of frauds and fund siphoning. Now, sir, the stupefying increase in the wealth of the favored 10 topmost cronies through favors, rule tweaking, and the low-value sale of high-value national assets during Modi's rule has been massive. But the rupees 12 lakh crore wipeout by nationalized banks may help us understand how the next tier of cronies and beneficiaries gain from the regime. After all, our money in banks did not really disappear. They just hopped on to line the pockets of those who knew their way around in very complex, corrupt and dark times. Now, in 1956, both the houses deliberated for 3 months. LIC was formed. The then Prime Minister of the country, Pandit Jawaharlal Nehru, gave from the corpus rupees 5 crore for the formation of the LIC. LIC started its journey. Today, LIC means 51,000 crore of rupees. LIC means 30 crore of policy holders. Now you are allowing 100% FDI, allowing total freedom and greater access to foreign capital could only retard the orderly growth of the insurance industry with the focus more on profits rather than providing the people and business the much needed security. Our Honorable Chief Minister has written to the Finance Minister last year on August 2nd. She wrote a letter asking her to withdraw the 18% GST on life insurance and health insurance policies. I quote from the letter, quote, with deep anguish I am writing to you regarding the imposition of 18% GST on life insurance and health insurance policies and the withdrawal of deductions. The GST is bad because it adversely affects the people's ability to take care of their basic vital needs. This additional burden may be acting as a deterrent for many individuals from taking new policies or continuing their existing insurance coverage, thereby leaving them vulnerable for unforeseen financial distress, unquote. Now, regarding the withdrawal of the GST on health insurances, the Finance Minister is always shifting the onus to the GST Council. Sir, madam, everybody is aware who is in charge of the GST Council, who controls the GST Council. It is the BJP-ruled states who are the majority in the GST Council. Then what is stopping the Finance Minister and her party? The lack of political will is stopping them to roll back this GST on health insurances. Madam, I was born and brought up in a refugee colony in the added areas of Kolkata. Migrated people bearing the bonds of partition had set up these colonies where from our adolescence we learned that when politics determines our future, we must determine the politics. Political awareness runs in every blood and veins of Bengal in general and these innumerable refugee colonies in particular. Though I don't have the first-hand experience of the horrors of partition, unlike my father, still like many third or fourth generation refugee, I consider my refugee ancestry as one of my greatest badges of honor.
this refugee ancestry had passed on the political understanding of fighting for legitimate rights. As a trade union activist, fighting for the rightful dues of the working people becomes my duty. You are denying the people of their dues, denying the people of Bengal of their rightful dues. You are denying the MG-NREGS workers. They are not in a begging mood anymore, as they have realized that this denial is completely political. West Bengal is owed a staggering figure of rupees 1.75 lakh crores. The delay has not only affected the implementation of critical programs, but also created challenges for local governance, particularly in rural areas that depend heavily on such funds for employment and infrastructure development. Madam, so the fight for these funds are necessarily political. We are aware that we are standing here. If we shift our position, we shift to the other side, things will fall in place. But Bengal refuses to surrender. Bengal hates to surrender. Bengal will never surrender. Bengal will never bow down. I understand the problem of the treasury benches. You cannot fight Mamata Banerjee politically. You cannot match Mamata Banerjee's good governance. You cannot match Mamata Banerjee's welfare scheme. So you continue depriving lakhs of our people. The more will be your deprivation, the sharper and greater will be our resolve, the resolve of our people to fight you in a befitting manner. The resolve finds resonance in the immortal words of the true polymath, who has been our greatest identity. গত 1000 বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, শুধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি নন, যিনি ভারতবর্ষের ধারণাকে চিরকাল একেবারে সর্বাগ্রে তুলে ধরেছেন. The greatest Bengali of the last 1000 years, it was Tagore who said, চিত্ত যেতা ভয় শূন্য উচ্চ যেতা শির, জ্ঞান যেতা মুক্ত যেতা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি. But the mind is without fear and the head is held high, when knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Now, Madam, as I am a trade union activist, I want to give this august house some necessary figures. It is believed, I am not a student of economics, but these are very basic figures that when unorganized workforce in a country goes on increasing, the health of the economy is not in a proper shape. Now let me look into the figures that are available. The figure says, in unorganized laborers in Africa, 86% in the unorganized sectors, 14% in the organized sector. In Asia, Pacific and Arab countries, 68% in the unorganized sector, 32% in the organized sector. In Americas, 40% in the unorganized sector, 60% in the organized sector. In Europe and Central Asian countries, 26% in the unorganized sector and 74% in the organized sector. And now we come to Vishwaguru's India. Just let me tell the House, as a trade union activist, we are facing these problems. There are serious implications of this. 93% of the workforce has come under the ambit of unorganized workers. Only 7% are organized workers. The organized workers definitely have some statutory benefits, but the unorganized workers are deprived of the statutory benefits. 50% contribution of the GDP of our country comes from the unorganized sector. 6% of them are only falls under the social security measures. The blood, toil, sweat and tears of these workers are the bulwark of our economy, but the budget has completely neglected them, has said nothing about them. Now I want to mention about two schemes. One is the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, PMSYM. This is a central scheme, and a state scheme of Bengal known as Binamulye Samajik Suraksha Yojana, BMSSY. The PMSYM, the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, in this, they are the unorganized people who want to come under this scheme has to contribute every month. Every month you have to contribute money. And in the BMSSY scheme of Mamata Banerjee, you need not contribute a single rupee. The entire money for 18 to 60 years is given by the government. Now,
I come to figures, flat figures. The figures tell us the report up to January 2025 in Bengal is Binamulya Samajik Surakha Yojana of Mamata Banerjee. Number of registration, unorganized workers, 1,76 lakh plus. I repeat, 1,76 lakh plus. Number of benefit distributed, 34,94,000, almost 35 lakhs. And the amount distributed is 2,606 crores. Let the central government show political will and take up the responsibility and make the entire contribution from the workers like Mamata Banerjee is doing in the central schemes. Now, sir, as I am a trade union worker and Prakash, who stays in a tea garden, he is a worker of a tea garden in the northern part of Bengal, I will mention about some tea chronology that is very essential to mention. In 2016, when I was a member of this house, Honorable Finance Minister was then Commerce and Industry Minister. This is the Gazette notification. So the Gazette notification is dated 28th of January 2016, wherein the Gazette notification, before that the Honorable Prime Minister had gone to Madarihat, they are promised about taking up some Sikh gardens. So this Gazette notification on 28th of January mentioned Birpara, Garganda, Lonkapara, Tulsipara, Hantapara, Dhumchipara, Dimnima. 7 gardens will be taken over by tea board. Within 8 months, all these gardens got closed, and it was Mamata Banerjee and the Labour Department who took all the initiative of opening these tea gardens. 2016 was the assembly elections of Bengal. Now come to 2021-22 budget. In the budget, 1,000 crores announced for Assam and Bengal tea garden. I don't know about Assam, but as far as Bengal's experience is concerned, not a single penny has reached us. Now this year when the budget has been announced, their tea imports are hampering us. The central government's decision of plucking dates there is a damage of 7% crop, tea crop, problems are there. But the tea garden, there is a discussion in the tea garden. Common workers are discussing in the tea garden. Oh, this year is 2025, so in this budget nothing will come. Bengal's assembly election is in 2026. So in 2026, definitely, in 16, there has been there, in 21, there has been there, again in 26, you will have some promises about the jumlas, about the tea gardens. But the results will come out in the month of May. Next year, when Mamata Banerjee becomes the Chief Minister of West Bengal for the 4th consecutive time, we will be back here in the House and we will not raise slogans. We will come back in the House and we will be raising people's issues. Now, Madam, the fight against the anti-people policies will intensify. The fight against the discrimination of Bengal will intensify. This regime will try to suppress all truth by all possible means. I will take half a minute, madam, just half a minute. This regime will try to suppress all possible truth by all possible means. There will be conspiracies to bury Bengal into oblivion. But the voice of Bengal cannot be choked. But the voice of Bengal cannot be stifled. The people of Bengal, under the leadership of Mamata Banerjee, will give a befitting rebuff to the anti-people policies. El Pueblo. Party has so much of time. Please do not switch the word. Please do not switch the microphone off. The party has given 40 minutes. Given 1 more minute. We have not given it 20 seconds and a microphone has been switched off. The fight against the anti-people policies will intensify. The fight against the discrimination of Bengal will intensify. This regime will try to suppress all truth by all possible means. There will be conspiracies to bury Bengal and Bengalis into oblivion. But our voice cannot be choked. Our voice cannot be stifled. Bengal, under the leadership of Mamata Banerjee. Serious hard data with him. Sir, this entire budget and the debt in this country is increasingly daily. आज जो यहाँ सब बैठे हैं ना सर, हर के सर के ऊपर आज कर्जा है, जिसके बारे में दयानिधि मारन जी बोल चुके हैं. मैं और डेटा उसके बारे में ज़रूर आगे बोलूँगी. I just want to share some details, but I'd like to start my speech with congratulating the Honorable Finance Minister for her 8th budget. And we had a lot of hopes because this was her first budget after the victory of the election. Because first last year, दो किए हमने election के पहले और बाद, but this was one full budget, so we had a lot of expectations from her. But we were clearly disappointed, and I'll put it out in data. I'm not criticizing as an opponent, but as a well-wisher of Viksit Bharat.
As per the advance estimates of the GDP, the projection has already declined. Sir, if you remember था sir, जो आज 6.4% पे आ चुका है. Rupee के बारे में मनीष तिवारी जी भी बहुत बोले. I just like to correct that. Today the price of the rupee is 87.87 today. आज की बात कर रही हूँ. And my very concern is a typical answer will come from this government. कि देश में हर देश में ये हो रहा है. Let me correct this government. I am just preempting their explanation that this happened 1 month ago globally after the change in America's dispensation and government. But today Britain has recovered from it. The dollar and the Britain pound has improved against the $1. Singapore has strengthened by 1.0% to the dollar, US dollar to Singapore dollar. And the euro also has strengthened. So the euro has strengthened, the Singapore dollar has strengthened, and so I'm only giving 3 examples. The Britain pound has done. But India has gone further down. मैं सिर्फ यहाँ किसी पे विशेष टिप्पणी करनी नहीं. I'm just putting a reality check to you that the rupee, if other countries have recovered, don't give me an argument that this is a global phenomenon, because it is not a global phenomenon. Daily this is going down. So I would want to ask them, why is this happening? आज निशिकांत जी भी काफी US aid पे बोले. I really want to have a very serious discussion. जो political point वो करे, good luck to him. I mean, in a democracy, healthy democracy, होना भी चाहिए थोड़ी नोक-झोंक. But I want to ask this government, the Honorable Prime Minister has gone to America today. He's India's Prime Minister going. So वो हमारे भी प्रधानमंत्री है. But at the same time, today's entire media has covered stories on what discussion is the Honorable Prime Minister going to have on tariffs of India. I really want to know, why are we preempting the situation of tariffs? First of all, log to वापस भेज ही रहे. उसके बाद, how are we going to react to tariffs? Like he talked about the money coming from those various tariffs, US aid, वो political मैं नहीं उसमें पढ़ना चाहती. लेकिन health के लिए over 1,000 crores of good money. यहाँ अनुप्रिया जी बैठी है, वो पहले हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी. नड्डा जी से पूछ लीजिए उनके पास. अभी भी है तो वो है अभी हेल्थ मिनिस्टर. उनसे पूछ लीजिए. over $114 million comes in aid. भले वो टीबी के लिए हो, सब पे. मेरा सिर्फ कहना है कि US aid is a good thing, but we must not write it off just कि it comes for political is my only thing. I compliment the Honorable Finance Minister on the income tax decision, but I hope she thought also about GST when she was thinking about income tax, this rebate, because agar she had given some relief in GST in many ways, states ko bhi acha hota and all the consumers would have benefited. Sir, CapEx, Krishna talked about CapEx extensively. I want to just remind him that the CapEx has been stuck at 21%, 5 of total expenditure for the last 3 years. This is the reality of Anurag Thakur's Viksit Bharat idea that he is going on and on about. The CapEx, the government CapEx and GDP ratio in 24 was 3.21%, and in this year 26 it is declined to 3.1%. Household debt, this is not my number, ये सारे RBI के number है. Household debt has risen, sir, बढ़ा है by 41%. Manufacturing is the same details which Dayanidhi Maran has spoken. I will not get into it. Foreign investments, he was talking about investments. Sir, foreign investments have been on a selling spree. बेच रहे हैं, बाहर जा रहे हैं देश छोड़ के, and the net sale of USD 11 billion in FIs in Q3 in 24-25. Trade deficit has reached USD 188 billion. तभी तो ये हाल है रुपये का. My question too is, why are people leaving India? Because they are looking for better emerging markets and the weakening of Indian rupee. So when is this government going to think and introspect out why is this repeating? Another thing, the national debt of this government, which Manish Tiwari ji has already spoken about, but I'll repeat, 58.6 lakh crore in 2014. It is now over 171 lakh crores. Can somebody give me an answer for this? Expenditure cuts, sir. Every year the government spending fraud. 2022 was 16.03. In 24 has come down to 15.04, and now it has come to 14.9. This fiscal consolidation के बारे में इतना है सरकार बोल रही है. That is because of these expenditure cuts and cuts in healthcare, in education. They have to clarify. Even no fiscal discipline, जिसके बारे में अटल जी की सरकार ने FRBM एक्ट जब लाया था,
फिस्कल मैनेजमेंट के लिए अच्छा सबने करना चाहिए, राज्य ने भी और देश ने भी. इन दैट एलोकेशन ऑल्सो सर देर आर डिपार्टमेंट्स आफ्टर डिपार्टमेंट्स, BE&RE, माइनॉरिटी अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस, जल जीवन मिशन में तो सर over 41% is not spent. It's the flagship program of this government. Can somebody tell me, just now Anurag Thakur ji said, scam Bharat to Saksham Bharat. I want to ask him, why is this program stopped? Every MP sitting here, not on this side, that side was also saying that Jal Jeevan Mission is not implemented, it is stopped. The Honorable Minister has been very kind and saying that the social sector expenditure, sir, while fiscal deficit करने के लिए RBI से dividend लेते हैं. परसों RBI was always at an arm's length. It was an independent body. Today the Honorable Governor, I should not say this about him, but he was very generous in his opening line the other day. हम सरकार को help करेंगे. Sir, for fiscal management, UPA की सरकार जब थी तब 5,000 करोड़ रुपया RBI के dividend से लिया था और जब सरकार गई थी 14 में 52,679 crores was what RBI's dividend was giving. Sir, do you know how much it is today? Today, 2.5 lakh करोड़ रुपया डिविडेंड आज RBI ने इनको दिया है. इसी से अब भी फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट इस सरकार की हो रही है. कोई बताए हमें. और अगर priorities of the government and the priorities show the real governance of today. Our Prime Minister has described this budget as a roadmap to Viksit Bharat. Am I right? Viksit Bharat. No, the word Viksit Bharat means developed India. But the numbers show very well that the path seems only a mirage. There are so many reasons to explain that. For example, the union budget was presented as a proclamation of progress, but conveniently hiding the realities in the ground of stagnant growth, growing inequality, and a sizable demographic dividend slipping off the fingers into a demographic disaster. This government's economic policies have always enriched the privileged few, leaving behind a lot of the section of the people into joblessness, inflation, and shrinking opportunities. We have got many things to say about that. Before that, the finance minister was prized highly by the chairman, that she has presented continuously 8 budgets. But what is the progress? The graph, instead of going up, is dipping down. I would like to recall what all she has told from 2019. In 2019, she, when presenting the budget, was quoting from Purananuru, which is an advice to a Pandya king, Arivudai Nambi. I don't want to take the Tamil and consume my time. In English, it says that a few mounds of rice from paddy that is harvested from a small piece of land would suffice for an elephant. But what if the elephant itself enters the field and starts eating? What it eats would be far lesser than what it would trample over. This is the version of the Honorable Finance Minister quoting Purananuru from Sangam literature. But now we experience that the union government, the elephant, the union government is trampling upon the state's fields which have cherished very much. I will substantiate why I am telling all these things. There are, of course, there are ample evidences. And second, in 2020, that was in 2019 Purananuru, and in 2020, she quoted Thirukkural. Pini inmai selvam velaivinbam aniyanba naatil vaindu. In English, the country's 5 jewels are unfailing health, farm productivity, joy, good defense, and wealth. Any person who accepts anything in reality will say
what is the development today after these budgets presented by her or by this government. Unfailing health, we are treading behind. Farm productivity, why 1 lakh tractors are waiting outside the borders of Delhi? If they are contented and if productivity is more or if they are given more, it would not have happened. So, and so also wealth. And 2021, she quoted another Thirukkural. Iyattalum, Eattalum, Kaathalum, Kaatha Vagathalum, Valladu Arasu. A good king is one who is able to acquire wealth, guard it and distribute it justly. That is it. Of course, you consume, you collect revenues, you guard it, but whether it is distributed justly to all the people equally in this country means no. As I said earlier, it enriched the privileged few and deserted the people who are in this country in the lower rung. That's what my senior colleague, Mr. Chidambaram, told here. When only 1% of this population are enjoying or controlling 22.6% of the income, and wealth is 40.1%. 1% of our population controls 40.1% of wealth and enjoying 22.6% of the income. Whereas the poor people at the bottom level, 50%, they are only getting 15% of the income and 6.4% of the wealth. This is totally disproportionate. Only the finance minister has to explain all these things. And in the 2025, she has said that as the living beings look upon the sky for rains, the citizens look upon the government for good governance. Yes, they are looking upon, but no good governance. These are all mere not allegations. What is happening is partisan approach of this government. For example, if a woman is going to buy some flowers from a woman who is selling on the roadside, she will measure it with her hands. But if the customer is regular and well known to her, you can measure it with your own hands. Because the seller's hand must be small, may be small. Like that, when they have a yardstick for the states which are ruled by the ruling party, and they have a smaller yardstick for those states which are ruled by the opposition party. They have to explain that. These are all not just allegations. There are ample evidences. My state, Tamil Nadu, being this a council of states and I represent the state of Tamil Nadu, before going into the larger issues and the greater implications, I have to mention something about my state, what all we are suffering, though we perform very well. The Tamil Nadu government is contributing to the GDP of this country 9.04%. And what we are getting by way of devolution is 4.08%. The 14th Finance Commission recommended for 42% tax devolution. The 15th person for reduced it to 41%, but actually it is only 32%. Even not that. That's what I say. When we contribute 9.04% to the GDP, we are given back only 4.08%. I have no grudges with any other person from the state, except for the way of statistics I have to tell. The Uttar Pradesh government contributes 8.19% to the GDP, but they are getting 17.94% of devolution. What is the rationale? Bihar, please. I say I have no grudges against your state, but what is happening, we have to elucidate. Bihar, GDP contribution is 2.87%, but is getting 10.08%. We give more, not even we get half of it. Why this discrimination? Why this partisan attitude? The finance minister has to enlighten us with the rationale behind this, what I call as victimization or discrimination, just because we are ruling, the opposition are ruling. But despite that,
we are doing very well, better than the union government. We can say that with head strong. It's not just a statement. The union government's allocation to education, as again our senior colleague who initiated, the former finance minister, he mentioned about Make in India. In the year 2015, lofty proclamations about Make in India was made by the Prime Minister. At the same time, Make in China was proclaimed in China. And in 2025, the recently elected President of USA, Donald Trump, has said, Make in America. This is in 2025. As soon as he assumed power, he addressed a conference of the international investors. In that, he told, you are all manufacturing from outside America and making America a market. Hereafter, you should make everything in America, then only you will be given the benefits, or else I will be taxing you very heavily, which you cannot tolerate. This is a way of coercion, or any way he is approaching, that the revenue of the status of economic position of America should improve, Make in America. What happened to 2015 proclamation of India and China? China has reached this target. India has not. Why? Because the basic things which a nation needs is education, healthcare, infrastructure. Everything has been achieved by China. But here what happens is very poor, it has to be admitted. The union government is allocating only 2.5% of total expenditure to education. That is 1,20,628 crore. My state, Tamil Nadu government, we are allocating 49,700, that is 13.6% of our total expenditure. What Tamil Nadu government is spending towards education is 40% of the total allocation by the union government to the entire country. Ours is 13.6%. And this year it is 13.17%. So also health care. The union government allocation is 1.89%. See, India is the thickest populated country. And what America does not have, we have is the youth population. America may have very good education, might have very good infrastructure, but they don't have the youth force as we are having. We are having 64% of our population as youth force. How you are going to utilize that? Because they are suffering because of unemployment. And healthcare is very much important, because the last rung of the people who work and who don't get anything. What is the reality? The income tax slab, which Madam Finance Minister has announced, that up to 12 lakh it will be exempted. I don't want to go into it. How many are the beneficiaries? Only 1 crore. 1 crore of the people are benefited. We have nothing against it. Let them enjoy it. But what about the remaining 139 crore of the people? And especially another thing. The EWS, which the government is very much proud of, economically weaker section, the slab is 8 lakh rupees per year. That is 75,000 per month. And if the residential area they are living is below 1,000 square foot and below 5 acres of land. 5 acres of land and 1,000 square foot of residential flat or anything which they live, and 8 lakh rupees is the slab for economically weaker section people. Leave that alone. But what does the BPL slab shows? I am not creating anything on my own. All the learned members here know that very well. Those who live in the urban area, if their income is below 37, they come under BPL. And in the rural area, it is 9 rupees. A person who is not able to earn even 1,000 rupees a month is considered as BPL.
But a person earning 8 lakh will be considered, that is different. But they need basically education for their children and health care. This government is allocating only 1.89 of its total expenditure to health care, whereas my state, Tamil Nadu government, is spending 5.8% of the total expenditure. What I am telling about Tamil Nadu is the Dravidian model of government by Mr. Mkstalin. What I am telling about the union government is Modi's form of government. The billionaires are increasing. In this 1 year, many will be surprised, not shocked because this is happening. 75% have added up to the billionaires list in our country. It's going up and up. How they are, that means what is happening actually? Billionaires are increasing, whereas the basic needs of the people are not fulfilled. And very important statistics, when I say that, yes, every 5 days, one billionaire is coming out up successfully. Millionaire or billionaire. Numbers are increasing. Every 5 days, India sees a person becoming a millionaire. At the same time, I have some other statistics. There are two different views. You see a very high building, a millionaire is living on the other side. The rape cases in India, daily average, approximately 87 cases per day. And murder cases, approximately 78 cases per day. Farmer suicides, approximately 31 cases. I will come. I shall come. I shall come to you. I will come, my dear brother, Mr. Murugan. I will come to your point. I know what you are telling. Wait. Thanks, you intervened. Thanks, you interrupted, and I got a point. That's different. Please, I have a very good statistics. Farmer suicide, approximately 31 cases per day. Unemployment-related suicides, approximately 9 cases per day. Human traffic cases is approximately 6 cases per day. Dalit atrocities, approximately 141 cases per day. Student suicides, approximately 36 cases per day. And cyber crimes, approximately 180 cases per day. There are two different views. One side, the rich are becoming richer. The other side, the poor are becoming poorer. And this is the real stage of this country. And he said that, what about Tamil Nadu? I am telling about Tamil Nadu only. Tamil Nadu is performing so well. See, the national average of enrollment in higher education. See, as you have presented a budget with statistics, I am also speaking on statistics. Enrollment of students in higher education, national average is 27%. And Tamil Nadu is 47%. And what is it we are getting? What is it we are getting? The UGC is used by the union government to suppress the state governments. The colleges, the universities are within the purview of the state, the jurisdiction. The land belongs to the states. The building structures, everything spent by the states. The teachers who are working there, they are also the salaries are given by the government, state government. And the students' concession and everything that is given, scholarship, everything is given by the state government. But the UGC, crossing its jurisdiction, has recently given some guidelines that the vice chancellors of those universities will be selected by a panel headed by the governor of the state and the members appointed by the UGC. What does the state government role has? You have to tell that. See, everything is ours. That is because we are maintaining the government and we are looking after education, though it is in the concurrent list. Our enrollment is 47%, but you want to indirectly bring inside your person by a select committee headed by the governor, who is always against governments which are ruled by state governments.
Whatever the people is in need of, if the state government enacts a law, that too also will not be given assent by the governor, and he will act extrajudicial activities, official things. But he will be heading the search committee, and the members will be appointed by the UGC. What will happen? There is a stiff opposition, but nobody listens. Why this is happening is, indirectly, the union government is encroaching into the powers of the states. Yes. They are transgressing. They are snatching the powers of the states, each and every manner. This is not the way. Yes. This is not the way for reforming education. Comparatively, wherever you are ruling and wherever all these things are being said, everything is very low, but Tamil Nadu is doing very well, but we are being victimized. In this budget, we had, of course, very sad observation. Our Honorable Finance Minister also belongs to Tamil Nadu. That's why she quoted Purnanuru and Tirukkural. I can also, but I am not in a position, we are only looking at the union government. We feel that we are in the Union of India. We are a state in the Indian Union, but the union government does not recognize us so. You talk much about infrastructure, and we are asking metro projects. As he said, time is ours, and we will adjust. Kindly don't interrupt. The metro projects for Coimbatore and Madurai, which has been demanded by the state government, has not been mentioned in the budget. And so many road highways which we have asked for has not found a place in this. And centrally sponsored schemes like Manarega, earlier it was 75-25, now it is 60-40. The state has spent its due share, but the center has not given its share. So also SSA, Sarva Shiksha Abhiyan. I don't know, the meaning is different. SSA, Sarva Shiksha Abhiyan. And even in that, the states are not being given the due share from the union. You know why? The states are not implementing the NEP. See, it is the state government's choice whether to accept a policy which is to the convenience of the union government. And we are saying that we have got our own new education policy. We have constituted a committee that would come out. But it says that if you don't adopt NEP, you won't be given your due share. Like UGC says, if the states doesn't abide by the guidelines of the University Grants Commission, the universities cannot award degrees to the students. How strange. Who are there to dictate? Who are there to dictate universities that you can? And surprisingly, ma'am, you yourself will say what is right or wrong. The vice chancellors to be in the universities need not have an academic background. They need not have been a professor, a tutor, an assistant professor, or anything. Any person from outside will come and head the university, and he will decide the curriculum. He will be getting the colleges. What is it? Authoritarian to the extreme is in every sector. That's why, as I said, UGC, so also the schools are victimized, that we are not entitled to have this SSA due from the center share. So also disaster relief. There were two cyclones, the Fenjam and the Minjam. So two cyclones. Tamil Nadu suffered a lot. And we have been asking for a relief measure of 30,000 crore from the union government. I also raised it during the 0 hour. And at that time, I have received a reply from the Home Ministry saying that the state could give from the SDRF. It is beyond that. It exceeds the SDRF limits. And what does the NDRF is for? They give only lame excuses. Members from all the parties with conscience tell us, we asked for 30,000 crore rupees, but we were given only 267 crore. What is it? We have to undertake so many things that have been damaged during the cyclone. Infrastructure. People have to be brought back to normalcy. For that, the states are spending, whereas the union government stays off and say, we don't have anything.
So in this way, disaster relief is not being compensated properly. The SSA, we are being victimized. The Manarega scheme, we don't get what we want. The road projects which we ask, we are not getting. And also, the devolution of taxes is also not in the due manner or rational manner to my state. Ma'am, what is happening in my country? As I said earlier, at one side it is very much we see richer people, on the other side. Very important ministry is the MSME, because the MSME is the largest employment provider next to the agriculture. And moreover, as per the budget of the finance minister, it is 7.5 crore who are getting employment. 36% of the manufacturing of this country is by MSME. 45% of the exports of this country is from MSME. But what is the support this government is extending to MSME? In the banks, when they go for PMEGP, every bank has a different rate of interest. The topmost bank, which is very closer by the person who is going to be an entrepreneur, it charges the highest. But they do not know. They cannot classify. They want that. And surprisingly, what I noticed in this budget is it is enhancing the limits of the MSME. Micro enterprises, currently it is 1 crore rupee. It will be enhanced to 2.5 crore and the turnover to 10 crore rupees. Small enterprises from 10 crore to 25 investment and turnover 50 crore to 100 crore. And medium enterprises 50 to 125 investment, 250 to 500 crore. My dear colleagues, please tell me, what is a micro enterprise? MSME people who are in just for 5 lakhs, just getting a 5 lakh loan, a woman is running something, doing some business, which gives an employment to 7 persons, 2 from the same family and 5 from that village. So giving more loans and showing that we have given that much, you have to give to more number of persons and generate employment. That is the purpose of the MSME. For example, a shopkeeper, at the time when he closes his shop, he won't come and check how much collection is there. He will see how many bills have been given, how many persons have entered his shop. That means he is bothered about the number of customers than the collection. In a mall, the customers will be very less. In a shop, in a multinational brand company, and the collection will be very much. But at the same time, ordinary textiles in our bazaar will have a lot of people. The collection will not be even half of that collected in a mall. So, which is a necessary means, you have to help the MSMEs, that too the poorest people, to have more entrepreneurs, enterprises, and that way you can generate more employment. And this year, very surprisingly, again the income tax slab, everyone is praising about, the collection of taxes, direct taxes, 56.78% is from personal income tax. And the corporate tax has come down. The income tax, direct taxes is 56.78%, out of which 53.3% is from ordinary people. What you have done to these ordinary people, instead of that, you have favoring the corporates. And indirect taxes is the remaining 42.68 or something. And the indirect taxes mostly constitute the GST. And the GST this year mainly constitute, the indirect taxes constitute 83% of indirect taxes. 83% of the indirect taxes is from GST. That is what, again, our former finance minister told here. What are you doing with that? Why don't you cut down the GST? Every person, even an auto driver, even a farmer, even a laborer in a farm, they are paying GST. Income tax is given by some other people, middle class or upper middle class or anything. Every individual is paying GST. Why don't you cut down that?
Have you cut down the excise duty of petroleum products, as he said? That would have benefited the lot in the nation. But you have not done so. You are not doing anything to the common man. You don't have them in focus. You are making a micro enterprises into a mini corporate. How can a 250 crore turnover is called as 50 crore turnover is called as a micro enterprises? MSME is not able to market. That's why the government has a scheme PPP, the public sectors have to procure from the MSMEs. 25% of their purchase should be from the MSMEs. In that, there is a sub-quota of 4% to the women and 4% to SC/ST and 3% women. That has not yet been reached. We have been telling, why don't you include OBC also in that? But though there is an allocation, a reservation, a sub-quota, but it is not achieved, they are not able to market it. What are the devices you have for the MSE products to be marketed? How will you control the interest rates equally? You can prevail upon the RBI. You can say that the repo rate or anything of that sort. But an ordinary person who goes to a bank, the nearby bank, should not be taxed or in a manner of the interest verification. So in that way, the MSME, again I say, the largest employment provider has to be taken care of. But you are trying to make it again a corporate. The indirect taxes, the GST is going up and up. I don't have, rather I cannot say everything in this very short time, that what are the GST, which is more, which is lesser. And everything is contradictory, which affects the common man. You have taken away all the revenue rights of the state governments and it has been subsumed into the GMT, but do you compensate that? You collect GST compensation cess, you collect surcharge for welfare schemes. These surcharges and cess are not in the divisible pools. So you are getting more money by way of another way, shortcut way, by way of cess and surcharge, and the union government is keeping that even not without sharing with the state governments. So the last person is paying, but the state governments are not benefited. So I have got much more to say, but as again to say, one more thing, the Pradhan Mantri Awas Yojana, PMAY. Even in that, the state government, my government, is spending 6 lakhs rupees for a house. The union government is giving only 1.5. Even that is not being given. PMAY rural and PMAY urban. So also the Jal Jeevan Mission, what was the estimate last time? Budget estimate was 67,000. But actuals were revised was 22,000. And this year again say 70,160. When you have not achieved the target you fixed the earlier year, you are giving rosy pictures. So it is only the numbers that attract the people. Again, ma'am, I would like to conclude with one thing. Whenever a budget is presented, everyone is looking. Stock market is stumbling. The middle class people are relying upon the stock markets. The poor people are expecting whether the prices would come down. Prices are going up. Wealth inequality, unequitable distribution of wealth, Pramodji. Unequitable distribution of wealth. And in such a situation, they are all disappointed. We are not speaking anything ill or ill will towards against any individual. The government of the day, which has to take care of the people, is not taking care of that. So, you have to mend your ways, or else the people will end your days. Thank you very much. धन्यवाद. श्री गोला बाबू राव. Thank you very much, Srimati Deputy Chairman Madam. Vice Chairman Madam. Thank you for giving me an opportunity to speak on the budget to the 2025-26 in this August House. I also thank my party, YSRCP,
President and former Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, for giving me the opportunity to speak on the important subject on the Union Budget. I congratulate Honorable Finance Minister for presenting the budget successfully for 8 years continuously. In fact, before I go into the details, I was given only 8 minutes time. As our seniors gave a lot of really weaknesses in the budget, I too endorse with the senior members what all they spoke about the reality in the budget. But in Telugu, there is just one sentence, Kondariki Khedam, Kondariki Modam. Modam is for the privileged sections. Khedam is for unprivileged sections. This budget from each and every point has deceived the poorer sections and the vulnerable sections. I will go through only 5-6 subjects. The budgetary allocations are fuel for the governance of the country. Everything is dependent on better financial allocation and optimal utilization of financial resources. Total expenditure 25-26 is expected to 50,65,345 crore in 2025-26, which is an increase of 7.4 over the revised estimate of 24-25. Out of this 16 lakhs, 21,899 crores is proposed to be spent on central sector schemes, which is 7.2% increase over the revised estimate of 24-25. And 5,41,850 crores is proposed to be spent on centrally sponsored schemes, which is 30.5% over the revised estimate. Government receipts, excluding borrowings, are estimated to be 34,96,409 crore, which is 11.1 higher than revised budget estimate. But it is a tough task to bridge the gap between these receipts and the expenditure of 15 crore 68,936 crore, as the revenue deficit is targeted 1.5% of GDP and fiscal deficit is targeted 4.4%. There is a great need to cut the wasteful expenditure to bridge the fiscal deficit. Government increased the income tax exemption limit to 12 lakhs, which is a great relief, which is considered to be great relief to the middle class. But in the process of government losses, 1 lakh crores. I appreciate the income tax exemption, which will benefit the large number of people in this income tax bracket. But this is no help to the poorest of the poor, who are in the margins of society, though their statistics say the number of people living below poverty line has decreased considerably. Still, there is a lot to be done for the poorer sections of the society. Due to decrease in the value of money, whatever has been given to the poor is little, and lot needs to be done. For example, the value of 500 rupees per day wages has got much value 5 years ago than now. Similarly, whatever the poverty alleviation measures are taken are not much effective in the changed economic setting. So there is a great need to improve the poverty alleviation measures to match with the increase in the cost of living. Similarly, the inflation continues to make much impact on our day-to-day life, especially household budgets, making essential commodities, fuel, transport, and health care more expensive. So a lot more needs to be done to address the basic economic problems facing the citizens, especially the weaker sections of the society. Allocation towards Manrega and PM Kisan remained as the same as the revised estimates for the 24-25, despite the fact that rural distress has been increased
government would have increased the allocation for Manrega and PM Kisan, as it remained the same since 24 budget estimates. The importance of these two schemes are well known to the government, as majority of poor and unemployed are dependent on these two programs for their livelihood. These two programs need to be given higher allocation, at least in the future. Ministry, the allocation towards rural development is estimated to increase by 14,527 crore, 8.3% to 1,90,406 crore in 25-26. The program for the welfare of women and children have been allocated the 5,65,161 crore 25-26, an increase of 18.5% over the revised estimate 24-25. These allocations include programs being implemented across all ministries. Allocation towards the welfare of women is estimated to increase due to increased allocation towards the Pradhan Mantri Awas Yojana, for which the female head of the family must be co-owner of the house. The allocation towards the welfare of children is estimated to increase due to higher allocation towards the school education under Samagra Shiksha Yojana. The allocation for scheduled castes has to increase due to increased allocation under National Rural Livelihoods Mission. New scheme for the first time, SC/ST women allocated 2,523 crores compared to the last year budget, our allocation for 1620 crores. The central schemes and projects have been allocated 1324 crores compared to last year's budgetary allocation for 910 crores. The allocation in this year's budget has increased, but there is need to implement the program to achieve the targets. For example, the funds for National Commission, SC/ST, BC have been reduced in this budget by 26 crores just over the previous years. So in this context, Madam, I want to appeal to the Honorable Finance Minister and the Government of India. Even for the entire 5 years, the Social Justice Ministry and Social Empowerment Ministry is really doing very, very meager in the entire program. Really, now really is just if you take the woman and BC welfare, SC welfare, ST welfare, all the put together are not even 2% of the total budget is allotted. It is most unfortunate. What I feel strongly, but we just instead of making Social Justice Ministry, we are making Social Injustice Ministry. This is my personal feeling about the budget. Now, we all were studied in the social welfare hostels. When we were studying, so many facilities were there. Now, in this at least for 5 years, no scholarships, no, at least National SC Development Corporation, no funds, National BC Development Corporation, no funds, or even for Women Corporation, no funds. How can they at least increase their standard of living? This is really most unfortunate. I request the Honorable Finance Minister, Honorable Prime Minister to look into this deficit. That's why I request, once again, I request the Augusta House to really think over the real deceiving to the poor people of our nation. Now, entire budget stands only for the just 90% people are poor. But the entire budget is going for rich people. Now, for example, I tell you one example, madam. Even in my state, Andhra Pradesh, our former Chief Minister has allotted 275 crores for the poor people, BCs, SCs, STs, minorities, for all the people. Thank you, Madam.
I start with the key shortcomings in this budget. Number 1 point, limited focus on wage growth. While there are mentions of employment generation and skilling initiatives, there is no clear plan to increase minimum wages or improve labor conditions. GIG and informal workers. The speech briefly acknowledges the GIG workers and proposes healthcare benefits, but it does not address concerns like job security, social security, and fair wages for the growing informal workforce. Absence of direct support for industrial labor. The speech discusses boosting MSMEs and manufacturing, but does not propose substantial measures to improve the working conditions, wages, or rights of factory and industrial workers. Housing and social welfare gaps. While HWAMIH Fund 2 is introduced to address housing concerns, it primarily targets middle-income housing rather than affordable housing solutions for the low-income workers. Lack of direct cash transfers or subsidies. Unlike previous budgets, this one does not propose new or expanded direct financial support for low-income workers to counter inflation and rising living costs. Coming straight to the state of Orissa, sad, with concern, I highlight the persistent neglect of Orissa by successive governments at the center. This budget, which was expected to bring inclusive growth, has once again failed to address the pressing issues faced by the people of Orissa. I would call it a double betrayal. They came to power and said that now Orissa has a double engine. But I fail to understand this double engine has failed in Delhi as well as in Bhubaneswar. Isn't this Delhi government, central government? I meant the Delhi government. Not the Delhi government, sorry. This double engine government had spoken a lot about, infusing urban facilities. Of course, in this regard, I would like to state that the ex-Chief Minister Honorable Navin Patnaik ji had given a tremendous boost to the urban growth of Odisha, where Bhubaneswar became the #1 smart city. It's surprising. The center has announced a huge amount for the urban development. See, Navin Patnaik ji, in his tenure, we have to do something for them. This is there should be an effort by everyone. I will say, sir, rather I will say to this house, to the girls, women of this country, please, first you stand yourself on your own feet. Think about the marriage later on. Marriage is one of the requirements of the life. I can understand that. But education is a compulsory. Besides that, sir, I have only spoken for 10 minutes. I have only spoken for 10 minutes. Please. Sir, now this is there it is required. We have to make all we have to make it. How we will do it, we have to decide it. And we have to do something for the women, and we will request you kindly do it. Sir, I am tourism. In a significant boost to tourism, the budget has allocated funds for the development of the top 50 tourist destinations in partnership with state government through a challenge mode, which is positive approach. However, after spending over rupees 2,500 crore on the 45-day long Prayag Maha Kumbh Mela, the government has not taken a visible action regarding the massive and unfortunate stampede on January 30, 2025. There is no clarity
On the postmortem reports, the number of deaths, compensation for the affected families, or the issuance of a death certificate. Why the central government has not taken any action or initiated inquiries into the negligence of the local state government? That's not, it is, you have made it is an internal issue. It is not no longer a state issue. The advertisement have made, this Kumbh Mela has been made an internal issue. Then in that case, why there should not be an inquiry by the central government itself? Why? That it should be done. One JPC should be constituted by this parliament for looking into this complaint of the Kumbh Mela, sir. You are already two JPC. You are already two JPC. One is finished. By quickly he has finished it, but the report has not come. Anyway, sir, now I am coming to Milord, sir. Sorry, I am coming to the issue, sir. The Honorable Finance Minister has given much benefit to Bihar. We don't have anything to say. Any objection? No objection. Bihar needs it. Bihar should get it. But why you have neglected Bengal? That's our question. No scheme has been introduced for Bengal's development. Systematically, central financial benefits have been withdrawn for Bengal for one reason or other without any foundation. In this background, I want to say, sir, Bengal Global Business Summit 2025 was held in the last week under the leadership of our Honorable Chief Minister. Number of countries attended 40 plus. Some of the countries are Bhutan, Germany, Japan, Kenya, Malaysia, Morocco. There are 40 countries are there. United Kingdom. Sectoral sessions was 16 on different subjects. Country sessions was 6. Bhutan, Japan, Germany, Poland, Malaysia, Netherlands. Exhibition at Vishwamangala Mela program was 215 stalls covering key sectors. Top exhibition, Government of Jharkhand, ITC, RPSG Group, Titagarh Railway Station, ONGC, Jupiter Wagon, Pattern International, Ambuja Neotia Group, Kolkata Port Trust, Everyday TCS Manipur Hospital, JIS Groups, etc. Investment and impact. Total investment proposal now has come only in 2 days, last 2 days. Please. That is 4,40,595 lakh crore. Please. 4,40,495 lakh crore. Sir, I am not naming one big industrialist who has said, very famous, recognized, gentleman industrialist I am speaking about. I am not taking about his name. He has said the Bengal is the place where the industry will be developed. And Bengal is winning. Bengal development is, today's industrial development of Bengal is because of the Mamata. That is, they have said it very categorically. And we have seen it from the his speech itself. I am not taking his name, he is not here. I am not supposed to. Therefore, we have done so many things. Sir, try to appreciate that we are having a crunch. No financial sanction is given from the central government. Either in Manrega or Awas Yojana or anything. And everything is being done from the fund of the state government. That is being done by the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. Thank you. Sir, we can say that if you ignore us, you can ignore us. We do not mind if you can ignore us. But every ignorance of yours, pupils of the Bengal will give everyday answer. Thank you. You will get the answer in 2026. Very nicely you will get the answer in 2026 when the BJP will not get even a 30 seats, will not get even a opposition leader. I can assure you, neglect Bengal, people of Bengal will give you answer. You have to come. Now it will start, sir. Sir, 1 minute. Sir, it will start. Now everyday journey will be done. Prime Minister will go, then the Amit Shah will go, then Nirmala Sitharaman will go, then everybody will go to Bengal every day. But ultimately not 30 even. They will not get 30. So you ignore Bengal, Bengal people will give you answer. Thank you. We'll get Miss a Igra big Chaudhary. step
BJP will get a big slap. Where is he? Ms. Indira Chaudhary, please. धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं यूनियन बजट 25-26 पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हूँ। भारत के संविधान के आर्टिकल 38 भारत को एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर वेलफेयर स्कीम्स के जरिए इन आर्टिकल्स को हकीकत में लाया जाए। इसलिए यूनियन बजट सिर्फ एक आंकड़ों की किताब नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकता और वेलफेयर स्टेट के संविधान से जुड़ी वफादारी का आईना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिनमें बजट भी शामिल है, ऐसी बनाए जाए जो गैर बराबरी को कम कर सके और सबसे ज्यादा गरीब वर्ग को सहारा दे। बजट वो लाइफलाइन है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सोशल सिक्योरिटी, SC/ST माइनॉरिटी, गरीबों की भलाई के लिए स्कीमें चलाई जाती है। मगर ये बजट को देखकर महसूस होता है कि ये भविष्य के निर्माण से ज्यादा हेडलाइन बटोरने का एक दस्तावेज है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली वही लोग पीछे छूट रहे हैं जिन्हें सरकार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो किसान जो बढ़ती लागत से परेशान हैं, वो नौजवान जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, और वो औरतें जो निजामती रुकावटों से जूझ रही हैं, और वो गरीब जो महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। This government is proudly marketing the income tax exemption of 12 lakhs. But the question is, how many Indians even earn that much to benefit from it? Only 2.2% of Indian population pays direct taxes, whereas no relief has been given in regards to indirect taxes, the burden of which falls on everyone, especially the poor and weaker section of the society. This clearly shows that this is not an inclusive budget. GST की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरत इस बात की है कि खाद्य सामग्री, दवा, स्कूल की किताबें और जरूरत की चीजों पर टैक्स कम किया जाए। पेट्रोल, डीजल पर टैक्स कम करने की कोई कोशिश नहीं हुई, जिसका सीधा असर हर नागरिक पर पड़ता है। आर्टिकल 41 कहता है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक हालात और रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को रोजगार दे। इस बजट ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं दिया है। नई नौकरियों की बात तो छोड़िए, जो पहले से थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितने नौजवानों को असल में नौकरी मिल रही है। सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, मगर भर्ती का कोई प्लान नहीं है। आर्टिकल 45, जिसके द्वारा सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को 6 साल की उम्र तक फ्री और जरूरी तालीम मिले, ताकि उनका बुनियादी तालीमी डेवलपमेंट सही से हो सके, जिसको संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाकर और भी मजबूती दी थी, परंतु इसकी जमीनी हालत क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं, तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में टीचर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया और AI से तालीम का इंतजाम होगा, मगर जरा जमीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में कई सरकारी स्कूल शिक्षक न होने की वजह से बंद हैं, और मदरसा एजुकेशन के बजट में 57% की कटौती कर दी गई है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? इसी तर्ज पर अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है। आर्टिकल 47 अच्छी सेहत और जिंदगी के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत और उनके वेलबींग को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन हकीकत यह है कि इस बजट का सिर्फ 2% ही आम जनता तक पहुंच पाता है। शामली जिले में 84 डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत है, मगर सिर्फ 29 डॉक्टर काम कर रहे हैं और गायनोकोलॉजिस्ट मात्र 1 है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मगर गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है। सरकार ने महिलाओं के लिए बजट बढ़ाने का दावा किया, मगर 81% इसका बजट सिर्फ पोषण योजनाओं में डाला गया है। महिलाओं के रोजगार, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सुरक्षा के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया, जिससे साफ है कि ये सिर्फ नारेबाजी थी और कुछ नहीं।
किसानों की बदहाली हम सबके सामने है, लगातार चलती आ रही है। 2016 में कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, मगर 2025 आ गया और एमएसपी पर कोई ठोस गारंटी आज भी दी नहीं गई है। गन्ना किसानों का बकाया अब तक नहीं मिल पा रहा है, और तो और उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ना मूल्य भी तय नहीं किया गया है। डीएपी, यूरिया और खाद की कमी से परेशान किसान आज भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों के लिए जो सबसे बड़ी योजना मनरेगा थी, सरकार कहती है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ है, मगर बजट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिलना बहुत शर्मसार है। औसतन 44 दिन का ही रोजगार मिल रहा है, जबकि स्कीम 100 दिन की गारंटी की होती है। भारतीय रेलवे देश के लोगों की जीवन रेखा है और इसी से यहाँ के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक जिंदगी चल रही है। देश के हर हिस्से को रेल कनेक्टिविटी से जोड़े जाना सरकार की कल्याणकारी नीति का हिस्सा है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना के रेलवे से जुड़ी 2 मांगे लंबे समय से लंबित हैं। दिल्ली शामली सहारनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और पानीपत शामली मेरठ लाइन का सर्वे अति शीघ्र ही कराए जाने की बहुत पुरानी मांग को बजट में शामिल किया जाना चाहिए। देश भर में बिजली की दरें बेहद असमान हैं। उत्तर प्रदेश में ये दरें बहुत ज्यादा हैं। देश भर में एक समान बिजली दरें लागू करने का प्रावधान किया जाए। रिवैम्प योजना में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए एलटी लाइन बनाने का प्रावधान भी जोड़ा जाए। कृषि उपकरणों व खाद डीएपी को जीएसटी से मुक्त किया जाए। किसानों की एमएसपी की मांग को पूरा करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ना मूल्य निर्धारण पिछले वर्ष से बढ़ाकर किया जाना बेहद जरूरी है। जनपद शामली व मुजफ्फरनगर को एनसीआर में तो शामिल किया गया है, परंतु वहां पर कोई विकास नहीं हुआ तथा उसको कोई भी लाभ नहीं मिला है। वहां के लोग सिर्फ प्रदूषण के बाध्यकारी नियमों से परेशान हैं, इसलिए दोनों जनपदों को एनसीआर की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं कुछ चीजें बजट स्पीच में ऐड करना चाहती हूँ। एक, ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल के अपग्रेडेशन की भी मांग है। जनपद शामली और सहारनपुर में एक महिला डिग्री कॉलेज खोला जाए। कैराना में जस्ट कंक्लूडिंग, यमुना नदी के घाट पर सौंदर्य कार्य का भी कार्य जोड़ा जाए। जनपद शामली में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाए और जो संसद निधि है, सांसदों को केवल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और एमएलए, उत्तर प्रदेश के एमएलए को भी 5 करोड़ दिए जाते हैं। हमारी मांग है या तो इसे बढ़ाकर 25 करोड़ किया जाए या फिर सिरे से खारिज किया जाए। Sir, just one minute. The union budget was an opportunity to address the pressing... Sir, just 1 minute. Please, 2 more speakers are in your party. Sir, just pressing concern of India's citizen, rising unemployment, soaring inflation, crumbling public services and deepening rural distress. Yet, instead of offering real solution, the government has focused on optics and half measures. While tax relief for the middle class is welcome, it does nothing for the millions who earn too little to benefit from it. Education remains underfunded, rural employment stagnates, and farmers continue to struggle without meaningful support. The delays in conducting the census and caste census further exposes the government's disregard for data-driven policy making and social justice. India needs a budget that prioritizes its people, not just its economic headlines, a budget that invests in human capital, strengthens social security, and ensures dignity and stability for all. But what we have instead is another missed opportunity, one that fails the poor, the youth, the farmers and the women of this country. बजट प्रस्ताव पर अपने विरोध को मैं 2 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगी। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? Speaker sir, இந்த பட்ஜெட் மக்கள் நலன் சார்ந்த பட்ஜெட் அல்ல, கார்ப்பரேட் நலன்களை மட்டுமே முக்கியமாக கொண்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ள பட்ஜெட் என்று தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இந்த நாட்டின் செல்வத்தை படைக்கிற தொழிலாளர்களும் பட்ஜெட்டில் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அதே நேரத்தில் இது பற்றி விரிவாக சொல்லுவதற்குரிய நேரம் இல்லை. ஒரு சில நிமிடங்களில் விரித்து சொல்ல வழி இல்லை. எதிர்க்கட்சிகள் நிறைய பேச வேண்டுமானால் நாடாளுமன்றம் அதிக நாட்கள் கூட வேண்டும்.
135 நாட்கள் கூடிக்கொண்டிருந்த நாடாளுமன்றம் இன்றைக்கு வெறும் 55 நாட்களுக்குள் சுருக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஜனநாயகத்தை சிலுவையில் அறைகிற வேலையாகும். இந்த வேலையை நிறுத்தி எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அதிக வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இவற்றை விரிவாக எடுத்துச் சொல்ல முடியும் என்பதை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இங்கே பீகாருக்கு சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டது பற்றி தமிழ்நாட்டிற்கு எந்தவித ஆட்சேபனையும் கிடையாது. ஆனால் தமிழ்நாடு குறிவைத்து ஏன் நிராகரிக்கப்படுகிறது, புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்பதை நிதியமைச்சர் விளக்க வேண்டும். அதுவும் குறிப்பாக எதிர்க்கட்சிகள் எங்கெல்லாம் ஆளுகிறார்களோ அந்த எதிர்க்கட்சி மாநிலங்களை குறிவைத்தே தகர்க்கிறார்கள். வெறும் டெல்லியில் பெற்ற வெற்றி உங்களுக்கு நிரந்தரம் இல்லை, இது ஒரு தற்காலிகம். அதுவும் நீங்கள் வெற்றி பெற்றதற்கு காரணம் எதிர்க்கட்சிகளில் ஏற்பட்ட பிளவு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பளித்திருக்கலாம், வேறு வகைகளில் சில முறையீடுகளை பயன்படுத்தி இருக்கலாம். ஆனால் இது நீடிக்காது என்பதை மிக குறிப்பாக இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். திருக்குறள் இருக்கிறது, ஆனால் நியாயம் இல்லை, நீதி இல்லை. அதே போல கிராமத்தை வேலை வாய்ப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? யுபிஏ கவர்மெண்டால் முன்வைக்கப்பட்ட கிராமப்புற வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தை மேலும் ஸ்ட்ரெங்தன் செய்திருக்க வேண்டும், பலப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். அதேபோல் அவர்களுக்கு வழங்குகிற சம்பளத்தையும் கூட்டியிருக்க வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் 89,000 கோடியை 86 குறைத்து விட்டீர்கள். நீங்கள் எப்படியாவது அந்த திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்றுதான் இவர்கள் பார்க்கிறார்களே தவிர அவற்றிற்கு உறுதியான வேலை வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்பது பற்றி அவர்களுக்கு கவலை இல்லை. கார்ப்பரேட் பெருமுதலாளிகளுக்கு நீங்கள் வந்த இந்த 10 ஆண்டுகளில் எவ்வளவு வரி சலுகை வருடந்தோறும் அளிக்கிறீர்கள், அதேபோல் அவர்களுக்கு எவ்வாறு கடன் ரத்து செய்தீர்கள், அதேபோல் அவர்களுடைய கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் எவ்வளவு குறைக்கப்பட்டீர்கள், இதனால் அரசின் கஜானாவுக்கு எவ்வளவு காலியாகி இருக்கிறது, குறைந்திருக்கிறது என்பதை ஒரு ஒயிட் பேப்பர் பிளேஸ் பண்ண வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நீங்கள் என்ன யாருக்காக ஆண்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது தெளிவாக வெளிப்படும். அதே போல பொதுத்துறை எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஜவஹர்லால் நேருவை குறை சொல்வதையே குறியாக வைத்திருக்கிற நீங்கள் அவர் கட்டி காப்பாற்றி நாட்டு மக்களின் சொத்தாக விட்டு போனதுதான் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள். அந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மக்களின் சொத்து. மக்களின் சொத்தை விற்கிற உரிமையை நீங்கள் எங்கிருந்து பெற்றீர்கள்? எப்படி மக்கள் விரோதமாக இதை செய்யலாம்? மக்களின் அனுமதி பெற்றீர்களா? இல்லை. எனவே இவர்கள் எதிலேயும் அக்கறை காட்டவில்லை. இப்பொழுது பாருங்கள், காப்பீட்டுத்துறை முழுக்க 100% அந்நிய முதலீடுகள் எல்லாம் அரசு தன்னை விடுவித்துக் கொள்கிறது. இது நாட்டுக்கு இழைக்கிற குற்றச் செயலாகும். அதேபோல் தென்னிந்திய நதிகள் எது பிரச்சனை? தென்னிந்திய நதிகள் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பது நீண்டகால கோரிக்கை. எனவே தென்னிந்திய நதிகளை இணைக்கிற போதுதான் தென்னிந்தியா முழுவதும் வளம் பெறும். அதேபோல் வறட்சி இருக்காது, வெள்ளப்பெருக்கால் பாதிப்பு ஏற்படாது. இவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும். இந்த அரசாங்கத்தின் சாதனை எது? ஒரு ரூபிளுக்கு எவ்வளவு, $1 எவ்வளவு? இன்னபிற நாடுகளின் நாணய மதிப்புக்கு நம்முடைய நாணயம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது? எவ்வளவு கீழே இறங்கிவிட்டது? இதற்கு யார் காரணம்? இவர்கள்தான் காரணம். நிறைவாக ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். தொழிலாளர்கள் சம்பளம் வாங்குகிறார்கள், ஆனால் நிஜ கூலி என்ன? விலைவாசி ஏறுகிறது, பணவீக்கம் அதிகரிக்கிறது, விலை ஏறுகிறது. விலை ஏற்றம் என்பது தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய கூலியை வழிப்பறி செய்கிற வேலை. கூலியை வழிப்பறி செய்கிறது இந்த சர்க்கார். எனவே இந்த சர்க்காருக்கு நாடாளுகிற தகுதி இல்லை. இந்த பட்ஜெட் மக்கள் விரோத பட்ஜெட், கார்ப்பரேட் ஆதரவு பட்ஜெட், எஃப்டிஐ ஆதரவு பட்ஜெட். எனவே நான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நிராகரிக்கிறேன். நன்றி. நன்றி. மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு நமாஸ்கனி.
நன்றி மாண்புமிகு மக்களவைத் தலைவர் அவர்களே. நிதிநிலை அறிக்கை 2024-25 மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்க வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒன்றிய அரசினுடைய இந்த நிதிநிலை அறிக்கை வார்த்தை ஜாலங்களால் ஒரு பாரபட்சமான நிதி பகிர்வாக அமைந்திருக்கின்றது. மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் இங்கே வாசித்தது பாரதிய தேர்தல் அறிக்கை கிடையாது, இந்த நாட்டினுடைய நிதிநிலை அறிக்கை. தேர்தல் வரக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமும் எதிர்க்கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு ஒரு பாரபட்சமான மாற்று பார்வையும் கொண்ட ஒரு பட்ஜெட்டாக இந்த பட்ஜெட் இருக்கின்றது. பீகார் மாநிலத்திற்கு தேர்தல் வர இருப்பதால் பல திட்டங்களை வாரி வழங்கி இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசு எங்களுடைய தமிழ்நாடு முன்வைத்திருக்கக்கூடிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள், ரயில்வே திட்டங்கள், மதுரை மற்றும் கோவை மெட்ரோவிற்கான நிதி, மதுரை எய்ம்ஸ்க்கான நிதி என்று எது பற்றியுமே வாய் திறக்காது உள்ளபடியே எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி. நீங்கள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு அள்ளி கொடுப்பதற்கு நீளக்கூடிய உங்களுடைய கரங்கள் எங்கள் மாநிலங்களுக்கு கிள்ளி கொடுப்பதற்கு கூட மறுப்பது எந்த வகையிலே நியாயம் என்று கேட்கின்றோம். தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலுக்காக தமிழ்நாட்டை பயன்படுத்தக்கூடிய நீங்கள் நிதி பெயர்கள் மட்டும் ஏன் புறக்கணிக்கிறீர்கள் என்று கேட்கின்றோம். தேர்தல் வரும்போது மட்டும்தான் எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் உங்களுக்கு கண்களுக்கு தெரிவார்களா? அரசியல் செய்வதற்கு மட்டும்தான் தமிழ்நாடு உங்களுடைய கண்களுக்கு புலப்படுமா? மக்கள் மீதான கருணையும் அக்கறையும் சொல்லில் மட்டுமல்ல செயலிலுமே காட்டுங்கள். தேசிய கல்விக் கொள்கையும் அதன் அடிப்படையிலே மும்மொழி கொள்கையும் திரிக்க நினைக்கக்கூடிய உங்களுடைய வஞ்சகமான நோக்கத்தை நிராகரித்த ஒரே காரணத்திற்காக அப்பட்டமான அச்சுறுத்தலை எங்களுடைய தமிழ்நாட்டிற்கு விடுவித்திருக்கின்றீர்கள். தமிழ்நாட்டின் எங்களுடைய மாணவர்களுடைய 2151 கோடி ரூபாயை பறித்து வேறு மாநிலங்களுக்கு பகிர்ந்து வழங்கியிருக்கின்றீர்கள். வளரும் தலைமுறையுடைய வளர்ச்சியில கை வைக்கக்கூடிய உங்களுடைய செயலை வரலாறு என்றைக்கும் மறக்காது, மன்னிக்காது. நிதி தர மறுத்து உங்களின் கல்விக் கொள்கையை எங்கள் மீது திணிக்க பார்க்கின்றீர்கள். இத்தகைய அச்சுறுத்தலுக்கெல்லாம் அஞ்சுகின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று எண்ணிக்கொள்ளுகின்றீர்களா? உங்களுடைய முன்னோர்களை கேட்டு பாருங்கள். ஹிந்தி திணிப்பு போராட்டத்தின் வீரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுவார்கள். எங்களை அச்சுறுத்தக்கூடிய நோக்கத்தில் எவர் வந்தாலும் அவர்களை தமிழ்நாட்டின் வரலாறு இருந்து துடைத்தெறிந்த வரலாறு தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றது. இந்த நிதிநிலை அறிக்கை பூனையை காட்டி யானையை மறைக்கக்கூடிய செயலை செய்கின்றது. வருமான வரி சலுகையை கொடுத்து மறைமுகமாக வரிச்சுமையையும் விலைவாசி ஏற்றத்தையும் அடித்தட்டு மக்களிடத்திலேயே ஏற்றுகின்றது. கிட்டத்தட்ட இந்த வரிச்சுமையின் மூலமாக 2 கோடி பேருக்கு மட்டும்தான் பயன்பெறுவார்கள். 140 கோடி மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டிலே 138 கோடி மக்கள் பயன்பெறக்கூடிய வகையிலே விலைவாசியை குறைக்கவில்லை. வேலைவாய்ப்பு திண்டாட்டம் தலைவிரித்து ஆடுகின்றது. அதற்கு மாற்று திட்டம் இல்லை. பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைப்பதற்கான எந்த அறிவிப்பும் இதில் இல்லை. உரத்திற்கான மானியம், எரிபொருள், கேஸ் சிலிண்டர் மானியம் உள்ளிட்ட மானியங்கள் எல்லாம் குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படி அனைத்து தரப்பட்ட அடித்தட்டு மக்களுடைய தலையிலே சுமையை ஏற்றிவிட்டு வருமான வரி சலுகை தருகிறோம் என்று மக்களை திசை மாற்றுவதெல்லாம் ஏமாற்றக்கூடிய செயல். அடித்தட்டு கிராமப்புற மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தில் முக்கியமான பங்காற்றக்கூடிய திட்டம் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டம். இது அடித்தட்டு மக்களின் மீது அக்கறை இருக்கக்கூடிய கடந்த காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சி கொண்டு வந்த திட்டம். கார்பரேட்டுகள் மீது அக்கறை கொண்ட இந்த பாரதிய ஜனதா அரசு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டிலுமே அந்த நிதி குறைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இது அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கக்கூடிய செயல். கிராமப்புறங்களை நகர்ப்புறத்தோடு இணைப்பதற்கு, பேரூராட்சியோடு இணைப்பதற்கு கூட தற்போது அந்த பகுதி கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த வேலைவாய்ப்பு திட்டம் நமக்கு பறிபோயோடி என்ற எண்ணத்தில் அந்த அளவிற்கு அவருடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு பங்களிக்கக்கூடிய இந்த திட்டத்திற்கு நிதியை ஆண்டுதோறும் குறைப்பது ஏற்புடையதில்லை. அந்த நிதியை அதிகப்படுத்த வேண்டும், அந்த சம்பளத்தையும் அதிகப்படுத்த வேண்டும். சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான இந்த அரசினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பார்வை கடந்த 10 ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து விரிவாக்கி கொண்டேதான் போகிறது. அதற்கு நிதிநிலை அறிக்கை விதிவிலக்கில்லை என்பதை இந்த சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை தொடர்ந்து குறைக்கப்பட்டு வருவதிலிருந்து நாம் பார்க்க முடிகின்றது. பட்டியல் சமூகத்திற்கும் பழங்குடியினருக்கும் சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு வரக்கூடிய ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப், போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் என்ற கல்வி உதவித்தொகை எல்லாம் கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் 6360 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் 760 கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்படவில்லை.
வெளிநாட்டிலே பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கான ஓவர்சீஸ் ஸ்காலர்ஷிப் மிக சொற்பமான தொகை மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆராய்ச்சி படிப்பிற்கான கல்வித் தொகை முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் எஜுகேஷன் ஃபவுண்டேஷன் கல்வித் தொகை இந்த அரசால் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. சிறுபான்மை மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி கல்வி கற்பதை இந்த அரசு விரும்பவில்லையா என்ற சந்தேகம் எழுகின்றது. எதற்காக இந்த பாரபட்சம் சிறுபான்மை மக்களினுடைய கல்வியிலே நீங்கள் கை வைக்கின்றீர்கள்? சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு பிரைமரி ஸ்காலர்ஷிப் கடந்த நிதியாண்டில் அறிவித்த 326 கோடி ரூபாயிலே வெறும் 90 கோடி ரூபாய் மட்டுமே செலவு செய்திருக்கின்றீர்கள். இந்த நிதியாண்டிலே வெறும் 195 கோடி ரூபாய் மட்டுமே நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் கடந்த நிதியாண்டிலே 1145 கோடி ரூபாய் அறிவிக்கப்பட்டு அதில் வெறும் 344 கோடி ரூபாய் மட்டுமே செலவு செய்யப்பட்டது. தற்போது அந்த கல்வித் தொகையும் 413 கோடி ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படி சிறுபான்மை மாணவர்களுடைய கல்வியிலே கை வைக்கக்கூடிய அரசாக இந்த அரசு இருக்கின்றது. கல்வி ரீதியாகவும் சிறுபான்மையுடைய கல்வியிலே தாக்குதல் ஏற்படுத்திட்டு பொருளாதார ரீதியாகவும் சிறுபான்மையினுடைய பொருளாதாரத்தை கை வைக்கக்கூடிய வக்ஃபு திருத்த மசோதாவை இந்த அரசு கொண்டு வர நினைக்கின்றது. வக்ஃபு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சட்டங்களின் மூலமாக நாங்கள் எந்த வகையில் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம், அதற்கு என்ன தீர்வு இந்த அரசு எதுவும் தீர்வை கொண்டு வரவில்லை. ஏற்கனவே நாங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை மேம்படுத்துவதற்காக இருக்கக்கூடிய அந்த திட்டங்களின் மூலமாக சாரி சம்பத் விகாஸ் யோஜனா என்ற ஒரு திட்டத்திலே வக்ஃபுகளுடைய சொத்துக்களை மேம்படுத்துவதற்கு 2 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் கடனுதவி அளிக்கப்பட்ட திட்டம் இருந்தது. நான் தமிழ்நாட்டினுடைய வக்ஃப் வாரிய தலைவராக பொறுப்பேற்று அந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயன்பெறக்கூடிய மாநிலங்கள் எத்தனை இருக்கின்றது, எத்தனை மாநிலங்களுக்கு எவ்வளவு தொகை அளித்திருக்கின்ற கேட்கின்ற போது கடந்த 3 ஆண்டுகளாக அந்த கடனுதவி அளிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னார்கள். ஏனென்று சொன்னால் அந்த திட்டம் சென்ட்ரல் வக்ஃப் கவுன்சிலினுடைய ஒப்புதலின் மூலமாகத்தான் அளிக்கப்படும். கடந்த 3 ஆண்டுகளாக அந்த சென்ட்ரல் வக்ஃப் கவுன்சிலே நிறுவப்படவில்லை, அமைக்கப்படாமல் அந்த திட்டத்தின் மூலமாக யாருக்கும் எந்த பணம் இதுவரைக்கும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. இப்படி சிறுபான்மையினுடைய அந்த வக்ஃபு நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவதற்கான எந்த திட்டமும் செய்யாமல் நாங்கள் ஏற்கனவே பாதிக்கக்கூடிய எங்களுடைய சொத்துக்களை நிர்வகிப்பதிலே வாடகைக்கு இருப்பவர்களுக்கு கூடுதலாக அந்த வருமானத்தை வாங்குவதற்கும் அந்த ஆக்கிரமிப்பாளர் சொத்துக்களை மீட்பதற்கான எந்த திட்டமும் இல்லாமல் வக்ஃபு சொத்துக்களை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய அளவில் இப்போது வக்ஃபு திருத்த மசோதாவை இந்த அரசு கொண்டு வருவது சிறுபான்மை மக்களை கல்வி ரீதியாக ஒடுக்க வேண்டும், பொருளாதார ரீதியாக ஒடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரே நோக்கம்தான். முடிச்சிடலாம். அடிப்படை சுகாதார வசதிகள் இன்று நாட்டின் அடித்தட்டு மக்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்காதே அதற்கு 91,858 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. கடைசி தாளுக்கு வந்துருங்க. ஒன்றிய அரசு தன்னுடைய திட்டங்களிலே ஒன்றிய அரசுடைய பங்கு தொகையை தொடர்ந்து குறைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இதனால் மாநில அரசுடைய நிதி சுமை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் பெயர் மட்டும் ஒன்றிய அரசின் திட்டம் என்று வைக்கின்றார்கள். பாரதிய ஜனதா அரசு தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் பிரதமரினுடைய வீடு கட்டும் திட்டத்தை பெரும் சாதனையாக குறிப்பிடுறாங்க. தற்போது நம்முடைய மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர்களுடைய உரையிலே கூட 3 கோடி வீடுகளை புதிதாக கட்டப்போவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் வெறும் விளம்பரத்தை மட்டுமே தேடிக்கொள்கிறார். திட்டத்திற்கு கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் 54,500 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அதில் 32,400 கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் செலவிடப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 22,100 கோடி ரூபாய் செலவிடப்படவில்லை. இதனால் பிரதமருடைய வீடு கட்டும் திட்டம் முறையாக நிறைவேற்றப்பட முடியவில்லை. என்று சொன்னால் இந்த திட்டத்திற்காக ஒதுக்கக்கூடிய பணம் என்பது ஒரு வீட்டிற்கு ஒன்றிய அரசுடைய பங்களிப்பிலே 1,11,000, மாநில அரசுடைய பங்களிப்பிலே 1,72,900, 2,83,900 ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கப்படுகிறது. இது இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இந்த தொகையை வைத்து வீடு கட்ட முடியாது. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கட்டுமான பொருளுடைய விலை, சிமெண்டோட விலை, செங்கலோட விலை, இரும்பு கல்லுடைய விலைகள்லாம் நம்முடைய நிதியமைச்சருக்கு தெரியுமா என்று கேட்கின்ற இந்த இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய விலைவாசி கேட்டது போல 5 லட்சம் ரூபாயாவது ஒதுக்க வேண்டும். மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் கலைஞர் கனவு திட்டத்தின் மூலமாக 5 லட்சம் ரூபாய் ஒரு வீட்டுக்கு ஒதுக்குறாங்க. அப்படி ஒரு முன்மாதிரியாக நம்முடைய முதல்வர் இருக்கின்றார். அதன் அளவில் நீங்கள் 5 லட்சம் ரூபாயை ஒதுக்க வேண்டும். இந்த 3 கோடி வீடு என்று அறிவிப்பது என்று வெற்றி அறிவிப்பு, அதுக்கு 2 கோடி என்று கூட குறைத்து கூட அந்த திட்டத்திற்கான தொகை அதிகப்படுத்த வேண்டும். இப்படி பாரபட்சமான செயல்படக்கூடிய பார்வையை நிறுத்திக் கொண்டு நாட்டினுடைய அனைத்து மாநிலங்களும் ஒரே பார்வையாக பார்க்க வேண்டும். தேர்தலை மட்டுமே முன்வைத்து தேர்தல் அரசியல் செய்யாமல் அடுத்த தலைமுறையை முன்வைத்து ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். திரு அமீந்தர் சிங் ராஜா. धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। चेयरमैन साहब, कोई समय होता था कि देश के वित्त मंत्री
बजट पेश करते थे एक लाल रंग का ब्रीफकेस होता था। अब जब वो ब्रीफकेस लोकसभा में खुलता था तो देश के किसान, गरीब, मजदूर और छोटे व्यापारी की जिंदगियां बदल दिया करता था। ऐसा बजट किसी जमाने में हमारे लीडर्स और सरकारें लेकर आती थी। लेकिन आजकल का जो बजट है, आजकल का बजट, अब लोगों का ये मानना है कि आजकल का बजट केवल चंद उद्योगपति इस बजट को बनाने का काम करते हैं, जिनका नाम कभी कभी राहुल गांधी लेते हैं। और आजकल का बजट इलेक्शन सेंट्रिक रहता है। जहां इलेक्शन है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी किसी को मदद करने की कोशिश करता है। क्या यह सत्य नहीं है कि जब इस देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक को नहीं पता था कि आज इस देश में नोटबंदी होने जा रही है। देश के वित्त मंत्री को नहीं पता था। अचनचेत एक फैसला सुनाया जाता है और आजकल के देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, कैसे उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए। जब इतना बड़ा झूठ, जब उन्होंने कहा कि आज रात के बाद 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया जाएगा, इक्वालिटी आएगी, अमीर और गरीब का अंतर खत्म हो जाएगा, मेरे को केवल 50 दिन चाहिए। 150 लोग मर गए और 2.25 लाख करोड़ का ये नई डिमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी को नुकसान हुआ। कैसे कैसे विश्वास करें कि आज का बजट लोगों की जिंदगी बदलेगा। आदरणीय चेयरमैन साहब, कभी कभी जीडीपी की हर व्यक्ति जीडीपी की बात करता है और सत्य तो यह है कि 90% इस देश के लोगों को जीडीपी के बारे में पता नहीं है। जीडीपी क्या है, उनको अपने जीवन के बारे में पता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें हमें फायदा क्या हुआ है। जीडीपी कहा जा रहा है कि 6.5% जीडीपी की ग्रोथ है। मैं किसी अर्थशास्त्री को सुन रहा था, एक काबिल व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि अगर देश में सरकार ना हो, अगर देश में वित्त मंत्री ना हो, तब भी इस देश की जीडीपी की 3-4% ग्रोथ अपने आप होगी, क्योंकि इस देश के मेहनतकश लोग, किसान, छोटा व्यापारी अपने आप में इतनी मेहनत करता है, ऑटोमेटिकली जीडीपी की ग्रोथ 3-4% रहता है। तो फिर आपने क्या किया, केवल 2.5% की आप लोगों की प्राप्ति है। मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उस सरदार को जिनके समय में मेरे को लगता 8.5% जीडीपी का एवरेज ग्रोथ रहा है और कभी कभी तो जीडीपी 10% पे चली जाती थी। स्पीकर साहब, आज मैं देख रहा था महाराष्ट्र में, सुनिए, महाराष्ट्र में सिबिल स्कोर, जो एक नया बड़ा फ्रॉड है इस देश के अंदर। महाराष्ट्र में मर्तिजपुर है कोई, वहां पर एक लड़के की शादी टूटने का काम हो गया है सिबिल स्कोर से, जो बिगेस्ट फ्रॉड जो इस देश के अंदर हो रहा है। स्पीकर साहब, बहुत से नेता कभी नेहरू जी की बात करते हैं और बहुत से नेता, इस बार मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं और इस बार उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की भी बात की। उन्होंने कहा कुछ लोगों को आदत होती है 21वीं सदी की बात करने की, बार बार उन्होंने कार्टून का भी जिक्र किया। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा नहीं रखता कि 35 साल पहले जो इसका देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी हो, उनके बारे में इस तरीके का मजाक बनाया जाए, ये परंपरा अच्छी नहीं है। अब आपको आज की बात करनी चाहिए। आप यूपीए की बात करो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करो, बार बार खाद के दाम भी गिनाए गए, स्टील के दाम भी गिनाए गए,
मैं बताना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए 2 था, इस देश के अंदर डीएपी यानी कि खाद का वो बैग 450 रुपये का मिला करता था, आज 1400 रुपए का मिलता है। स्टील 2800 रुपये मिला करता था, आज 7000 मिलता है। डीजल 51 रुपए होता था, आज 90 रुपए है। डॉलर 54 होता था, आज 87.5 रुपए है। सिलेंडर, जो कभी कभी आप कहते हैं घर घर सिलेंडर पहुंचाया, कभी आपने ये भी पूछा है कि कितने लोगों ने दोबारा सिलेंडर को रिफिल कराया? 350 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। आपने मस्टर्ड ऑयल 70 रुपये लीटर हुआ करता था। गोल्ड, गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी पे 10 ग्राम अपनी बेटी को सोना नहीं दे सकता। मनमोहन सिंह जी का समय होता था 22,000 रुपए गोल्ड हुआ करता था, और आज 81,000 रुपए का गोल्ड है। आप कहते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ 6.5% है। किसान की बात करना, आपने किसान के लिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो किसान हूं, उन्होंने कहा 1 प्रति एकड़ को 30,000 रुपए का फायदा हुआ है। हमें तो कहीं फायदा वो नजर नहीं आया कि प्रति एकड़ किसान की आमदन में 30,000 रुपए का फायदा। कोई किसान का बच्चा अगर बताएगा तो मैं संसद छोड़ के जा सकता हूं। किसान ने क्या मांगा था? किसान ने क्या मांगा? ऋषिकांत जी, एक मिनट। किसान किसके लिए संघर्ष कर रहा है? किसान बॉर्डर पे बैठा है, 1.5-2 साल से बॉर्डर पे बैठा किसान एक मांग कर रहा है। किसान ने कहा, सुनिए, किसान ने कहा मेरे को एमएसपी चाहिए। किसान भूख हड़ताल पर बैठा रहा, मरण वर्त पर हमारे डल्लेवाल साहब बैठे रहे। एक लड़का शुभकरण, जिसको हरियाणा बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई और 0 एफआईआर लॉन्च हुई। क्या किसान का बेटा मरे तो 0 एफआईआर लॉन्च हो? ऐसा व्यवहार आपने किसानों के साथ किया। आपने कहा था, आदरणीय चेयरमैन साहब, कहा था कि हम किसान की आयात दुगनी कर देंगे। किसान की आयात तो दुगनी नहीं हुई। आप किसान निधि योजना लेकर आए। मैं आपको पंजाब की बात बताना चाहता हूं। किसान निधि योजना जो आप छाती थपथपाते हैं और कहते हैं हमने परिवर्तन किया है किसान के भविष्य में, क्या हुआ? 2019 में 23.5 लाख लोगों को किसान निधि योजना से पंजाब में फायदा हुआ। फिर लोगों ने धरना लगाया, किसान बॉर्डर पे आए। 2023 में जब किसान बॉर्डर पे आया तो आपने 14 लाख किसानों के निधि योजना से खाते उड़ा दिए गए। कहा इनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो पहले आपने 23 लाख लोगों को किसान निधि योजना से फायदा कैसे पहुंचाया? आज मात्र पंजाब में 8.5 लाख लोगों को किसान निधि योजना से फायदा हो रहा है। नई स्कीम आपने कहा कि हम 100 जिलों में हम प्रोडक्टिविटी के लिए, यानी कि पैदावार के लिए उनको हम मदद करेंगे। लेकिन किसान की मांग तो एमएसपी की है, जिसके लिए वो मर रहा है, उसके लिए आपने कोई विचार नहीं किया। आदरणीय चेयरमैन साहब, अगर गरीब की बात करें तो आंकड़े पता नहीं क्या क्या कहते हैं यहाँ के। आप कुंभ में अगर 300 लोग मर जाएं तो आप कहते हैं 30 मरे हैं। कोरोना में 2 लाख लोग मर जाएं तो आप कहेंगे 20,000 मरे। नीति आयोग क्या कहता है? आपका नीति आयोग क्या कहता है कि केवल इस देश में 5% गरीब लोग हैं। आपकी रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि आपने आंकड़े फच करते हैं, गलत पेश करते हैं। दूसरी तरफ आप ही कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को पीडीएस की कनक देते हैं। खुद ही कहते हो अगर 80 करोड़ लोगों को पीडीएस की कनक देते हो, 5 किलो कनक लेने के लिए राशन के डिपो के बाहर खड़ा वो व्यक्ति वो गरीब है, इसलिए आपकी 5 किलो कनक लेता है। ये हालात है इस देश का ये सच है।
आदरणीय चेयरमैन साहब, अगर मनरेगा की बात करें, आज मनरेगा के वर्करों की क्या हालत है। केवल एक साल में 19 रुपए दिहाड़ी बढ़ाने का काम किया। कब से चली है मनरेगा? 2006 से आज 20 साल हो गए। हरियाणा सबसे ज्यादा मेरे को लगता दिहाड़ी देता है। मिनिमम वेजेस 374। आज एक दिहाड़ी की 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता, केवल 45 दिन का रोजगार मिलता है, जो एवरेज कैलेंडर बताता है 374 रुपए। अगर आप गरीब की आमदन दुगनी नहीं कर सके, आप किस जीडीपी की बात करते हैं? आप किस विकसित देश की बात कर रहे हैं? आप लोगों को धोखा दे रहे हो। गरीब की मनरेगा वर्कर की अगर शादी हो ना किसी बेटी की, वो जाता है गांव में मांगने के लिए, कहता है मेरे को दाल का इंतजाम कर दो, कहता है चावल चाहिए, दाल चाहिए और एक मीठे का इंतजाम कर दो, मैं अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। ये इस प्रकार के हालात हैं मनरेगा वर्कर्स के। और दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, दूसरी तरफ अबानी के लड़के की शादी होती है, तमाम नाचने गाने वाले जाते हैं, देश के बड़े बड़े लोग, विदेश के बड़े बड़े लोग जाते हैं। मेरे को गर्व है राहुल गांधी पर, एक व्यक्ति जो उनकी शादी पे नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं। मेरे को इस बात का दुख नहीं है अबानी की शादी का, लेकिन कभी कभी टीवी पर दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर, कि अबानी के बेटे के कुत्ते जो 4 करोड़ की गाड़ी पर आते हैं, लेकिन गरीब अपनी बेटी की शादी के हालात, उसकी शादी नहीं कर पाता। इस प्रकार के गरीबों के हालात हैं। मेरी गुजारिश है कि मनरेगा के लिए 200 दिन कर दिया जाए। मेरी गुजारिश है मनरेगा की दिहाड़ी। एक मिनट सर, एक मिनट, 600 दिहाड़ी कर दी जाए और 200 दिन कर दिया जाए। ये मेरी गुजारिश है आदरणीय वित्त मंत्री से। एमएसएम की हालात बताना चाहता हूं। सर सुनिए, मैं लुधियाना से आता हूं, वहां पर 1.5 लाख तकरीबन एमएसएमईज हैं, आज बंद होने के किनारे पर हैं। एमएसएमईज बंद होने के किनारे पर हैं। वहां पर साइकिल इंडस्ट्री है, सिलाई मशीन इंडस्ट्री है। आप क्या कह रहे हो? अब सरकार ने मन बनाया है, अपने मित्रों को फायदा देने के लिए कहा है कि हम 25% स्टील सेफगार्ड लगाएंगे। अगर वो ड्यूटी सर प्लीज अगर 25% सरकार उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए स्टील सेफगार्ड इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी, तो हमारी इंडस्ट्री मर जाएगी, एमएसएमई खत्म हो जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, नई टेक्नोलॉजी के लिए हमारे सरकार उनको सहायता करे। आप लास्ट पे बार बार कहा जाता है अमृतकाल सर, कर रहा हूँ, लास्ट 1 मिनट। कहा जाता है सर अमृतकाल का समय है, मिडिल क्लास को फायदा हुआ है। मैं मिडिल क्लास की कहानी नहीं बताऊंगा, इंडिया टुडे पढ़िए, तगड़ी मार से हल्कान, मिडिल क्लास की ये कहानी है। अमृतकाल अमृतकाल के समय सर, लास्ट वन प्लीज, अमृतकाल है निशिकांत दुबे साहब। अमृतकाल में इस देश के 8.5 लोगों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है। अगर अमृतकाल इस देश के अंदर होता तो लोग देश छोड़ के नहीं जाते। पहली बार एफडीआई 16 साल में पहली बार सबसे कम निवेश अगर हुआ है तो अमृतकाल में हुआ है। सर बस सर हाफ मिनट। पिछले 10 साल की स्कीमें जो राहुल जी ने कहा, आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम उज्ज्वल, स्वच्छ भारत, जल जीवन, स्किल इंडिया, हर साल 20 साल नौकरी, मेक इन इंडिया, लास्ट स्मार्ट सिटी मिशन। सर 2 लाख करोड़ रुपया आपने स्मार्ट सिटी मिशन पे दिया है। मैं लास्ट सर यही पे लुधियाना की बात करना चाहता हूँ। लुधियाना स्मार्ट सिटी में लुधियाना स्पीकर सर भाई सर लुधियाना स्मार्ट सिटी में था, लेकिन लुधियाना में 75 लाख लोगों ने एक
सर्वे हुआ, विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया और विजन डॉक्यूमेंट में लोगों ने कहा महोदय, हिंदी की एक कविता है जिसकी चंद पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहती हूँ। नो टाइम। Wait, 1 minute. Aparajadi, 1 minute, half minute. Sir, please, half minute. Amarinder, half minute. You are having 10 more people. 10 more people, please. माइक को ऑन कीजिए। Yes. राज्यसभा में रिपोर्ट पेश हुई है कि अभी भी देश के 10 शहरों में लुधियाना अधिक प्रदूषित शहर है। लास्ट खत्म करने जा रहा हूं। इस बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया गया। ये बजट पंजाब विरोधी बजट है। मैं कहना चाहता हूं 2027 में चुनाव होंगे। थैंक यू। नहीं आएगा वहां पे। थैंक यू। अमरजादी प्लीज। मिस्टर सारंगी प्लीज, यू कंटिन्यू नाउ प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद और आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। आपने मुझे बोलने का सहयोग दिया। हिंदी की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहती हूं। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। जिद है एक सूर्य उगाना है, एक नया भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है। विकसित भारत के विशाल लक्ष्य को लेकर हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि इस यात्रा में यह जो आर्थिक वर्ष 2025-26 का बजट हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। मैं आप सबको निश्चित तौर पर कहूंगी कि यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का बजट है और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यह जनता जनार्दन का बजट है। My esteemed colleagues, you will agree with me when I say that budgets that are capable of pleasing everybody are very rare. It does not seem possible to cut taxes, to reduce debt and deficit, and at the same time increase investment in growth promotion sectors and in the enhancement of infrastructure. This budget of ours, the budget of 25-26 of Government of India, presented by Madam Nirmala Sitharaman on 1st February 2025, in this Lok Sabha, does all this, and that is why it is rare by nature. Mr. Chairman, sir, please allow me to quote Martin Luther King Jr., the civil rights leader. He had said, "The ultimate measure of a man is not where he stands in the moment of comfort. The ultimate measure of a man is where he stands during the time of adversity, challenge, and controversy." And I must tell you that it's to the credit of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Madam Nirmala Sitharaman ji that they handled the economy of India with great deftness during difficult times, during COVID times, during the current geopolitical conflicts in different parts of the world, and in an atmosphere of increased protectionism by different countries. And because of their efforts, I say with all pride and I say with all conviction at my command that the efforts of these two leaders of our country have ensured that we are
the fastest growing among the major economies, and we are well on our way to becoming 5 trillion economy in the world. Madam Nirmala Sitharaman, in her budget on 1st February, said a few words I would request everyone to recall. She said, our government is committed to keeping an ear to the ground and finger on the pulse while balancing nation-building efforts. This budget is definitely a very pragmatic budget. It reflects the practical approach of the government, and that is why it is extraordinary and it is rare. My dear friends, I come from Odisha, and at the outset, again, I must thank both the leaders, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Finance Minister, Madam Nirmala Sitharaman, for the huge outlay in railway infrastructure. With a double-engine government in Odisha, we have seen a lot of activities in the railway sector in terms of more number of trains, in terms of more number of routes, and in terms of renovation of more number of railway stations. Now, I also would like to mention here that there has been a boost in the Tribal Affairs Ministry's budget by around rupees 15,000 crore, about 45,000 more, and I'm sure this increase will translate into a lot of tribal welfare programs in states like Odisha. So, to my mind, this particular budget, with an estimated expenditure of around rupees 50,65,345 crore, will be focusing on 6 major sectors. Number 1, urban and rural growth. Number 2, investment. Number 3, exports. Number 4, middle class relief. Number 5, innovation and technology. And, of course, infrastructure. मिडिल क्लास रिलीफ, बंधुगण, आप सबको बताना चाहूंगी कि यह जो बजट है, यह आंकड़ों का और गणनाओं का बजट नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है, यह एक विजन है। हम जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जानती है और इस बात को समझती है कि अगर हमारे समाज को, हमारे देश को सुदृढ़ बनाना है, अगर सशक्त बनाना है, तो मध्यम वर्ग को सुदृढ़ और सशक्त बनाना होगा। एंड दैट इज व्हाई Prime Minister Modi's government has put in around rupees 1 lakh crore into the pocket of the middle class citizens, which is admirable. And I can tell you that this has been done by making the income up to rupees 12,75,000. I include the standard deduction, 12,75,000 completely tax-free. And this saving on account of this removal of this tax will definitely go towards more expenditure on education, education, healthcare, and of course there would be increased consumption spending. Now, my dear friends, I would request you to go back to 2005. In 2005, the income tax exemption limit was rupees 1 lakh. It took the then Prime Minister Manmohan Singh's government 7 years to actually double it to 2 lakh in 2012. And please imagine, about 10 years back, if your income would have been 12 lakh rupees per annum, you would have to pay 2,60,000 rupees as income tax. Now I can say with all conviction at my command that the Madhyam Varg, the middle class of the country, is heaving a sigh of relief. And thanks to Honorable Prime Minister and Madam Nirmala Sitharaman. Some of the other aspects of the budget are noteworthy. I just have to mention those. All of us have heard Madam Nirmala Sitharaman, but I think at the cost of being repetitive, I would like to list out some of those. Number 1, Jal Jeevan Mission, under which about 12 crore tap connections have already been done, has been extended to 2028. And 67,000 crore rupees has been earmarked for the budget for Jal Jeevan Mission. Number 2, budget announced Pradhan Mantri Jan Dhan Dhanya Yojana. And this is extremely good for our Annadata,
I must tell you that this particular scheme, in partnership with the states and 100 districts, will lead to increased productivity, improved irrigation facility, and will make available short-term and long-term credit very easily for our farmer friends. More focus on fruits and vegetables and pulses are the other highlights of the agriculture budget, which we must accept. Government will set up an urban challenge fund for rupees 1 lakh crore, and that would be going a long way in the implementation of proposals for city growth hubs. Gig workers. Who had thought of gig workers in the country? Our Prime Minister did, and I'm extremely proud of the fact that he did. He talked of the gig workers of online platforms. They would be actually being covered under Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, and they would also be given identity cards. A center of excellence for artificial intelligence would be set up. Rupees 500 crore have been earmarked for artificial intelligence, and all of us will wait and watch. A lot of things will be done in this sector. My dear friends, the budget has also announced the creation of National Manufacturing Mission and National Exports Mission. Now, to my mind, these two initiatives of the current Prime Minister Modi's government are extremely important because they would be leading to manufacturing competitiveness. That is the key to the growth of GDP in the country, and there would be global competitiveness for our products, which is good for all of us. I'm delighted to inform all of you that in this past 10 years, Honorable Prime Minister has been focusing on increase in exports of goods from the country, and we have almost touched $800 billion per annum worth of exports. And the time is not far, Mr. Chairman, sir, when we would be touching $1 trillion worth of exports in the country. Carefully planned focus on a couple of sectors: leather and toy sectors, agriculture and marine sectors, textile and handicraft sectors, and MSME will lead to more jobs, more exports, and industrial growth. Sir, we all know that the total budget of India at this moment, rupees 50,65,345 crore, in terms of percentage of the GDP, is less than 20%, I admit. But I say with all conviction at my command that a budget of a country is not just some figures on a page. The budget of a country reflects the intention of the government and the kind of direction which the government wants the country to take. So this budget is definitely an expression of the great intention of Prime Minister Modi's idea of having a Viksit Bharat. So it's not a mean achievement, my dear friends. Cutting across party lines, all my friends, my colleagues in the Lok Sabha, we need to appreciate that during the COVID times, the fiscal deficit of the country was 9.2% of the GDP, and it has been brought down to an estimated 4.4% of the GDP in this financial year 25-26 budget. So a growth of 7% and above is not a mean achievement. I talked of all the problems that are going on in this world, geopolitical conflicts that I talked of. I talked of the protectionism approach of many of the countries in which we have to perform. I talked of the COVID issues. A growth of 7% and above, I must say, has led to two things which we must appreciate and acknowledge whether we like or not. One, we have become the fastest growing economy among the major economies. And number two, of course, this is an example of fiscal prudence. We have been able to handle our financial aspect extremely well. So, with these words, I lend my full support to the
budget which was presented by Madam Nirmala Sitharaman on 1st February 2025. Thank you very much. Jai Jagannath. Thank you. Thank you. Shri Amra Ram. Shri Amra Ram. माननीय सभापति महोदय, बजट 2025-26 में बोलने के लिए मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से खड़ा हुआ हूं। और जहां तक बजट का सवाल है, जो समस्याएं इस देश का किसान, देश का गरीब, देश की नौजवान, आम जनता जिन समस्याओं से त्रस्त थी, उनमें एक कदम भी ये बजट हमें आगे ले जाने के लिए नहीं है। जिस तरह से सरकार ने, वही हालत है जो 2022 में किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। आमदनी तो दूनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना जरूर हो गई। 50 वाला डीजल 95 है, 400 वाली डीएपी 1400 है, और 1 लाख रुपया किलो के हिसाब से बीज खरीद करके किसान लगाता है और फसल पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। आज जब तक 80% गांव के लोग खुशहाल नहीं होंगे, भारत खुशहाल नहीं हो सकता। अंबानी और अडानी के खुशहाल होने से, अमीर होने से देश अमीर अमृतकाल नहीं आएगा। इस देश की 80% जनता, जिनके खिलाफ ये लगातार बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से, और उसका नतीजा है कि देश में आर्थिक असमानता, न केवल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई आर्थिक असमानता बढ़ाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े आर्थिक असमानता है। आज उसी रास्ते पे आगे बढ़ रही है। आज उस गांव का सबसे गरीब जो नरेगा में जाता था, जिसका बजट आज से 10 साल पहले 1,15,000 करोड़ था, वो 68,000 करोड़ पे है। आज 3-3 साल से उनको पेमेंट नहीं होता। 100 दिन की गारंटी है, उसको आगे बढ़ाने की बजाय 100 दिन की बजाय 40 दिन भी काम नहीं मिलता है। और काम मिलने के लिए केवल उस गरीब का नाप होता है। इस देश के राजनेताओं का, सरकार का नाप नहीं होता, अधिकारियों का नाप नहीं होता। लेकिन क्योंकि गांव का सबसे गरीब नरेगा में, और उसमें भी 90% महिलाएं जाती हैं, उनके नाप ही नहीं किया जाता। सभापति महोदय, 2 दफा हाजिरी होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। लेकिन उस गांव के गरीब, जो सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन तमाम जगह शिक्षा में, चिकित्सा में, सब जगह उन कंपनियों को मालामाल करने का लिए बजट लेके आए। आज LIC में 100% विदेशी निवेश को छूट देकर, न केवल छूट दे रहे हैं, बल्कि जो इस देश में इस 75 साल में संविधान लागू होने के बाद जनता के टैक्स से जो कुछ बढ़ा था, सार्वजनिक उपक्रम, उनको बड़ी बड़ी देशी और विदेशी कंपनियों को देने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में किस तरह से आम जनता को लूटने के लिए टैक्स, 2014 में पेट्रोलियम पदार्थों से भारत सरकार को 3 लाख करोड़ रुपया मिलता था, वो अभी 2024 में गत साल तक 7,50,000 करोड़ रुपए का टैक्स लगा है। और मैं समझता हूं 7.5 लाख करोड़ जो टैक्स लगा है, उतना ही करीब करीब टैक्स राज्य सरकारों से। वहां आम जनता जिस महंगाई से त्रस्त है, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, और आम आदमी उससे, कंपनियों से जो कुछ था उसको देने की बजाय टैक्स लगाते। मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों पे जो बिलियनर है, डॉलर में 200 बिलियनर हैं, उन पे 4% टैक्स लगाते, और वो जनता के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए वो जनता पे इनडायरेक्ट टैक्स को कम करते, तो मैं समझता हूं बात समझ में आती थी। लेकिन आम जनता पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और जो संपत्तियां बढ़ी हुई है वो तमाम की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा अफसोसजनक न किसान खुश है, न जवान खुश है, और न मजदूर जिसकी मिनिमम वेज है उसकी गारंटी नहीं, MSP की लीगल गारंटी नहीं, जो ये सरकार कहती थी। एक भी वायदा आम जनता से इस बजट में पूरा करने की बजाय, जो प्रधानमंत्री कहते हैं
कि मेरा 56 इंच का सीना है। अभी कंक्लूड कर रहा हूं सभापति महोदय, जो कह रहे थे देश में डंका बज रहा है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 105 लोगों को, भारत के लोगों को जिस तरह से अपमानित करके, हथकड़ी डाल करके, बेड़ी डाल करके भेजा, और हमारे मंत्री प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं सत्ता पक्ष के साथी कह रहे डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है। और शायद 13 तारीख को उसी ट्रंप के पैर पकड़ने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जा रहा है। इससे ज्यादा सबसे बात नहीं हो सकती। आप यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। Mike. I thank you, sir. I thank you, sir, for providing me an opportunity to speak on the union budget. Federalism is an integral part of our republic that ensures diversity, peace, stability, and mutual accommodation in a multicultural and diversified country like ours. But unfortunately, this union budget has abandoned the key aspect of federalism. Sir, we don't have any objection with regard to Bihar receiving 11,500 crores for flood control measures. At the same time, why do states like Tamil Nadu and Kerala that are heavily hit by natural disaster year after year do not get the necessary financial assistance from the union government? Tamil Nadu government repeatedly pleaded for 37,906 crores as financial assistance from the union government when Cyclone Michong devastated our northern districts, and unprecedented heavy rainfall caused havoc in the southern districts in the year 2023. Despite the Supreme Court's intervention, we got a paltry 276 crores, not even 1% of the financial assistance we sought. When Cyclone Fengal devastated our northern districts again last year, our Chief Minister, Mr. mkstalin, repeatedly requested for a financial assistance of 6,675 crores as financial assistance under the National Disaster Response Fund. But unfortunately, we have not received a penny so far, sir. We are yet to receive 2,152 crores, the pending funds under the Samagra Shiksha Abhiyan scheme. This has negatively impacted the Tamil Nadu School Education Department, which is not able to pay this teacher's salary, nor take maintenance of the government schools, nor reimburse the expenses under the Right to Education Act. We are yet to receive 26,000 crores, the union government share of the Chennai Metro Rail Phase 2, and then 1,635 crores for the Mandrega wages in Tamil Nadu are pending for the past 2 months. There has been no special announcements or for any projects for Tamil Nadu, nor any mention of metro rail projects for cities like Madurai, Coimbatore and Trichy. Sir, our Honorable Prime Minister Modi ji, other day, in the reply to the motion of thanks, quoted Ambedkar ji's vision of linking all the rivers of this country. But sadly, this government has been sitting on the Kaveri Vaigai Gundar linking project for a very long time. There has been no mention in this budget regarding that particular river linking project, which will greatly benefit our state of Tamil Nadu. Sir, my state of Tamil Nadu has been repeatedly neglected in the union budgets. Tamil Nadu ranks, it is the second largest state economy, contributing nearly 8.8% to the nation's GDP. And it is the third largest exporting state, contributing 10% to the country's total exports. In spite of all this, Tamil Nadu's share in the total divisible pool of central taxes has been reduced to just 4%. Sir, Tamil Nadu, which only finds a place in the Indian map, does not find a place in the union budget, nor in the hearts of the finance minister or the prime minister. Sir, Sabka Saath, Sabka Vikas, collective efforts and inclusive growth is a wonderful slogan coined by our Prime Minister Modi ji, sir. I would like to tell our Prime Minister Modi ji, collective, Sabka Saath, collective efforts is already there. The entire nation, the citizens of this country, even the opposition parties are there with you in taking this country forward. But Sabka Vikas, that is inclusive growth, sadly is not happening. Sir, this union budget, which is supposed to be drafted for the union of states, that is India, has been drafted just for the BJP ruled states. Sir, Sabka Saath, Sabka Vikas should be in letter and spirit for us to have a developed India by 2047. I'll just conclude in 1 minute, sir. Sir, our finance minister has called this budget
by the people, for the people, and of the people. After going through the budget, I wonder what she means by people. I'm sure that it is not a budget for the poor or oppressed classes. It is not a budget for the farmers. It is not a budget for the unemployed. But I'm sure this is a budget for the BJP Karyakartas. It is a budget for the BJP's allies. And it is a budget customized for the upcoming Bihar Assembly elections. I once again reiterate, Sabka Saath, Sabka Vikas, collective efforts and inclusive growth should be in letter and spirit for us to have a developed India by the year 2047. Thank you, sir. நன்றி. மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் தன்னுடைய உரையை துவக்கும் முன்பாக தெலுங்கு கவிஞர் குரஜாட அப்பாராவின் தேசம் என்பது மண் அல்ல மக்கள் என்ற முழக்கமுடன் துவங்கினார். அவருக்கு நானும் திராவிடம் என்பது வெறும் மண் இடம் மட்டுமல்ல, கால்வெல் அவர்களால் உலகில் மிக குறைவான அறிவு மூட நம்பிக்கை உடையவர்கள் திராவிட மக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பெருமை மிகுந்த இனம், அந்த இனத்திலே ஒருவராக பெரும்பான்மையாக இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்த பட்ஜெட்டிலே புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனும் வேதனையோடு யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் எனும் பாரதியார் புகழுரைத்த தமிழில் உரையை துவங்கி மேலே துவங்குகின்றேன். இது நிதியமைச்சருடைய 8வது பட்ஜெட். ஆனால் வறியவருக்கு, விவசாயிகளுக்கு, மாற்று பாலினத்தவருக்கு, ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு, சிறுபான்மையினருக்கு, மிக குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இது எட்டாக்கணி பட்ஜெட். வாட்டர் வாட்டர் எவ்ரிவேர், not a drop to drink. கால்ரஜின் புகழ்பெற்ற வரிகள். சுற்றிலும் தண்ணீர், ஆனால் குடிப்பதற்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லை. ஆயுதம் செய்வோம், நல்ல காகிதம் செய்வோம், ஆலைகள் செய்வோம், கல்வி சாலைகள் செய்வோம், ஓய்தல் செய்யோம், தலை சாய்தல் செய்ய மாட்டோம் என்று நல்லாட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி மு.க.ஸ்டாலின் எத்தனை கோரிக்கைகளை விடுத்திருப்பார். ஆனால் சுற்றிலும் தண்ணீர், எங்களுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் இல்லை என்னும் அளவிற்கு கூட்டணி கட்சிகளுக்கு, பாஜக ஆளும் மாநிலங்களுக்கு மட்டும் வாரி வாரி இறைத்துவிட்டு எங்களுக்கு கையை விரித்திருப்பதால் இது பாராமுக பட்ஜெட், இது பாரபட்ச பட்ஜெட். தலைவர் அவர்களை, உலகமெங்கும் பட்ஜெட் எப்படி தாக்கல் செய்யப்படுகிறது என்பதை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள். கனடாவும் ஜெர்மனியும் தன்னுடைய வரவு செலவினங்களில் கணிசமான பகுதியை சமூக நல பாதுகாப்பிற்கு, குழந்தைகள் நல மேம்பாட்டிற்கு, திறன் மேம்பாட்டிற்கு ஒதுக்குகின்றன. ஆனால் ஒன்றிய அரசோ தொடர்ச்சியாக சமூக நல திட்டங்களுக்குரிய நிறையை குறைத்துக் கொண்டே வருகிறது. மன்ரேகா திட்டம், PM கிசான் திட்டம் என்பதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் பெரு நிறுவனங்களுக்கான சப்சிடியை, மானியங்களை வாரி வாரி வழங்குகின்றது. சாமானிய மக்களின் வரியை பெரு முதலாளிகளுக்கு மடைமாற்றி விடுவதால் இது நீதியை அநீதியாக மடைமாற்றம் செய்கின்ற அநீதி பட்ஜெட் என்று நான் சொல்லுவேன். Of all the countries to improve their public governance and finance, நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் புதுமையான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கின்றனர். பிரேசில் தன்னுடைய நாட்டு குடிமக்களுக்கு முனிசிபாலிட்டி எக்ஸ்பென்சஸை தெரிவு செய்வதற்கான வாக்களிக்கின்ற உரிமையை அளிக்கின்றது. அவ்வகையில் அடித்தட்டு மக்களின் பங்கேற்பை இது உறுதி செய்கின்றது. எங்களுடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் ஒவ்வொரு முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் பொழுதும் சிறு குறு வியாபாரிகளை, நடைபாதை ஓர வியாபாரிகளை அழைத்து பேசி பட்ஜெட்டை முடிவு செய்ததை நான் இங்கே நினைக்கின்றேன். விவசாயிகளுக்கு என்று தனியாக ஒரு பட்ஜெட்டை எங்களுடைய மாநில முதலமைச்சர் mkstalin அவர்கள் தருகின்றார். அவரை நன்றியோடு நான் இங்கே நினைவு கூறுகின்றேன். அது போகட்டும், நீங்கள் நியூசிலாந்துக்கு வாருங்கள், மக்கள் நல பட்ஜெட். அதற்கு அடுத்து நீங்கள் நார்வேக்கு வந்தீர்கள் என்றால் சுற்றுச்சூழல், செயல்திறன் அடிப்படையிலான பட்ஜெட். நெதர்லாண்ட்ஸோ என்ன செய்கிறது என்றால் அவுட்கம் பேஸ்ட் பட்ஜெட். அதாவது உங்களுடைய பொறுப்பு கூறல், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை உறுதி செய்து உங்களுடைய செயல்திறனுக்கு ஏற்ப நிதியை வழங்குவது, உரிமையோடு நிதியை கேட்டு பெறுவது. சமீபத்திலே ஒன்றிய அமைச்சர் ஒருவர் எங்களுடைய வரியை நாங்கள் அதிகமாக வழங்குகின்றோம், எங்களுக்கு நிதியை கொடுங்கள் என்று தமிழ்நாடு கேட்பது என்பது அற்பத்தனமானது என்று சொல்லி இருக்கின்றார். அற்பத்தனமானது என்றால் தமிழ்நாட்டிற்கு PM ஸ்ரீ திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்ட 2152 கோடி ஒரு நிதியை பீகாருக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கும் அனுப்பிவிட்டது அற்பத்தனமானது இல்லையா? அதை நாங்கள் அவர்களிடம் கேட்க மாட்டோமா? நினைத்து பாருங்கள். நீங்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் சரி, பீகாருக்கு வழங்குங்கள், எங்களுக்கு அதிலே மாற்று கருத்து இல்லை. பீகாரிலே வெள்ளம் ஏற்பட்ட பொழுது 2008ஆம் ஆண்டு அப்பொழுதைய முதலமைச்சராக இருந்த எங்களுடைய டாக்டர் கலைஞர் தான் பீகாருக்கு 10 கோடி ரூபாய் வெள்ள நிவாரண நிதியாக அனுப்பி வைத்தார். அந்த மாநிலமும் அவர் இறந்த பொழுது துக்கம் அனுஷ்டித்தது, அதிலே மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனால் சென்ற நிதிநிலை அறிக்கையிலே 60,000 ரூபாய் வழங்கிவிட்டு இப்பொழுது மக்கானா போர்ட், அவர்களுக்கு IIT பாட்னா, அது மட்டுமல்ல கோஸ்லா டிக்கெட் என்று ஏகப்பட்ட திட்டங்கள். எங்களுடைய விவசாயிகள் மட்டும் முன்னேற வேண்டாமா? தலைவர் அவர்களே,
ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் இன்னமும் கூட கொஞ்சம் இருக்கின்றது. நினைத்து பாருங்கள், மகாராஷ்டிராவிற்கு 39,000 கோடி, ஆனால் எங்களுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட எந்த விதமான பெரிய அறிவிப்புகள் எதுவும் இந்த திட்டத்திலே கிடையவே கிடையாது. தமிழின் தொன்மையை இரும்பின் தொன்மை கொண்டு அறிவித்திருக்கின்றார் எங்களுடைய முதலமைச்சர். ஆனால் தமிழுக்கு என்று போன இதிலே 22 கோடி, இப்பொழுது ஹிந்திக்கு 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஒதுக்கிவிட்டு 84 கோடி தான். அன்பிற்குரிய பேரவை தலைவர் அவர்களே, இவர்களுடைய எக்கனாமிக் சர்வேயை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். தமிழ்நாடு 56% தேசிய ஜிடிபியை விட அதிகம் என்று சொல்லுகின்றது. தமிழ்நாடு 9% ஜிடிபிக்கு பங்களிக்கிறது என்று சொல்லுகின்றது. கல்வி, மருத்துவம் 2 minutes கல்வி, மருத்துவம் அனைத்து துறைகளிலும் தரவரிசை பட்டியலிலே தமிழ்நாடு முதல் இடத்தில் 3 இடங்களில் வகிக்கின்றது. வஞ்சித்தால் எப்படி நியாயம்? உங்களுடைய எக்கனாமிக் சர்வேயினுடைய பிரிஃபேஸில் ஸ்பார்டன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற வீரர்களுடைய ஒரு கொட்டேஷனை அரசு பதிந்திருக்கின்றது. அது என்னவென்றால், the more you sweat for peace, the less you bleed in war. உங்களுக்கு நான் அதனையே மாற்றி சொல்லுவேன், the more you sweat in inclusive politics, the less you bleed in economic progress. அவையின் நடுவே செங்கோலை வைத்திருக்கின்றீர்கள். The place does not make the man, neither scepter the king. Greatness should be within. மன்னனை செங்கோல் உருவாக்குவதில்லை. அரும்பெரும் நற்குணங்கள் உள்ளிருந்து வர வேண்டும். மக்களாட்சியின் மாண்புகளோடு கூட்டாட்சி தத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டு பிளவுவாத அரசியலை விடுத்து மதவாத அரசியலை முன்னெடுங்கள். நாடு நலம் பெறும், மக்கள் செழிப்புற்று மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வார்கள். திரு உதய் ஸ்ரீனிவாஸ். And before this August House today, with deep gratitude to the people of Kakinada for electing me as their representative. I also extend my heartfelt thanks to my party leader, Shri Pawan Kalyan Garu, for his unwavering trust and support, and to our Chief Minister N. Chandrababu Naidu Garu for his visionary leadership. As this is my first speech in Parliament, it's both an honor and a responsibility, one that I carry with utmost sincerity and commitment. So over last few days, I have listened carefully to my esteemed colleagues in this House. Some of their words have inspired hope and ambition, while others have raised concern about whether the government is doing enough for the common man, the middle class. However, as I dive deeper into the budget, the policies and the continuous push for the progress, I find difficult to understand where this criticism stems from. I'm new to this field, but I have studied the government initiatives. One thing has become clear, that NDA government is not only aware of the challenges faced by the middle class, but it is also actively working to address them. Take for an instance the recent announcement by our Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji regarding the zero tax liability for income up to 12 lakhs. When I first heard about it, like millions of Indians, I was elated. The impact of this decision is massive. Out of 7.5 crore taxpayers who filed returns in the financial year 23-24, nearly 6.5 crore people earn below 12 lakh per annum. This means that over 85% of the taxpayers will now be free from income tax liability. Why is this significant? Because India is a consumption-driven economy where private consumption accounts nearly for 60% of our GDP. More disposable income means higher spending, stronger demand, and boost for business, ultimately propelling us towards the vision of 5 trillion economy. And let us look at the bigger picture. India's income tax multiplier is around 1.01. This means that every single rupee saved in taxes doesn't just stay in wallet. It multiplies, ultimately adding to the GDP. This is not just about the tax relief. It is about empowering individuals, strengthening business, and fueling the economic engine that drives India forward. Under the NDA government, the GDP is not just gross domestic product, growth of the economy, development of the citizens, progress of the nation. And this vision is backed by the action. In just 10 years, India's capital expenditure has increased from 2 lakh crores to 11 lakh crore, a five-fold increase laying a foundation for long-term economic strength. But economic growth is not just about large-scale infrastructure. It is also about empowering business and workers at every level. The Union Budget 2025 has rightfully recognized micro, small, medium enterprises, MSMEs, as a critical engine for economic growth, providing them with a renewed impetus through key reforms and increased credit support. At the same time, the evolving gig economy is receiving the attention it deserves. Initiatives such as the registration through Eastern Portal and healthcare benefits under PM Jan Arogya Yojana will ensure that gig platform workers have better access to social security, reinforcing the government vision of inclusive economic development. Sir, as a proud representative of Kakinada,
I stand for our fishermen who battle both the sea and the financial insecurity. The NDA government eased the burden by extending the Kisan Credit Card, KCC benefiting over 4.5 lakh fishermen. This budget enhances it further, increasing the credit limit. It helped to invest in better boats, modern nets, and cold storage. This isn't the financial support, it's a commitment to the resilience and prosperity. As we discuss the economic growth, we must not forget the nearly 65% of Indian population resides in rural areas, contributing almost 50% of the GDP. Mahatma Gandhi once said, the soul of India lives in its village. As this very soul was deprived of its lifeblood, that is clean drinking water, by the previous state government of Andhra Pradesh. Jal Jeevan Mission was launched as a flagship initiative to provide safe drinking water to every rural household. Despite the centre allocating over 16,000 crores, the previous state government of Andhra Pradesh managed to draw only 2,000 crores, leaving a lakhs of households without access to the proper drinking water facilities. Now, under the decisional leadership of Shri Pawan Kalyan Garu, Deputy Chief Minister, Rural Development and Panchayati Raj Minister, our NDA government is committed to rectifying its past failures. Understanding the urgency, Pawan Kalyan Garu personally met Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Union Minister for Jal Shakti to secure an extension of JJM and additional funds. Additionally, to accelerate the rural development, Pawan Kalyan Garu launched the landmark Palle Pandiga program, setting a Guinness World Record for the largest number of Gram Sabhas held in single day, 13,326 village meetings. As a part of this remarkable initiative, 30,000 development projects launched across Andhra Pradesh, 4,500 crores sanctioned over rural roads, water conservation, and MGNREGS projects. This is not just a government initiative, but a grassroots revolution. Another testament to the Pawan Kalyan Garu's dedication to Andhra Pradesh was seen at the Republic Day celebration. An active advocate of Theekkathir toys, his effort brought them into national spotlight, leading to their showcase in the Andhra Pradesh Republic Day tableau. The result, after 30 years, Andhra Pradesh tableau won the best tableau at the Republic Day parade in Delhi, honoring our artisans and cultural heritage. This is new Andhra Pradesh under NDA, one that is recognized, respected, and rapidly progressing. Now let me highlight the vision of the self-reliance, which is not only rooted in the cultural pride, but also deeply embedded in our economic and strategic policies. This vision is mirrored in the Union Budget 2025. Take, for example, the cotton sector. India accounts for approximately 40% of world's cotton cultivation area, with 126 lakh hectares dedicating to cotton farm. A decade ago, this stood at around 118 lakh hectares, reflecting steady expansion. However, despite the vast acreage, India's cotton productivity remains significantly lower than the countries like China, Australia, Brazil, and US. To address this, the Union Budget has introduced the Cotton Technology Mission, a 5-year initiative aimed at enhancing the productivity through scientific technological innovations. This mission will focus on promoting extra long staple ELS cotton, reducing our dependency on imports and ensuring sustainability. This comprehensive approach will not only elevate the cotton sector, but also strengthen India's position as a global textile leader. The budget commitment to the self-reliance is also evident in maritime sector. India's dependency on foreign shipping has led to significant financial outflows, with Indian companies paying almost 85 billion in freight costs, 75 billion of which went to the foreign vessels. To curb this, the budget outlines the establishment of shipbuilding clusters to strengthen the domestic shipbuilding industry. Andhra Pradesh, with its 974 kilometers coastal line and strategic posts, it is well positioned to drive India's shipbuilding ambitions. The state robust maritime ecosystem, coupled with the Andhra Pradesh Maritime Policy 24-29, will play a critical role in reducing foreign dependence. Among its port cities, Kakinada stands out as a prime candidate to lead this transformation. With a natural deep water port, proximity to major trade routes, and existing industrial infrastructure, Kakinada is well on its way becoming the shipbuilding hub of Andhra Pradesh. In conclusion, sir, the vision of India is clear. From toy to tech, from farm to future, the infrastructure to innovation, we are building a nation that is self-reliant, inclusive, and future-ready. Thank you. Sri Mian Altaf Ahmad. Altaf Ahmad, please. शुक्रिया बहुत बहुत। आज बजट पे यहाँ बहस शुरू हुई है। हमारी तवक्का थी कि इस साल जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, नई हुकूमत बनी
तो हमें बजट में, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं नई गवर्नमेंट से और 10 साल के बाद वहाँ पे इलेक्शन हुए, हमारी तवक्का ये थी कि हमारी एलोकेशन बढ़ेगी, वहाँ जो हुकूमत बनी है वो लोगों के काम कर सकेगी, अच्छे अस्पताल दे सकेगी, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ कायम कर सकेगी, अच्छी सड़कें बना सकेगी। लेकिन हमारे बजट में कट किया गया है, उसको रिड्यूस किया गया है। इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से अपील करता हूँ कि जो हमारी एलोकेशन है लोगों के जज्बात के पेश नज़र और नई हुकूमत के बनने के बाद उसमें बढ़ावा होना चाहिए ताकि वहाँ की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हों। जहाँ तक इस बजट की बात है, इसमें जो सोशल वेलफेयर से विडो पेंशन ले रही हैं, ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं, हैंडीकैप पेंशन ले रहे हैं, मैरिज असिस्टेंट्स के केस ले रहे हैं, उनमें किसी किस्म का कोई भी बढ़ावा नहीं हुआ है, उनमें किसी किस्म का इंक्रीज नहीं किया गया है उनको, हालांकि कीमतें जो हैं वो आसमान पे हैं। तो गरीब तबका जो है, माजूर लोग जो हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। इसी तरह जिस तरह बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि मनरेगा के हवाले से एलोकेशन बहुत ज़्यादा कम है, इस एलोकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत थी, मैन डेज जो इसमें हैं उसमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी, उसमें भी कमी हो रही है और एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में जनरेट करने का सबसे बड़ा ज़रिया जो था वो मनरेगा ही था, मनरेगा के काम थे। अब उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें बजट में बढ़ाया नहीं गई है, एलोकेशन नहीं बढ़ाई गई है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो है। इसी तरह ऑनरेबल चेयरमैन, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, Please, 1 minute. I want to know the sense of the House. Already it is 6 o'clock. Thank you, sir. I am having long list of speakers expresses their views to. If the House decides that it can be extended up to 9 o'clock. 9 o'clock, yes. Wait. The time extended till 9 o'clock. Now, honorable member can speak. अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से Okay, 8 o'clock. Time extended till 8 o'clock. Please, continue. सर अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। आज अगर मसला है तो वो बेरोजगारी का है, पीएचडी करके, डॉक्टरी की डिग्री करके, इंजीनियरिंग की डिग्री करके बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ रही है, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई इंडिकेट नहीं किया गया है कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए जो सबसे बड़ा मसला है उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है। जीएसटी के बारे में, जीएसटी जो है उसकी वजह से आपका तमाम कारोबारी तबका वो मायूस है, उसका डायरेक्ट बोझ जो है वो गरीब आदमी पे पड़ रहा है, उससे जीएसटी को वसूल किया जा रहा है, इसलिए रिकंसिडर करने की ज़रूरत है इसको जीएसटी के मामलात को। इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा गया, ऑनरेबल चेयरमैन मैं आपकी नोट्स में लाना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए एम्स खुल रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है, स्टाफ कहीं भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने से कुछ भी नहीं होगा अगर आप उनकी कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। अगर आप उनकी कंसोलिडेशन नहीं करेंगे तो नाम के मेडिकल कॉलेज खुलते रहेंगे अस्पतालों की तरह, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मेडिकल कॉलेज 2012 में खुले थे, आज तक वहां पे अनंतनाग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से, आज तक वहां एमआरआई की फैसिलिटी नहीं है, आज तक वहां बिल्डिंग तैयार नहीं है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है रजौरी का, उसमें मेडिकल कॉलेज है लेकिन कैथ लैब नहीं है, एमआरआई नहीं है। तो मेरी अपील होगी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से कि वो इस इशू को देखें कि एम्स तो खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज तो खोले जा रहे हैं, लेकिन क्या कंसोलिडेशन हो रही है, क्या उनकी फंक्शनिंग ठीक है।
क्या वहाँ उनका स्टाफ है, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और कंसोलिडेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ ट्राइबल्स के बारे में कहा गया है और कोई धरती आकाश ट्राइबल विलेज नाम के स्कीम के बारे में प्रेसिडेंट एड्रेस में भी कहा गया, इस बजट में भी कहा गया। तो मैं इस हाउस में पहले भी कह चुका हूं कि ट्राइबल्स के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, ना इन गांवों को कहीं हम देखते हैं बना हुआ, ना इनकी कोई प्रोग्रेस हमने देखी, ना ये एलोकेशन। नहीं सर, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए प्लीज, मुझे दो मिनट मुझे बोलने दीजिए। तो ग्राउंड पे ये चीजें ट्रांसलेट नहीं हो रही है। जिन स्कूलों के बारे में तस्करा किया जा रहा है कि ट्राइबल्स के लिए दिए जा रहे हैं, उनका स्टाफ कहीं नहीं है, उनकी बिल्डिंग्स कहीं नहीं है। तो हम इस हाउस में आते हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए कि हम अपनी बात, ग्राउंड की जो बात है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने रखें और उनका फर्ज है कि अगर हमारे पॉइंट जेन्युइन है तो उनको देखा जाए। इसी तरह मेरी ये अपील है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, पहले तो इसका कोई इलाज नहीं, और फिर जिस गरीब घर में या अमीर घर में ये हो, जो कुछ होता है वो उस पर खर्च हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कैंसर की दवाइयाँ मुफ्त दी जाएं। अगर मुफ्त नहीं दी जा सकती तो जो भी उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है वो टोटली उनको फ्री किया जाए और जितना मुमकिन पॉसिबल हो उतना उनके ट्रीटमेंट को आसान करने की कोशिश की जाए। इस बार बाजेट में एक मिनट सुनिए, आप बाजेट देखा होगा, बाजेट में वो सब विषय इंक्लूजन किया गया है। उसका वेलकम करते हैं सर, आप वेलकम कीजिए। हम वन डे केयर की बात इन्होंने की, उसका वेलकम करते हैं। पीएमओ ऑफिस से जो हम रिकमेंड करते हैं एज एमपी केस, वो जल्दी उनकी सॉल्यूशन हो जाती है, हम उसके लिए भी मशकूर हैं। लेकिन जहां नहीं है, जहां है वहां हम कह रहे हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है, गरीबों का मसला है, इसलिए सर मैंने आपसे ये बात कही। इसी तरह यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, कैंप्स खुल रही हैं, सर उनमें भी स्टाफ नहीं है, उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस चीज को देखने की जरूरत है। अनंतनाग में यूनिवर्सिटी का कैंप है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है। पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कैंप है, स्टाफ नहीं है। तो ये चीजें अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी बन रही है तो मेरी अपील होगी आप पूरे हाउस से कि देखना चाहिए कि क्या उनमें स्टाफ है कि नहीं। सर एक दो पॉइंट देके मैं कंक्लूड करता हूँ। दो पॉइंट है सर मेरे। रेलवे लाइन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से रजौरी पुंछ, मैं वहां की नुमाइंदगी करता हूं, बहुत जरूरी है वहां रेलवे लाइन, जरूरी है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मेरी ये अपील है कि उसको इस बजट में उसके बारे में कोई ना कोई एलोकेशन जो है उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रेलवे को पहुंचाने के लिए की जाए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिलीफ पैकेज दिया था पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को, 2017 में ये रिलीफ दिया गया था, 2015 में उसके पूरी उस अमाउंट की डिस्बर्समेंट नहीं हुई है, पूरे लोगों तक वो पहुंचा नहीं है। खास तौर पे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पुंछ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के गरीब लोग हैं पीओजेके के आए हुए, उन तक अभी ये रिलीफ नहीं पहुंचा है। ये रिलीफ जो है उन तक पहुंचने की जरूरत है। धन्यवाद। इसी तरह सब माननीय सदस्य श्री जी कुमार नायक जी, उसके लिए बजट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हमारी जो माननीय सदस्य जी कुमार नायक जी, टूरिज्म फ्रूट की इंडस्ट्री के बारे में भी इस बजट में कुछ नहीं कहा गया, तो मेहरबानी कर। थैंक यू। ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್. ಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯತೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ದೀವಿಗೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳ ಕಂತೆ, ಅತಿ ಧೈರ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಮಹದಾಸೆಯ ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳು, ಜನಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ. ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. This budget is neither a mirror that reflects our prevailing reality nor a lamp that illuminates the path forward. Instead, it is a fine piece of creative fiction, bold in its claims, ambitious in its slogans, and utterly disconnected from the lived experiences of the people. GDP growth has plummeted from 8.2% to 6.4%.
Year-on-year inflation in the consumer food price index has surged to 8.39%, squeezing the household budgets. Inequality is at an all-time high, with top 1% of the population controlling a staggering 40% of the country's wealth. Unemployment is at a dangerous level, impacting the social harmony. This is not an isolated issue, but an all-India phenomenon. Shri Rahul Gandhi walked across the country, listened to the struggles of the poor, and turned their pain into action, bringing the guarantee schemes that ensure a universal basic income for those who need it most. But what does this government do? It announces income tax benefits to those earning 12 times the per capita income of this country. Also, the write-off of loans of rich defaulters continues. If helping the poor is revdi, then what do you call this? Let us now turn our attention to the gross injustice faced by Karnataka state, sir. The 15th Finance Commission drastically reduced the Karnataka share of central taxes by 23%, from 4.7% to 3.6%, the steepest decline among the states. Given that the Finance Commission is a constitutional body, the Finance Commission ministers' hands will be soon tied once again by the 16th Finance Commission report. The report must not be reduced to a mere theoretical exercise. It must reflect the ground realities. We must seek a framework that upholds balanced development, cooperative federalism, social harmony, and a sense of financial justice. States must receive their rightful share, sir. It is not a, as somebody opines, this is not a, it's not a fiction of imagination. Railways, the budget has misplaced priorities, in my opinion. While we need a robust railway network across the country, the government is focusing disproportionately on the showpiece trains such as Vande Bharat and Namo Bharat. These trains serve already well-connected regions, ignoring the needs of the underserved areas. Sir, Karnataka has one of the lowest railway densities in the country. You must be astonished to hear this. For every 100 square kilometers, Karnataka has only 2.62 kilometers of railway tracks, whereas the Uttar Pradesh has more than twice, and West Bengal has more than 4 times. When I met the Honorable Railway Minister, he acknowledged this disparity with concern. It is heartening to see that the issue is recognized at the highest levels. But recognition alone will not lay down the railway tracks, sir. I sincerely hope that the government takes immediate steps to introduce much-needed railway projects, particularly Almaty-Yadgir railway line, sir. Sir, as Finance Minister rightly stated, agriculture is the first engine of growth. Rashtrakavi Kuempu compares the life of a farmer with that of a yogi, sir. Yaru ariyada negila yogiye, lokake annava niyuvanu, ಹೆಸರನ್ನು ಬಯಸದೆ ಅತಿಸುಖ ಗಳಿಸದೆ ದುಡಿವನ್ನು ಗೌರವ ಕಾಶಿಸದೆ. In 2016, Prime Minister promised to double the farmers' income by 2022. Yet today, forget doubling, sir, more than half of the country's farmers are in deep debt. Karnataka farmers produce some of the finest chilies in the country. Last season, we had an excellent yield, but due to market failures, tons of chilies are now lying unsold in the cold storage. What good is a bumper harvest if the farmers cannot get a fair price for their produce? Just as there is a crop insurance for losses due to natural calamities, there must be safeguards against market failures too. That said, I welcome the announcement of Mission for Cotton Productivity in this budget. However, while designing... Sir, I have just started, sir. 2 minutes, sir. However, while design... Kindly allow me to speak, Please sir. conclude in 1 minute. Sir, kindly allow me to speak, sir. I have just started this, sir. I have a lot to say, sir. Sir, however, while designing the program, I urge the government to consult the farmers extensively. While on the topic, I would like to acknowledge the Finance Minister for allocating 50 lakh rupees for FPOs from her MP-led funds to each of the Kalyana Karnataka districts. This reflects her concern for the region, sir. I hope she extends the same generosity to all pressing issues of the region, sir. As the Finance Minister rightly stated, sir, MSMEs are the second engine of growth. But here, what has not been said seems to be more important, sir. Between 2016 and 2021, 1.3 lakh crore workers vanished from the informal sector. 24 lakh enterprises shut down, and manufacturing employment fell by 81 lakhs, sir. This budget talks about increasing loan limits under various schemes, but the reality is that it is unlikely to be of any help, because the average MSME loan size in backward regions like mine under the Mudra scheme is just 50,000 rupees, sir. Banks are not lending to MSMEs in these regions, but are very busy writing off massive loans for the business friends of this country, this government.
This is the part of the story that is unsaid. Thank you, honourable member. Sir, just 2 points. Just 2 points. Conclude. Kindly allow me to just talk about, conclude. sir, most important part of my constituency is health and education. Sir, please kindly go allow ahead, me you to- will issue. Yes, sir. Speaking of the economic vulnerability, sir, Ayushman Bharat, despite its flaws, has helped poor access tertiary healthcare. Tertiary healthcare infrastructure is crucial for ensuring equitable access to specialized medical services. Yet, sir, in Karnataka is the only major state, I repeat, Karnataka is the only major state that still lacks AIMS, sir. AIMS Horata Samiti, Raichur is on the streets in blistering heat and rain for AIMS in Raichur for over 1,000 days now, sir. Over 1,000 days now. As an Raichur MP, my demand is AIMS for Karnataka, and Karnataka wants AIMS in Raichur, sir. This demand must be met forthwith, sir. Okay. Sir, education is the foundation of any developed nation. The UPA government, under the leadership of our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji and Srimati Sonia Gandhi ji, made education a right, sir, recognizing its transformational capacity. Today, instead of building on this legacy, this government is asking for students. Please conclude. One second, no, sir. I have a long list of Sir, speakers from your party. Sir, I'll finish. I have to touch the SC/ST action. Sir, I belong to ST, this thing, sir, constituency. I have to represent, sir. Just a second, sir. Sir, today, instead of building on this legacy, government is asking students, like poor people here, sir, to take loans to study, shifting the burden of financing education onto young people, sir. Education is reduced to a set of schemes, PM Shri, PM Vidya Lakshmi, etc., sir. Why is the government negotiating with private institutions only for healthcare? Why not do the same for education and bring Vidyavan Bharat akin to Ayushman Bharat to ensure universal access? That is, if you don't want to invest on infrastructure and teacher salaries, sir. Education must be brought back to right path. Please conclude. Sir, SC/STs make up 25% of the India's speaker, population, sir. Mananiya Sadasya Shri Jugal Kishore Sharma ji. Sir, one second. No. Sir, 1 second. Sir, I belong to... Next speaker, Mananiya Jugal Kishore Sharma ji. Please conclude. Jugal Kishore Sharma ji. Sir, give me 1 minute. सभापति महोदय. Sir, give me 1 minute. Sir, give me 1 minute, sir. Sir. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय बजट 2025-26 के वित्तीय बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बजट जो है वो सदन में प्रस्तुत किया। ये बजट सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा लोगों के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पता चलती है। महोदय, वित्तीय बजट में बहुत सी ऐसी बातों को ध्यान में रखा गया है जिससे कि देश के हर एक नागरिक को इसका लाभ मिल सके। और विशेष तौर पर अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इस बजट में जम्मू कश्मीर को भी ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी बजट में अपनी दयादिली दिखाते हुए जम्मू कश्मीर का सहयोग जो है वो किया है। महोदय, इस बजट में जो कि 25-26 का जो बजट है, गृह मंत्रालय के लिए भी कई हजार करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा CRPF, BSF और CISF जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए चिन्हित किए गए हैं। ये बजट गृह मंत्रालय के लिए भी एक बड़ा बजट रहा है जो कि सराहनीय है। महोदय, केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में जम्मू कश्मीर के लिए पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा बजट जो है वो आवंटित किया है। बजट 2025-26 में 41,000 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो जम्मू कश्मीर को दी है। इस बजट को लोगों ने सराहा है और ये बजट लोगों की उम्मीदों का बजट बताया है। इस बजट में सभी क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है। महिलाओं, किसानों और युवाओं
के लिए भी बहुत सारी बातें जो हैं वो इस बजट में कही गई हैं, घोषणाएं की गई हैं। युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और किसानों को भी राहत दी है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इस बजट को जो है वो सराहा है, इसका स्वागत किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये जो बजट पेश किया, केंद्रीय बजट को जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बजट को जनहित बजट करार देकर खुले दिल से इसका स्वागत किया है। महोदय, उनका कहना है कि ये बजट उनकी उम्मीदों के अनुकूल है और इस बजट से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत जो है वो होगी। महोदय, इस बजट को न केवल पूरे देश में बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी अधिक मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। मुझे इस बजट में सबसे बड़ी बात जो लगी कि बजट में तमाम क्षेत्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपए की लागत का सहयोग जो है वो किया गया है, इस मंजूरी दी गई है। लेकिन केंद्र हमारे इस प्रदेश के विकास के लिए कितना गंभीर है ये दर्शाता है। इस बजट में हमारी महिलाएं, विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए भी एक बड़ी सौगात है और पहली बार अपनी रोजगार इकाइयां स्थापित करने वाली इन महिलाओं के लिए आसान लोन उपलब्ध करवाने का जो मौका उन्हें जो है वो दिया है। महोदय, जम्मू कश्मीर प्रदेश में भी उक्त जाति जनजाति की महिलाओं को न केवल इसका वित्तीय लाभ होगा बल्कि आत्मनिर्भर बनने की भी जो उनकी चाहत है वो पूरी होगी। हमारे देश के जीडीपी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहता है। महोदय, मैं अगर बात करूं कि विश्व का तीसरा विकसित देश जो है वो भारत बनने जा रहा है। महोदय, ये जो स्वागत योग्य घोषणा जहां पर की गई 12 लाख रुपए की इनकम तक कोई भी टैक्स जो है नहीं देना, जिसको देश के लोगों ने बहुत ही सराहा है। वार्षिक 12 लाख रुपए आमदनी वाले लोगों पर इनकम टैक्स पर छूट देना, ये सबसे बड़ी सौगात थी देश के लोगों के लिए जो केंद्र ने देश को दी है और इस एक कदम से देश को आगे बढ़ने में आगे आ रही सभी चुनौतियों, जिनमें बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान जो है वो होने की आशा है। महोदय, इस कदम से हमारे मध्य व गरीब वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे पहले हमारे इस मध्य वर्ग की आमदनी का ज्यादा हिस्सा जो है वो टैक्स की बेंच चढ़ जाया करता था। अब केंद्र के इस कदम से उनका बजट नहीं बिगड़ेगा और उनको काफी बचत भी होगी। महोदय, बजट में यूथ पर भी विशेष जोर दिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वित्तीय बजट की तरह सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास इस बजट में भी किया है। इसमें भी वर्गों यानी अपर मिडिल और लोअर क्लास का भी ध्यान जो है वो रखा गया है। महोदय, विशेषकर पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार हासिल करने के लिए कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल एजुकेशन के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, जिनमें 10 साल में 1.1 लाख मेडिकल सीट्स और विशेष तौर पर अगले साल मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं और आने वाले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है, इससे युवाओं के लिए जो देश और समाज के लिए प्रति कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ ही कृषि में भी तेजी आएगी और कृषि और बागवानी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो रीढ़ की हड्डी है, जिससे इस साल का केंद्रीय बजट पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ सरकार का लक्ष्य कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करना है, जिससे देश भर में करोड़ों किसानों को लाभ होगा। जम्मू कश्मीर के भी जहां हजारों किसान पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसका लाभ ले रहे थे। महोदय, मैं ये जरूर कहूंगा कि किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक केसीसी ऋण
पर जो 3 लाख रुपए की सीमा थी अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। महोदय, मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ इतना जरूर कहूंगा कि कैंसर और असाधारण रोगों और गंभीर रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक दवाइयों को सीमा शुल्क से छूट दी है। ये आम गरीब के लिए बड़ी राहत की बात है। महोदय, आयुष्मान भारत के माध्यम से भी देश के आम गरीब जो हैं बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं आपसे कहूं तो ये जो लोग हैं जो मकान के किराया पर निर्भर रहते हैं, उन लोगों को भी बड़ी राहत जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है वो दी है। खिलौना क्षेत्र में भी क्रांति लाई है। और फिर सीनियर सिटीजन नागरिकों को टीडीएस की सीमा छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की है। अंत में महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 4 करोड़ गरीबों को मकान की सुविधा मिली है, आने वाले दिनों में विजय क्रम जारी रहेगा। रेल के प्रति अपनी एक छोटी सी बात रखकर अपना कथन समाप्त करूंगा। रेलवे क्षेत्र में भी एक क्रांति पूरे देश भर में आई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए भी इसके अलावा रेल बजट ने जेएनके में रेलवे परियोजनाओं के लिए 844 करोड़ निर्धारित किए हैं। जो एक बहुत बड़ी बात है। विशेष रूप से 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों बड़गाम, जम्मू तवी, कटरा और उधमपुर को कुल 292 करोड़ की राशि से अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करना जो उन्होंने लक्ष्य दिया है उसे पूरा करेंगे, जिसका उद्देश्य यात्रियों को सुविधाएं और स्टेशन के बुनियादी ढांचों को बढ़ाना है। महोदय, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। अपना मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजाभाऊ वाजे जी। राजाभाऊ जी। माननीय सभापती महोदय, अर्थसंकल्पावर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपले प्रथमतः आभार मानतो। या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला पहिले इंजिन म्हणून महत्त्व दिले गेले। असे असले तरी देशातील शेतकऱ्यांना सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळतील याची खात्री आपल्याला करावी लागेल। भारत हा कृषीप्रधान देश असून आपल्या शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळे आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण आहोत। मात्र बदलते हवामान, वाढता उत्पन्न खर्च आणि बाजारभावाची अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामना करावा लागत आहे। या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा झाल्या असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनामध्ये नाशिक जिल्ह्याचा समावेश व्हावा यासाठी मी मागणी करत आहे। सरकारने डाळींसाठी आत्मनिर्भरता अभियान जाहीर केले आहे, परंतु हमीभाव प्रभावी असावा आणि हमीभावानुसार शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करण्यात यावा अशी मजबूत यंत्रणा उभारली जावी। खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या गोष्टींच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष निधी मंजूर करावा। इन्कम टॅक्समध्ये सूट दिली आहे त्याबद्दल आपले अर्थमंत्र्यांचे आभार मानतो, परंतु कीटकनाशकावरील जीएसटी हा कमी केला पाहिजे किंवा रद्द केला पाहिजे ही मागणी मी या निमित्ताने मांडतो। आरोग्य सुधारणा आणि वैद्यकीय सेवांचा विस्तार झाला पाहिजे। ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा कागदावरच आहेत, पण त्याचे योग्य ती अंमलबजावणी होत नाही। त्याबाबत एक महत्त्वाची सूचना मी करू इच्छितो। आता प्रयागराजमध्ये कुंभमेळा चालू आहे। 2 वर्षानंतर 2027 साली नाशिक येथे आणि त्र्यंबकेश्वर येथे कुंभमेळा होणार आहे। नाशिकमध्ये होणाऱ्या 2027चा कुंभमेळा हा भारतासाठी एक जागतिक स्तरावरील धार्मिक आणि पर्यटन महोत्सव आहे। यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे। जरी कुंभमेळा 2027 साली असला तरी त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी आतापासूनच केंद्र सरकारने निधी दिला पाहिजे। या बजेटमध्ये कोणतीही निधीची उपलब्धता झालेली नाही। गोदावरी नदीचे शुद्धीकरण असेल, प्रदूषण मुक्तता असेल, यासाठी जे एसटीपी प्लांट बसवायचे आहेत ते प्लांट बसवणे आत्ताच गरजेचे आहे। कारण शेवटचे 4-6 महिने जेव्हा निधी उपलब्ध होतो तेव्हा महत्त्वाचे काम होत नाही आणि केवळ
कॉन्ट्रॅक्टर ओरिएंटेड स्कीम तयार होऊन आणि त्याच्यातून विकास होतो असं होत नाही. खास करून तिथे 4 ठिकाणी कुंभमेळा भरतो. कावनाई, टाकेत, त्र्यंबकेश्वर व नाशिक या 4ही ठिकाणचा विकास समप्रमाणात व्हावा अशी मी आपल्याकडे मागणी करतो. नाशिक हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खास करून कांदा उत्पादक व द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बाजारातील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान कायम सहन करावं लागतं. त्यामुळे बाजाराशी सुसंगत असे आर्थिक धोरण सरकारने अवलंबलं पाहिजे. खास करून कांद्यावरील निर्यात शुल्काबाबत वेळोवेळी विचार केला गेला पाहिजे. स्थानिक शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर 10% आयात शुल्क लावले आहे. त्यासाठी भारत सरकारने 20% जे निर्यात शुल्क लावले आहे ते कमी केल्याशिवाय यावर्षी जे बंपर क्रॉप होणार आहे त्याचा उपयोग होणार नाही आणि शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळणार नाही. म्हणून मी सरकारला मागणी करतो की जो 20% निर्यात शुल्क आहे ते ताबडतोब हटवलं पाहिजे. पर्जन्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अधिक सिंचन प्रकल्प मंजूर करावेत आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणावी. शेततळ्यांसाठी आणि पाणी साठ्यासाठी जास्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. किसान क्रेडिट कार्डसाठी 5 लाखापर्यंत वाढवण्यात आलेली मर्यादा याचा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मी आपल्याला एक विनंती करतो की हिल इन इंडिया उपक्रमांतर्गत नाशिकमध्ये वैद्यकीय पर्यटन केंद्र स्थापन करावे जे कुंभमेळ्यादरम्यान आणि नंतरही उपयोगात येईल. नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या दरम्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करताना नवीन शासकीय दवाखाना निर्माण व्हावा, कारण तिथे जी आरोग्य सेवा आहे ती कुंभमेळ्यासाठी पर्याप्त नाही. मी शेवट फक्त एकच बोलतो की मान्य सभापती महोदय, भारतातील शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्यांच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात घोषित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून बाजारपेठ सुधारणा आणि शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत वाढून त्यांचे जीवनमान कसे सुधारेल यासाठी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. नाशिक कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करावा, तसेच नाशिक पुन्हा रेल्वेसाठी सुद्धा निधी उपलब्ध व्हावा ही विनंती करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. माननीय सदस्य श्री कौशलेंद्र कुमार जी. सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 25-26 के आम बजट पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री जी ने 2025-26 के लिए खर्च का कुल 50,56,345 करोड़ रुपए का अनुमान प्रस्तुत किया है, जिसमें आमदनी करीब 34,96,409 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। बाकी उधारी से पूरा करना है। माननीय वित्त मंत्री जी का यह अत्यंत ही विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। इससे देश में चौमुखी विकास होगा और सरकार के अनुमान के अनुसार देश जल्द ही तीसरी विश्व सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। देशवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आम जनता की आय बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, मध्यम वर्गों की आय बढ़ेगी, मजदूरों की आय बढ़ेगी, व्यवसायियों की भी आय बढ़ेगी। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं बिहार के नालंदा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला है। नालंदा विश्व का ऐतिहासिक एवं ज्ञान की नगरी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के क्रम में संख्या 63 और 67 में बिहार राज्य उड़ान योजना के तहत पटना और बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सुविधा देने की घोषणा की है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के कैबिनेट में नालंदा के राजगीर के लिए भी प्रस्ताव दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण के लिए राजगीर को भी जोड़ा जाए। इससे यहाँ के टूरिज्म
का विकास होगा, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। महोदय, इस क्रम में पटना IIT के विस्तार एवं छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव अति स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार बिहार में मखाना किसानों के पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता के लिए बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की भी स्थापना का प्रस्ताव काफी स्वागत योग्य है। महोदय, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में विस्तार एवं किसानों को उन्नत खेती के लिए आधुनिक तकनीक एवं बीज का प्रबंधन का प्रस्ताव देश के किसानों के खुशहाली के लिए काफी लाभदायक है। विशेषकर लोन की सीमा को 5 लाख करने की किसानों के पास खेती के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा। बिहार राज्य कृषि आधारित राज्य है, वहाँ उर्वरक की मांग अधिक है। घरेलू आपूर्ति को पूरा करने के लिए बिहार राज्य में एक और उर्वरक कारखाना नालंदा में लगाया जाए, ये मेरी मांग है। माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इस दिशा में अवश्य प्रयास करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने की बात की है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तालाबों और मछली पालकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ा है। वहां के मछली पालक किसानों को सहायता नहीं मिल पा रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि नालंदा एवं पूरे बिहार के मछली पालक किसानों की सहायता राशि देने की कार्य योजना चलाई जाए। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने बिहार में रेलवे को करीब 66 करोड़ का आवंटन किया है। यह राज्य में रेलवे के विकास के लिए काफी कम है। वैसे तो बिहार में 98 रेलवे स्टेशनों का अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा और आनंद बिहार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और 12 वंदे भारत ट्रेनों को दिया गया है। गया, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, सीतामढ़ी और दरभंगा रेलवे स्टेशनों को 1555 करोड़ रुपए का व्यय से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देता हूं। मैं नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं सर, मेरा छोटा कुछ मांग है, ऐड कर देना चाहता हूँ। राजगीर दनियामा फतुआ रेल खंड पर गाड़ी चलती है, लेकिन रामपुर एक होट है सर, वहां पर रुकती है गाड़ी, लेकिन टिकट नहीं करता है, बड़ा दुख होता है। उसी तरीके से रहुई मेरे संसदीय क्षेत्र का, वहां पर डेंटल कॉलेज है और पटना से आने जाने वाले काफी लोग हैं, तो रहुई होल्ड पर इंटरसिटी का एक ठहराव कर दिया जाए, ये मेरा अनुरोध है। इस्लामपुर से पटना के लिए मैंने एक जोड़ी अतिरिक्त मेमो ट्रेन का मांग पहले से करता रहा हूं और फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इसको एक जोड़ी ट्रेन दिया जाए। बिहार शरीफ और राजगीर में यात्रियों को कोच डिस्प्ले नहीं होने के कारण काफी परेशानी होता है, अतः वहां पर कोच डिस्प्ले लगाया जाए। आप समाप्त कीजिए। नालंदा जिले में अधिकांश प्लेटफार्म का लेवल बहुत ही नीचा है, इसे शीघ्र बनवाया जाए। रेलवे में खाली पदों को भी भरने की कृपा की जाए। राजगीर से फतुआ भाया बिहार शरीफ, चंडी, रुखाई, दनियामा होते हुए मेमो ट्रेन फतुआ तक चलती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पटना तक किया जाए सर। एक मिनट सर, फतुआ NH 30A से नया NH 431 फोरलेन का दनियामा, चंडी, हरनौत, सकचोहरा से बाढ़ तक नया फोरलेन बनाया जाए। एक और है मेरा सर, NH 33 जो पुराना है, NH 110 जहानाबाद अरवल या कंगरसराय परवलपुर से बिहार शरीफ तक इसको 4 लेन में ले लिया जाए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद जी, धन्यवाद। बजट का समर्थन करता हूं और उन्होंने देश के मध्यम वर्ग के लिए लोगों को ध्यान में रखते हुए गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी सशक्तिकरण के उत्थान के लिए इस वर्ष सशक्त बजट दिया है। इसमें गरीबी से धन्यवाद जी। बेहतरीन ऑनरेबल मेंबर से असाउद्दीन बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया। आपका बेहद शुक्रिया सर। मैं इस बजट की मुखालिफत में बोलने के लिए खड़ा हूं और इस बात को ज़हन नशीन करनी चाहिए कि सर के पिछले 25 साल में से 15 साल बीजेपी और NDA इख्तिदार पर है
और यही बुनियादी वजह है कि आज एक ग्रेजुएट बेरोजगार है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, एमएसएमई बंद हो रहे हैं और चीन से बगैर इंपोर्ट करे हमारे देश का निजाम नहीं चल सकता। ये सब जिम्मेदारी इस हुकूमत पर आयद होती है। सर वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क विकसित भारत की राह पे है। मैं कहना चाहता हूं कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क की 80 करोड़ आवाम फ्री राशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब हमारे देश की लड़कियां न्यूट्रिशन और तालीमी मौके उनको बच्चों की तरह नहीं मिल जाते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब हमारे मुल्क के बच्चों को जो पढ़ना नहीं आता, प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिख सकते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब है, एब्जेक्ट पॉवर्टी में है। विकसित भारत इस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब देश के 15% मुसलमानों को तालीम से, रोजगार से, सियासत, इंतजामिया और गवर्नेंस से मजहबी तासुब की बुनियाद पर खारिज कर दिया जाता है। सर 2014 से रियल वेजेस में गिरावट आई है या स्टैग्नेशन हुआ है। हर साल 1.3% की कमी हुए, यानी हर साल वतन अजीज के शहरी गरीब होते हैं और बरसर इख्तिदार की जमात की दौलत में इजाफा होता है। 750 उन्होंने अपने नए पार्टी ऑफिस पूरे देश में खोले हैं और एक गरीब को PMAY में बगैर रिश्वत करप्शन के घर नहीं मिलता। सर तनख्वाहों में कमी, गिरावट से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान, दलित और आदिवासी को है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गरीब हैं। सर मोदी हुकूमत ने इन तीनों तबकों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। क्या मन की बात से एक औसत घराने को खाना मिलता है? सर वजीर आजम ने हालिया आवाम को, जनता को मशवरा दिया कि खाने के तेल में कमी करने से जिस्म का वजन कम होता है। सर मगर इस हुकूमत के मोटापे का अंदाजा लगाइए कि 2014 और 22 से मोदी हुकूमत ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 3,260 करोड़ रुपए खर्चा किए। तो मालूम हुआ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक एग्जाम वॉरियर भी हैं और एक डाइट कोच भी हैं। सर खाने के तेल का होलसेल प्राइस इंडेक्स 2014 में 104 था, 2022 में 182 हुआ, 2024 में 145 होता है। ये पॉलिसी हुकूमत किसके लिए बनाती है? गरीबों के लिए नहीं बनाती, हम जानते हैं। सर 80% भारत की आबादी माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, सफर करती है। हेल्थ के बजट को हम देखें सर, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजट स्पेंड एंड शेयर ऑफ GDP इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है सर, बल्कि इसका शेयर 2018-19 से कम है। जब हेल्थ सेस लागू किया गया था, हजारों करोड़ हेल्थ सेस कॉर्पोरेट्स और इनकम टैक्स लोगों ने दिया, हमारे हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है। सर तालीम पे आ जाइए। इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंटली ले हुआ है इस हाउस में, जिसमें डेटा ये बताता है कि स्कूल रिटेंशन क्लास 1 to 10 63.8 और हायर सेकेंडरी में क्लास 1 to 12 45.6। मतलब यह है कि सर एक 1/3 हमारे बच्चे 10वीं तालीम को मुकम्मल नहीं करेंगे और आधे से ज्यादा 12th की तालीम नामुकम्मल करेंगे। लगता है कि देश के प्रधानमंत्री इनको एग्जाम वॉरियर बनाने का जो नारा लगाते हैं, वो नहीं चाहते कि नौजवान तालीम याफ्ता बने, बल्कि सिर्फ चाहते हैं कि गरीब और मायूस नौजवान उनकी जलसों जनसभाओं में यहाँ शिरकत करें, उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएं और खुद की जिंदगी और मुस्तकबिल को मुर्दा कर दें। सर सच्चाई यह है कि हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ नहीं सकता और अपनी मादरी जबान में एक जुमला नहीं लिख सकता। सर जो सौतेला तासुब रवैया अक़लियतों के साथ हुकूमत कर रही है, इसकी मिसाल यह है कि वजारत अक़लियती बहबूद का बजट पिछले साल से कम हो गया है। सर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, MANF, फ्री कोचिंग, इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन लोन है, एलोकेशन फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट में जबरदस्त कमी आई है। सर पिछले साल 1575 करोड़ था सर, इस साल 678 करोड़ कर दिया गया है। सर सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं, जिसमें एजुकेशन, एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, PM विकास है, 2024 में 2120 करोड़ में से सिर्फ 770 खर्चा किए गए। सर 2025-26 में उसको 1237 करोड़ कर दिया गया। सर मैं ये सरकार अक़लियतों को और खास तौर से मुसलमानों को मुकम्मल नजरअंदाज कर दी गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सर पिछले साल 326 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। पोस्ट मैट्रिक में इस साल 65% कमी कर दी गई, सिर्फ 413 करोड़। मेरिट कम मीन सर 33 करोड़ से 7 करोड़ कर दिया गया है। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम, शहरी विकास संपत्ति सर 2023-24 में 17 करोड़ में 8 करोड़ दिए गए, 1 करोड़ खर्चा हुआ।
2024 में 16 करोड़ सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिए गए, इस साल 13 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत वक्फ की जायदादों को आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहती, उसको बर्बाद और खत्म करना चाहती है। सर, स्किल डेवलपमेंट में हमारी दोहर उस्ताद नई मंजिल बिल्कुल खत्म करके रख दिया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी के दहाने पे आ गई। सर, 2016 तक भारत में सबसे ज्यादा रेडीमेड गारमेंट्स हम एक्सपोर्ट करते थे, आज उसमें 14% कमी आई, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। सर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मालेगांव में पावरलूम इंडस्ट्री में जो रोजगार देते हैं, ना उस पावरलूम इंडस्ट्री के लिए ना उसमें लेबरर के लिए कुछ इस बजट में रखा गया है। RODTEP, ROSCTL में एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी नहीं बनाई गई। ग्रुप इंश्योरेंस और GIS को क्यों बंद किया गया इन पावरलूम इंडस्ट्री के लिए? और फिर सर, PLI स्कीम के बहुत बड़े दावे किए जाते हैं। ये PLI स्कीम प्रो कॉर्पोरेट है, जबकि इसको प्रो माइक्रो होना चाहिए था। मालेगांव की पावरलूम इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ये तासुब और सौतेला सुलूक मालेगांव पावरलूम और इंडस्ट्री से कब तक चलेगा? सर, डेडलाइन, मोदी जी ये गवर्नमेंट डेडलाइन देती है। मेक इन इंडिया का वादा था सर, 100 मिलियन जॉब्स, 12 से 14% ग्रोथ। हकीकत क्या है सर? सिर्फ 6% ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में सर 12.6 2011-12 में था, वो गिरकर 11.4 हो गया 2022-23 में। सर, इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी ऑन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, ये कहता है इसके ऊपर भारत का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि 9.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी। क्या पॉलिसी है सरकार की? सर, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स देखिए सर, 2023-24 में LIC में 3,70,000 मैच्योरिटी क्लेम्स आर लाइंग अनक्लेम्ड, 880 करोड़ के। EPFO 2023-24 में 8,500 crore is lying unclaimed in 21 lakh inoperative accounts. Is this being done deliberately to shore up the government supply? Why is the middle class being made bali ka bakra, sir? In February 2023, sir, 35,000 crore is lying vacant or unclaimed in public sector banks. Why don't you use it? And sir, the travesty of justice is in PM Poshan, sir, a cook or helper gets only 1,000 rupees for 10 months. Why can't the government increase? सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो बजट है 4,000 करोड़ कमी कर दी गई। मैं आदादो शुमार और एक स्टडी की बुनियाद पर कह रहा हूं कि किसानों की अगर आमदनी 100 रुपये है तो ये हुकूमत 12 रुपये लेती है। जुल्म नहीं तो क्या है? सर, इंडिया स्टील इंडस्ट्री एक्सपोर्ट किया 13 बिलियन और उसमें से 1.2 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया था स्टील एल्यूमिनियम US को। अगर ट्रंप 25% टैरिफ लगाएगा, ये सिग्निफिकेंट बर्डन होगा इंडिया के स्टील एक्सपोर्टर्स पर और इसीलिए इंडिया मेटल इंडेक्स गिरा है 3%। सर, क्या पॉलिसी है सरकार की? सर, कंक्लूजन में अब आप देखें, द रेवेन्यू थ्रू इनकम टैक्स इज सेट टू इंक्रीज बाय 4 लाख करोड़ फॉर BE24, while the corporate tax is only set to increase by 60,000 crore. Despite corporate profitability an all-time high, while wage growth remains subdued, the share of income tax in total revenue has risen to 22.7% in financial year 19 to 33% in 25. While the share of both GST and corporate tax has declined. This means that it is still the individual taxpayers paying income tax that is funding the government, while corporation get an easy ride, sir. In conclusion, sir, the state I come from, Telangana से मैं आता हूं, तेलंगाना की आवाम ने 8 MP बीजेपी को दिए। एक प्रोजेक्ट आप नेशनल प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, पालमारू इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाते, गोदावरी के पानी को लाने का प्रोजेक्ट आप नहीं देते, मेट्रो को नहीं देते, एक स्टील बायारा, मेरे 8 MP आपके जीत के गए। ये लगता है कि बेचारे वो कितने कमजोर हैं कि जिस रियासत से जीत कर गए वो वहां पर कुछ नहीं कर सक रहे हैं सर। तो इसीलिए मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हूं। इससे कोई रोजगार में फायदा नहीं होगा, विकसित भारत नहीं बनेगा। आप लाख बोल लीजिए, हम 12 लाख का बाजा बजाइए, मगर बाजू GST का एक चौकीदार खड़ा हुआ है चोरी करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Very much, Chairman, sir. Sir, thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, I rise to oppose the budget proposals for the financial year 25-26. As the budget 25-26 is not addressing the genuine concerns and basic requirements of the common people of the country. So the basic challenge the Indian economy is facing is the problem of demand.
Instead of addressing the problem of demand in the economy due to the lack of purchasing power in the hands of the people, mass unemployment and shrinking wages, the government, the finance minister has through this budget sought to stimulate the economy by giving concessions to the rich, even when the expenditure are cut. Sir, instead of mobilizing resources by taxing the rich and the big corporate houses and expanding public investment that would help generate employment and ensure a minimum wage of the people, the government has chosen to the opposite direction. Sir, the Union Budget 25-26 absolutely neglect the issue of unemployment and expenditure on food subsidies, agriculture and allied activities, education, rural development, social welfare, and urban development are stagnant or lower than that of the previous financial year if you consider the factor in inflation also. So I can very well substantiate this observation or this assessment as far as this budget is concerned with the support of the statistics. Sir, I do appreciate the government that the government is able to collect the tax as envisaged in 24-25 budget, because 25 lakh crores of tax collection is envisaged in the budget proposal that has been collected, for which I appreciate the government. And also I appreciate the fact that up to 12 lakhs of annual income, this deduction, there is zero income tax is also a welcome step. Other than these two steps, sir, if you critically examine the budget proposals, it is nothing full of promises and making slogans of having the Vikasit Bharat by 2047. Nothing is being proposed. It is not a growth-oriented budget. It is absolutely giving profits, concessions, exemptions and benefits to the corporates and nothing doing the common people at large. Sir, I will substantiate this matter. And further, one of the major allegation, not allegation, it is an assessment of the entire opposition in the country, that the Indian economy is slowing down. That is proved as correct and substantiated and ratified in the budget proposals. Sir, if you examine it, it is very clear. The allegation or the observation or the assessment of the opposition that Indian economy is slowing down is proved to be correct if you examine the budget proposals. Sir, the government is always claiming that it is the fastest growing economy in the world and the 3 trillion economy, the third largest economy, and coming to the 5 trillion economy by 2047 will become the Vikasit Bharat by 2047. Big propaganda and big PR management is going on. I would like to ask a specific question to the Honorable Finance Minister, whether the proposals of 25-26, budget proposals of 25-26 is sufficient to achieve the goal of Vikasit Bharat by 2047. Because it is not, because even the economic advisor to the government, chief economic advisor to the government, he specifically stated in the economic survey, if you want to achieve Vikasit Bharat by 2047, annual growth should be not less than 8% GDP growth is required. Is it correct? Because this year also you are envisaging only 6.8% as the GDP growth rate. If that be the case, how we are going to achieve the goal and the so-called goal of Vikasit Bharat or developed economy by 2047? That is the first question which I would like to make. Sir, considering to the performance of the government, the last year performance, the major chunk of the proposals in the last year or the current year's budget was to address the unemployment problem. So many programs were announced: PLIC scheme, New Employment Generation Scheme, Skill India program, which will create thousands and thousands of employment. That was the announcement made by the Honorable Finance Minister in the current financial year or the last budget. Sir, what was the budget estimate? Was 26,018 crores of rupees. And so far, the budget actual expenditure is just 15,286 crores. How we are going to address the unemployment? So the first time job seekers DBT scheme, support to the employees, credit guarantee scheme for the MSMEs, all these schemes are in the formulation stage. Nothing has been taken off. And so addressing the unemployment problem, it is also nothing has been done. So the proposals are not realistic. I have just started. The proposals are not realistic. The second point which I would like to make is regarding the budget is totally anti-federal.
Sir, so many members, honorable members have cited, devolution of tax revenue to the state is drastically declining through the budget proposals. Sir, the share of cesses and surcharges in the central government's gross tax revenue, if you kindly examine, in 14-15, the state share in the divisible pool was 32%, state has got only 27%. And the share of cess and surcharges in the central government gross tax revenue in 25-26, it is 13% of the gross tax revenue. In 2014-15, when this government has come to power, it was 9% of the GTR. And another point you kindly see, in 25-26 state share, it was 41%, but it is only estimated just 33%. Divisible pool is arrived after excluding the cess and surcharges. Sir, in this budget, Supriya Sureji has already stated 37, because customs tariff, customs duty, 37 items, custom duty and customs tariff is drastically reduced, and in that place, this agricultural improvement development cess is incorporated. I will cite one or two examples. Marble and granite, the present existing customs tariff was 40%. Reduced to 20% and added 20% agricultural infrastructure development cess. And solar module, 40%, reduced to 20% and added AIDC 20%. Footwear, it was 35%, it is reduced to 20% and 18.5% as agricultural infrastructure development cess. So indirectly, the Finance Commission is awarding 41% of the divisible pool. But unfortunately, you are getting only 33% because surcharge and cess is increasing day by day. I would like to know from the two political parties who are supporting the BJP-led government at the center, whether they are supporting Janata Dal United as well as the Telugu Desam party, whether they are supporting this thing, because the state share is being drastically taken away by means of the proposals of the budget. It is against the Finance Commission award. It is against the fiscal federalism of the country, which is being pursued since long. Sir, coming to the centrally, the argument of the government is we are having so many centrally sponsored schemes by which the share of the government has been increased. Sir, if that also we can critically examine, 24-25 centrally sponsored budget allocation was 5.05 lakh crores, but as for the revised estimate, it is just 4.15 lakh crore, 18% lower than that of the budget estimate has been spent. That means 90,000 crores of rupees is not being spent as far as the CSS is concerned. And similarly, allocation to the various ministries also, if you kindly examine, and also regarding the shift in the tax collection. Sir, the shift in the tax collection also 13-14, before this government comes to power, the corporate tax was just 3.5% of the GDP. Income tax was just 2.1% of the GDP. Now, after 10 years of BJP government in power, sir, 25-20, the IT collection, income tax collection has come to 14.4 lakh crores of rupees. That is 4.03% of the GDP. Direct tax collection, corporate tax collection has come down 3.03% of the GDP, that is 10.8 lakh crores of rupees. That means it is a corporate-centric budget is being pronounced all the 10 years. That is the reason by which we are saying that it is anti-common people. Sir, another very important point that is regarding the fiscal consolidation. I would like to seek the clarification from the Honorable Finance Minister. FRBM Act 2003 was enacted, and there is a strict stipulation that every 3 years, the continued 3 years, progressively deduction of the fiscal deficit, revenue deficit, general debt has to be reduced by, it is in respect of fiscal deficit. But now in para 109 of the speech of the Honorable Finance Minister, it is being stated that we will take our endeavor of the government to bring down the outstanding liabilities. I will. Outstanding liabilities to around 50% of the GDP by 2031. But there is no proposal in the Finance Bill 2025 that there is that the FRBM Act will be amended. I would like to know from the Honorable Finance Minister, without amending the FRBM Act, how the government is going to implement this new program. And another very constitutional question that is regarding the new schemes. So 24-25 in the budget, entry 27 demand number 30 was incorporated in the budget as new schemes allocated to the Department of Economic Affairs. 62,593 crores was allocated, spent only 9,000 crores of rupees. I would like to know, because the Parliament is not aware,
What are the new schemes? It is given. Yes, sir. I will. Please, one second. How this will be applicable without having the knowledge of the Parliament? How the new scheme? What are the new schemes? What is its conditions? Nothing is known to the Parliament, so that has to be cleared. And allocation to the various ministries also has come down like anything. So I would like to urge upon the Honourable Finance Minister on the two demands. One demand is that he requests for parity in the tax treatment for NRIs, OCIs under the new capital gain taxation rules for real estate property. Sir, I am concluding. And the last point is regarding the discrimination against the state of Kerala as well as Tamil Nadu. Sir, even in the disaster management, nothing has been awarded. So I totally oppose the budget proposal for the financial year. It is anti-federal, anti-people. It is pro-rich and pro-corporate. With these words I conclude. Thank you very much. माननीय सदस्य प्रधान बरुआ डांगरिया। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट में बोलने का मौका दिया। माननीय वित्त मंत्री ने इस बार की बजट समग्र और सुविचारित करके देशवासी को प्रदान किया। मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद और अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। इस बजट पर अमृतकाल की यात्रा को दिशात्मक शक्ति प्रदान करता है, जिसे हम भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता का बीच आगे बढ़ने का सक्षम हो। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत और हमारी यात्रा निरंतर आगे जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, डिफेंस, ईवी, क्लीन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता का पिलर मजबूत हो रहा है। यह न केवल घरेलू आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करते हैं, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन का प्रयोग भी जारी रखते हैं। दूरदृष्टि नेतृत्व और दृष्टिकोण के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। विकसित भारत की यात्रा असम के माध्यम से भी आगे जा रहा है। इस बजट पर असम के नाम रूप में 12.7 मेट्रिक टन का यूरिया प्लान स्वीकृति बजट पे दिया, जिसका वजह से हमारा किसानों का मदद होगा और यूरिया में आत्मनिर्भर बनेगा। ऊपरी असम की महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ है। हाल ही में हमारा चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट भी डिब्रूगढ़ में बनाया और अभी सेक्रेटेरिएट चल रहा है। लेकिन शहरी अभी एक प्रॉब्लम है कि उद्योगीकरण और विकास के लिए बोझ भी बनने जा रहा है। अर्बन चैलेंज फंड से अभी जो वित्त मंत्री ने ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, रीडेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में लाया, मेरा मांग है डिब्रूगढ़ शहर को भी इस बजट पे जोड़ा जाए। ये मेरा मांग है माननीय वित्त मंत्री जी से। असम में करीब 11 लाख युवक 15 से 29 साल का है, जो रोजगार का तलाश में है और काम की तलाश में है। और यही युवक को अगर सही में स्किलिंग किया जाए और जो भारत का अभी हमारा पार्टी का नारा है, भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ, उसमें राजदूत बन सकता है। और मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि असम में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग सेंटर असम को दिया जाए। मुझे सदन को अवगत करके खुशी हो रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी गुवाहाटी का निकट जागीरोड में एक सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है।
जिसका साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल और कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने मिशन लेके सेमीकंडक्टर का ऊपर में बल दिया और साथ में हमारा चीफ मिनिस्टर श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी जरूरत से ज्यादा मदद करके ये सेमीकंडक्टर स्कीम टाइम के पहले ये शुरू होगा, ये मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इसका साथ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, उसका भी मैं मांग गुवाहाटी में करता हूं। और साथ में IIT गुवाहाटी और कटिंग एज जो कंपनीज है उसका साथ लेके ये सेंटर गुवाहाटी में दिया जाए, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से मेरा विनती है। एक्सेस टू मेडिसिन इज ए फंडामेंटल राइट्स और यही एक्सेस एक फाइनेंशियल बर्डन भी बनने जा रहा है। मेरा प्रधानमंत्री कोशिश कर रहा है आयुष्मान भारत देके, और अभी ये बजट पे 37 मेडिसिन को जो बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा के और 6 दवाओं को जो हमारा 5% ड्यूटी लगा के उसको राहत देने का काम भी करने का कोशिश कर रहा है। और इसका अलावा डे केयर कैंसर सेंटर आने वाला 3 साल में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनेगा। ये भी मेडिकल सेक्टर में काफी उपयोगी होगा। साथ में 75,000 जो मेडिकल सीट अभी देश में लाएंगे और पहले साल 10,000 जो लाएंगे, जिसका वजह से हमारा देश को काफी फायदा मिलेगा। और इसका अलावा एग्रीकल्चर में हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव बजट दे रहा है और इस बार भी नयापन लाया। किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख तक उसका एनहेंस किया। इसका साथ में धन धन्य कृषि योजना से भी 100 डिस्ट्रिक्ट का जो इंक्लूशन करके किसानों का मदद करने के लिए इस बजट पे रखा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों का फायदा होगा। मेरा कृषि मंत्री से आग्रह है कि हमारा असम में भी काफी डिस्ट्रिक्ट को जुड़ा जाए, ये मेरा कृषि मंत्री से आग्रह है। इसका अलावा प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और हमारा असम का लखीमपुर सेक्टर देश का सबसे बाढ़ पीड़ित डिस्ट्रिक्टों में से एक है। और बारिश का टाइम में इन द मंथ ऑफ जून एंड अगस्त 1500 मिलीमीटर रेनफॉल होता है, जिसका वजह से नदियां फूल जाता है और एम्बैंकमेंट तोड़ देता है, जिसका वजह से बाढ़ और लोगों का लाइफ एंड प्रॉपर्टी काफी लॉस होता है। और पोस्ट मानसून सेशन में पूरा नदी सूख जाता है, जिसका वजह से हमारा नेविगेशन में दिक्कत आता है, ड्रिंकिंग वाटर में दिक्कत आता है और हमारा इरिगेशन में भी दिक्कत आता है। तो मैं इसीलिए ऊपरी असम की हमारा सुबनसिरी, गाय नदी, सीमेन रिवर और हमारा दिहिंग रिवर, इसको जोड़ के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करके हमारा जो लीन पीरियड में पानी का शॉर्टेज रहता है उसका समाधान करें। और साथ साथ में जो अभी मोदी जी का नेतृत्व में हमारा पूर्वोत्तर में 20 जलमार्ग मिला है, बेसिकली हमारा डिब्रूगढ़ तक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, लेकिन हमारा पानी का कमी से गुवाहाटी से बांग्लादेश बॉर्डर तक चलता है, अभी डिब्रूगढ़ से चलना मुश्किल हो रहा है। तो जो हमारा एक्सेस वाटर रहेगा वो कैनल को भर के हम 12 मास उसका कार्गो नेविगेशन का भी हम लोग व्यवस्था कर पाएंगे। मुझे बाद में मोदी जी का जो सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स TDS का जो मांग लिमिट 50,000 से 1 लाख किया, इसके लिए मैं सीनियर सिटीजन की तरफ से भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और साथ साथ में मुझे टाइम दिया बोलने के लिए, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं और बजट को मैं समर्थन करके मेरा वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। 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 माननीय सदस्य श्री रघुराम रेड्डी जी। रघुराम जी। Thank you, Speaker, sir. I rise to oppose the Union Budget 25-26, which was an opportunity to address the pressing economic challenges facing our country.
slowing growth, raising unemployment, rural distress, and global uncertainties. Instead, what we have received is a budget that weakens fiscal federalism, prioritizes election-driven announcements over long-term growth, and once again ignores Telangana development needs. Despite being one of the fastest-growing states, sir, Telangana contributes only 3% to the population of the country, but the GDP is 5% of the states, of the country's GDP, sir. Telangana has once again been neglected in the budgetary allegations. The union government has strategically reduced our financial independence, failed to support our key sectors, and turned a blind eye to our needs. India's projected GDP growth rate of 2024-25 stands at just 6.4%, the slowest in 4 years. The reality is that private investment remains weak, rural consumption is declining, and the urban wage growth is sluggish. A budget should provide a roadmap for sustainable economic expansion. Instead, what we see is a short-term tax stops and pre-election gimmicks that do little to boost long-term growth. Unemployment remains a crisis, sir. The government may lay claim to a rate of 3.2%, but private estimates put it at 8.05%, with youth unemployment significantly higher. The budget lacks any major employment generation programs. Telangana, with its robust IT and industrial base, was expected to target initiatives for startups, AI and MSME growths. Instead, we received nothing. Interest payments now consume a large part of the revenue receipts in 24-25 with no room for productive spending, sir. In 23-24, India exported 39 billion USD, while imports were 66 billion USD, which is a negative trade balance. Even MSCs, which employ 120 million people, have seen wage growth of only 13%, while inflation remains at 5.5%, eroding real income. In fact, 19,828 MSCs have shut down during 2023-24. The government speaks of rural prosperity, but has ignored Telangana's pioneering irrigation efforts. There is no support for major projects like Parbur-Ramgareddy lift irrigation scheme, despite it being 10 times bigger than the Koshi Canal project in Bihar that has received funding. The DPR was submitted in 2022, sir. The Bayaram steel plant has also not figured in this budget. There is a 180 crore pending grant under the AP Reorganization Act 2014, which remains unpaid under various heads. Chili grown extensively in Telangana, which is one of the largest consumed spices, does not get a board, but Bihar gets Makana board. If this government truly cares for farmers, why is Telangana, one of India's largest agricultural states, being ignored? A request for a sanction of 25 lakh houses and 10 lakh houses under the PMAY and the PMAYG programs was also ignored. Instead of investing in self-sufficiency, India remains the world's largest importer of edible oil, sir, particularly soybean and palm oil. 70% of India's oil is imported. The budget fails to provide a strategy to boost domestic oilseed production, hurting our farmers while increasing import dependence. Imported pulses are at a high in the last 6 years, some of which are imported duty-free. Despite Make in India push, India's manufacturing sector just contributes 2.6 to global manufacturing output. The government's talk of an Atmanirbhar Bharat, where is the actual support for manufacturing hubs like Telangana? Telangana has exhibited a robust economic performance. The below figures highlight Telangana's expanding economic base, its significant role in contributing to the nation's tax revenues. Like I said, 3% of India's population, but accounts for 5% of India's GDP. The state collected 5,211 crores GST in February 2025, making it the first time that monthly collections surpassed 5,000 crores. In anticipation of the union budget, the Telangana state government submitted proposals totaling 1.63 lakh crores to fund key infrastructure development projects. A significant allocation was sought for the construction of regional ring road to improve connectivity around Hyderabad. This has not received any funding, sir. Hyderabad metro rail expansion. Funds were requested to extend the metro rail to accommodate the city's growing transportation. No funds, sir. Godavari drinking water project phase 2 to link Godavari to Musi. The state aims to revitalize Musi river area, enhancing urban growth and environmental conditions. No funds, sir. Telangana, being an IT hub for information technology, anticipated funds to develop the ITIR near Hyderabad, intending to boost state IT industry and generate employment. No funds, sir, for this too. National Institute of Design and National Institute of Rural Development, no funds, sir, again. Industrial growth and infrastructure, approximately rupees 34,000 crores was proposed to boost industrial development, enhance logistics and support the growth of pharmaceutical sector.
This was also ignored, sir, along with a long list of pending proposals of the Telangana government. Sir, the world is facing a turbulent trade war, supply chain disruptions, raising protectionism, but this budget fails to equip our industries to tackle these challenges. India's trade in goods and service as a percentage of GDP has declined, sir. Instead of boosting exports, the budget focuses on import duties reductions that benefit select industries while doing little to encourage self-reliance. Financial inclusion remains a challenge, sir. Despite improvements, a significant portion of India's rural population lacks access to formal banking service. There is no concrete allocation for increased access to credit for rural entrepreneurs or for empowering SHGs and small business owners in Telangana. The budget continues to the trend of discriminating against southern states, sir. Southern states, sir. Despite being economic powerhouses, states like Telangana, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala receive fewer funds compared to politically motivated allocations for other states. Bihar, despite lagging, I'm not saying anything against the Bihar people, I don't mean anything, but despite lagging behind in revenue generations, has received massive central supports, while states like Telangana, which effectively utilize resources, have been ignored. Speaker, sir, this budget is a betrayal of our farmers, our youth and our industries. It is a budget that prioritizes short-term election gains over long-term national growth. The Congress-led government in Telangana is working tirelessly to create jobs, invest in education and support farmers. But we need the center to be a partner, not an obstacle, sir. The Congress party stands for real development. Development that empowers state, supports industry and creates jobs. We demand the government reconsiders its allocation and give Telangana its rightful shares in national progress. Sir, I am reminded of the Honorable Minister's beginning quote, Desamante matti kadoi, Desamante manushuloy, meaning the country does not mean its land. Telangana does not figure there. Country means its people. Telangana does not figure there. And a later quote, a Tamil quote, which says, just as living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. So I think we are going through drought, sir. We are not going to receive anything. And governance has been given a go-by. Telangana state seems to have been given a pass from both these courts, sir. In the last 8 months, the elections have finished. I think my BJP colleagues who have been elected need to work with us and put aside our political differences and work for the betterment of Telangana. How long are we going to be penalized for the earlier government's misdeeds? Speaker, sir, this is time we put aside our differences and do for something for the Telangana state. The country is something, the Prime Minister made a statement that it's inclusive. Doesn't look like it's included anything, sir. I will close by saying, kill not the goose that lays the golden egg, sir. I'm talking about the southern states. Thank you. सदस्य श्रीमती जोबा मांझी जी। जोबा मांझी जी। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय वित्त मंत्री जी का बजट के प्रस्तावना में विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने बजट की प्रस्तावना में स्पष्ट किया है कि यह बजट विकास में तेजी, समावेशी विकास, निजी क्षेत्र में निवेश, परिवारों के मनोभाव में उल्लास, मध्यम वर्ग के खर्च करने की शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य के लिए है। सभापति महोदय, यह बजट का लक्ष्य है विकसित भारत। विकास की तेजी पर सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। विकास के लिए नए नारों, योजनाओं के नए नामकरण से यदि विकास होता हो तो माननीय वित्त मंत्री जी के विकास में तेजी के बजटीय नारे पर विश्वास किया जा सकता। यह बजट शहरी बजट है, मध्यम वर्ग का बजट है। गांव के गरीबों, किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है। सभापति महोदय, बजट किसान केंद्रित नहीं है। कृषि क्षेत्र में निवेश का नियंत्रण है। धन धन्य कृषि योजना, मखाना बोर्ड, बीज मिशन, मत्स्य उद्योग, यूरिया यंत्रण से किसानों का नहीं उद्योगपतियों का भला होगा, विकास होगा। महोदय,
अखंडी जिलों के नाम पर सरकार नीति नई योजनाओं की घोषणा करती रहती है, जिसे आप लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जिला अखंडी जिला है, जिसके सभी प्रखंडों तक इंटरनेट की सुविधा भी नहीं उपलब्ध है। बैंक कार्य, अन्य छोटी छोटी ऑनलाइन कार्यों के लिए स्थानीय ग्रामीण को होने वाली असुविधा का आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूं कि देश के सभी प्रखंडों तक सरकार अविलंब इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करे। सभापति महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि आज फिर भी आपके माध्यम से सदन और सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि जनजातीय बहुल्य क्षेत्र सिंहभूम खनिज तथा प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में अत्यंत ही समृद्ध है। जल, जंगल, जमीन, पहाड़, खनिज से भरपूर इस क्षेत्र का देश की समृद्धि में बहुत योगदान है, परंतु नक्सलवाद एवं बंद खदानों का कारण रोजगार तथा विकास बाधित है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित और न्यायपूर्ण उपयोग के लिए बंद खदानों को चालू कराने, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के सृजन के लिए विशेष बजटीय प्रावधान का आग्रह मैं आपके माध्यम से सरकार को करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रस्ताव करना चाहती हूँ कि प्रास्ताविक ज्ञान भारतम मिशन के तहत हो जनजातीय भाषा को सरकार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करे। इसके लिए सरकार, झारखंड सरकार तथा उड़ीसा सरकार ने अनुशंसा की है। वर्ष 2020 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह किया था। मैंने भी पूर्व में ध्यान आकृष्ट कराई थी। अनेक अवसरों पर कई गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा भारत सरकार को ज्ञापन सौंपे गए। महोदय, सरकार के इस कदम से झारखंड के अलावा उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लगभग 25 से 30 लाख हो भाषा भाषियों के विरासत की रक्षा हो सकेगी। महोदय, नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अपने सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक जटिलताओं के कारण इस राज्य के विकास को गति प्रदान करने के लिए हमेशा से विशेष पैकेज की आवश्यकता रही है। मैं मांग करती हूं कि इस बजट में झारखंड के लिए भी विशेष पैकेज स्वीकृति की जाए। अध्यक्ष, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन सफल योजना नहीं है, क्योंकि हमारे झारखंड पहाड़ पर्वत काफी ऊंच नीच है, वहां पर जल जीवन मिशन उपयोगिता नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके लिए सरकार कुछ उपाय लगाए। झारखंड में इसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है महोदय। सभापति महोदय, इसके प्रावधानों में लचीलापन आवश्यक है ताकि सभी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में इसे सफल बनाया जा सके। कुल मिलाकर सदन में पेश किए गए बजट से किसानों में, गरीबों में, युवाओं में, महिलाओं में गहरी मायूसी है। मैं आपके माध्यम से इस अन्यायपूर्ण, असंतुलित, जन विरोधी बजट का मैं विरोध करती हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री डी रवि कुमार जी। மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்த பட்ஜெட் அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரான பட்ஜெட் என்பதால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் இந்த பட்ஜெட்டை நான் எதிர்க்கிறேன்.
அரசமைப்பு சட்டம் நமக்கு சமத்துவத்தை உறுதி செய்கிறது. அந்த சமத்துவத்திலே பொருளாதார சமத்துவமும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. நம்முடைய பட்ஜெட்டிலே மிக பெருமையாக நாம் சொல்லிக் கொள்கிறோம், உலகத்திலேயே 5வது ஜிடிபியாக இந்தியா இருக்கிறது என்று சொல்லி. அது உண்மைதான். ஆனால் பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி என்று எடுத்துக்கொண்டால் இந்தியா 140வது இடத்திலே இருக்கிறது. இது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால், இந்த நாட்டிலே பொருளாதார அடிப்படையிலே மிகப்பெரிய ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறது. அந்த ஏற்றத்தாழ்வை சரி செய்வதற்கு பட்ஜெட் முற்பட வேண்டும். ஆனால் இந்த பட்ஜெட் இந்த எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டியை இன்டியூஸ் செய்வதாக, அதை ஊக்குவிப்பதாக இந்த பட்ஜெட் இருக்கிறது. இது 4 என்ஜின்களை பற்றி நம்முடைய மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். விவசாயம், எம்எஸ்எம்இ, அடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட். இந்த விவசாயத்துறை மிக முக்கியமான துறை. இந்தியாவின் மக்கள் தொகையிலே 65 விழுக்காடு மக்கள் கிராமப்புறங்களிலே இருக்கிறார்கள். அது 47 விழுக்காடு மக்கள் விவசாயத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். முதல் என்ஜினாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற இந்த விவசாய துறைக்கு பட்ஜெட்டிலே நிதி ஒதுக்கீடு எவ்வாறு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்த்தால், கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டை விட இந்த ஆண்டு 3900 கோடி ரூபாய் அதிலே வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் நம்முடைய மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் அந்த விவசாயத்துறை என்கிற என்ஜினை ஆஃப் செய்திருக்கிறார் என்றுதான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அடுத்தது எம்எஸ்எம்இ துறை. எம்எஸ்எம்இ துறை இன்றைக்கு அதிக அளவிலே வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகிற துறையாக இருக்கிறது. ஆனால் அந்த எம்எஸ்எம்இ துறைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பல்வேறு சலுகைகள், அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் இந்த பட்ஜெட்டில் குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பட்ஜெட்டிலே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற இம்போர்ட் டியூட்டிஸ், அதிலே செய்யப்பட்டிருக்கிற குறைப்பு, அது இன்றைக்கு எம்எஸ்எம்இ துறையை நேரடியாக பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக அதிக எண்ணிக்கையிலே தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்குகின்ற சைக்கிள் உற்பத்தி துறை, காலணி உற்பத்தி துறை, ஷூ மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி, இது அதிக அளவிலே பாதிக்கப்படக்கூடியதாக, குறிப்பாக பஞ்சாபை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் அதிகமாக இந்த துறைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய இம்போர்ட் பாலிசியின் காரணமாக, அதிலே செய்யப்பட்டிருக்கிற வரி குறைப்பின் காரணமாக நேரடியாக சீனாவுக்கு இது அனுகூலமாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு எம்எஸ்எம்இ துறை சார்ந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். எனவே இந்த விதங்களிலே இது பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வை அதிகரிக்கக்கூடியதாக இந்த பட்ஜெட் இருக்கிறது. அடுத்ததாக இந்த நாட்டிலே பெரும்பான்மை மக்களாக இருக்கின்றவர்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், அவர்களுக்கான நல திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கான கணக்கெடுப்பு செய்யப்பட வேண்டும். அதற்காக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது நாடு முழுவதும் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. இதற்காக ஒன்றிய அரசு அமைத்த ரோகிணி கமிஷன் தன்னுடைய அறிக்கையை சமர்ப்பித்து நீண்ட காலமாக கிடப்பிலே இருக்கிறது. ரோகிணி கமிஷன் மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்திலேயே மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்கிறவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டின் பயன்கள் சென்று சேர வேண்டும் என்ற பரிந்துரையை கொடுத்திருக்கிறது. ரோகிணி கமிஷனை, அதனுடைய பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்தி ஒன்றிய அரசு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ், அவர்களுக்காக தனி இடஒதுக்கீட்டை வழங்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த பட்ஜெட்டிலே குறிப்பாக சிறுபான்மையினர், மத சிறுபான்மையினர், அவர்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு என்பது பொருளாதார ரீதியாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, கல்விக்கான ஒதுக்கீடு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பல உறுப்பினர்கள் இங்கே சுட்டிக்காட்டினார்கள். அரசியல் அரங்கிலே அவர்கள் ஓரங்கட்டப்படுகிறார்கள். இன்றைக்கு ஆளுங்கட்சியாக இருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு உறுப்பினர் கூட இஸ்லாம் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை தேர்தலில் நிறுத்துவது கிடையாது, வேட்பாளராக நிறுத்துவது இல்லை. ஆனால் அவர்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு என்று பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அது குறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதற்கான கல்விக்கு, குறிப்பாக கல்விக்கு ஃபெலோஷிப், ஸ்காலர்ஷிப் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து குறைக்கப்படுகிறது. இது மிகப்பெரிய அநீதி என்பதை நான் சுட்டிக்காட்டுகிறேன். அடுத்தது இந்த நாட்டிலே மிகப்பெரிய சமூகமாக இருக்கின்ற ஷெட்யூல் காஸ்ட், அவர்களுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு என்பது, இதை உறுதி செய்வது என்பதற்காகத்தான் 6வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் 1979-80 எஸ்சி சப்ளான் என்ற ஒரு திட்டம் இங்கே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஆட்சி அந்த திட்டத்துக்கு பெயரை மாற்றி இருக்கிறார்கள்.
அந்த திட்டத்துக்கு பெயரை மாற்றியது மட்டுமல்ல, எஸ்சி சப்ளான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது என்ன சொன்னார்கள் என்றால், எஸ்சி மக்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய மக்கள் தொகைக்கு இணையாக பட்ஜெட் நிதி ஒதுக்கீடு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த அரசு என்ன செய்திருக்கிறது என்றால், அதில் 50% பேர் அளவுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு 16.6% எஸ்சி பாப்புலேஷன் 2011 சென்சஸிலே. அதன்படி பார்த்தால் 8.3% இந்த பட்ஜெட் நிதி ஒதுக்கீட்டிலே எஸ்சி மக்களுடைய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும். ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக வெறும் 3% மட்டுமே அவர்களுக்கான திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்படுகிற கல்விக்கான திட்டங்கள், போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப். புரட்சி அம்பேத்கர் அவர்கள் 1944 ஆண்டிலே பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்திலே வாதாடி பெற்ற உரிமை அந்த போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப். அதற்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கிறார்கள். 2018 அந்த திட்டத்தை நிறுத்துவதற்கு இந்த அரசு முயற்சித்தது. அப்பொழுது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் பல எதிர்கட்சிகளும் போராடிய காரணத்தினாலே 2019 5 ஆண்டுகளுக்கு மட்டும் இதை நீட்டிப்பதாக அறிவித்தார்கள். 2025-26 மட்டும் அதுவரைக்கும் தான் இந்த திட்டம் நீட்டிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னார்கள். 35,000 கோடி ரூபாய் அதற்காக ஒதுக்கப்படுவதாக சொன்னார்கள். இதற்கு பிறகு அது நீடிக்கப்படுமா என்கிற மிகப்பெரிய ஐயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் எக்கனாமிக் சர்வேயில இனிமேல் ஸ்காலர்ஷிப் என்பது தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் பிலந்திராபிக் அடிப்படையிலே, கருணை அடிப்படையிலே ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதை பார்க்கும்போது இந்த திட்டத்தை நிறுத்தப் போகிறார்களோ என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. அதை பற்றி விளக்கத்தை உரிய அமைச்சர் அளிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இந்த போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு வருமான வரம்பு வெறும் 2.5 லட்சம் ரூபாயாக இருக்கிறது. 40-50 ஆண்டுகளாக இது உயர்த்தப்படவே இல்லை. இந்த வரம்பு உயர்த்தப்பட வேண்டும். இடபிள்யூஎஸ்க்கு மட்டும் கூட 8 லட்சம் இருக்கும் போது, ஓவர்சீஸ் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு 8 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்ட போது, போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு வெறும் வருமான வரம்பு என்பது 2.5 லட்சமாக இருப்பது மிகப்பெரிய அநீதி. அது உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகின்றேன். இந்த அரசு இந்த அரசு வந்ததிலிருந்து செஸ் சர்சார்ஜ் என்ற கூடுதல் வரிகளை தொடர்ந்து விதித்து 2014-15 9% செஸ் சர்சார்ஜ் மூலமாக வருமானம் இருந்தது. இன்றைக்கு 14% உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பட்ஜெட்டிலே ஏஐடிசி என்று புதிதாக ஒரு செஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இது மிகப்பெரிய அநீதி என்பதை சுட்டிக்காட்டி இந்த பட்ஜெட்டை நான் எதிர்க்கிறேன் என்பதை பதிவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बजट पे चर्चा करने के लिए समय दिया। मैं सरकार के इस बजट के विरुद्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, यह बजट 2014 के अच्छे दिन और अभी अमृत काल और 2047 की विकसित भारत की बात सपने जैसा दिखता है। महोदय, इस बजट में देश से महंगाई कैसे दूर होगी, देश से बेरोजगारी कैसे दूर होगी, देश से गरीबी कैसे दूर होगी और देश में किसानों की हालत कब सुधरेगी, इस पर कोई ठोस नीति इस बजट में सरकार का नहीं दिखता है। महोदय, किसान की आय 2022 तक दोगुनी होनी थी, लेकिन हकीकत में 2014 में 14 तक किसानों पर तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए कर्ज थे, जो इस दशक में बढ़ करके 32 लाख करोड़ हो गए हैं। महोदय, बिहार की अर्थव्यवस्था का 22% कृषि पर आधारित है और 76% बिहार के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं और सिंचाई की 48 योजनाएं बिहार की लंबित है। महोदय, ये चिंता का विषय है। महोदय,
पिछले एक दशक में 10 वर्षों में एनसीआर के डाटा के अनुसार 1,12,000 से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या किया महोदय। इस पर जवाब देना चाहिए सरकार को। आपने आय दोगुना करने की बात कही थी और आज 1,12,000 से भी अधिक आपके शासनकाल में हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम महोदय केसीसी की ऋण ने जो 3 लाख से 5 लाख बढ़ाने का काम सरकार ने किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट आप कैसे करेंगे? अभी 32 लाख करोड़ जो किसानों पर कर्ज है, कोई किसान 50,000 रुपया कर्ज लिए हैं और महोदय चक्रवृद्धि ब्याज उस कर्ज में लगती है। जो 50,000 किसान लिए उनको किन्हीं का 2.5 लाख हो गया है, 5 लाख हो गया है। जो 1 लाख लिए, 2 लाख लिए, किन्हीं का 7 लाख हो गया है, किन्हीं का 8 लाख हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज लगकर। और जब तक इन किसानों का जब तक वो ऋण नहीं चुकता करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये 3 से 5 लाख जो आपने किया है, मैं समझता हूं वो इसका वो लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी आग्रह होगी कि अगर ये सरकार सच्ची हितैषी है किसान की, तो या तो उनका ऋण माफ करे, अगर ऋण नहीं माफ कर सकते हैं तो कम से कम जो किसानों पर जो ब्याज लगा हुआ है उस ब्याज को माफ कर दीजिए और मूलधन आप उन्हें जमा करने के लिए कहिए। तो मैं समझता हूं कि किसान के लिए ये एक सरकार की अच्छी पहल होगी महोदय। महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की 14-15 करोड़ की आबादी पर मात्र एक एम्स है। हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात हुआ करती थी। मेडिकल कॉलेज हर एक जिले में तो नहीं खुल सकी महोदय, लेकिन इनकी भाजपा की हाई प्रोफाइल पार्टी कार्यालय देश के सभी जिले में खुल गई, लेकिन देश के सभी जिले तो मैं नहीं कह सकता हूं, बिहार के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकी। औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है राज्य की, 1 मिनट महोदय, राज्य की सरकार कई वर्षों से कह रही है, लेकिन ताज्जुब की बात है महोदय कि जिले के 8 एम्बुलेंसों में मात्र 3 एम्बुलेंस कार्य कर रही है, 5 एम्बुलेंस बंद पड़ी हुई है। और महोदय 1-2 एम्बुलेंस तो माननीय पूर्व सांसद औरंगाबाद के कोठी का शान बढ़ाने में खड़ा रहती है। इसलिए महोदय आपने हमें समय दिया, समय बहुत कम दिया। हमारी आग्रह होगी कि बहुत सारी बातें हैं बिहार हित के लिए, बेरोजगारी कैसे दूर हो, आप कैसे महंगाई खत्म करेंगे, उसकी कोई नीति बनाए। हमारी एक आग्रह होगी कि आप रोड की बात करते हैं कि चकचक हम बना रहे हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र का एक गांव में आपका जिक्र करके बताना चाहता हूं कि इस आजादी के बाद इमामगंज विधानसभा का एक गांव है, 3 गांव है, अभी तक वहां पर रोड और पुल का निर्माण नहीं हुआ है महोदय। इसलिए हमारी आग्रह होगी कि सरकार तमाम चीजों पर एक ठोस नीति बनाए और नीति बना करके काम करे, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा होगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय सदस्य श्री गजेंद्र पटेल जी। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2025 और 26 के लिए आम बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो रखा गया है, यह युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए और खासकर पिछड़ा जो आदिवासी समुदाय उसके विकास के लिए रखा गया है। और इसलिए ये बजट में मैं देश के 11 करोड़ जनजाति भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त
चुका हूं, धन्यवाद देता हूं। वास्तव में अगर विपक्ष के लोगों को उसका ध्यान से अगर सुनेंगे तो पिछले उनके 75 साल में से 55 साल तक उनकी सरकार रही, परंतु आदिवासी समुदाय के लिए कोई भी विशेष योजना उन्होंने लागू नहीं करी। इस बार के बजट में अगर तुलना करें तो पिछले 11 साल पहले आपकी जब सरकार थी तब आदिवासियों के लिए मात्र 4,497 करोड़ का ही बजट था, परंतु इस बार का जो बजट है जिसमें वित्त मंत्री जी ने 50,65,343 करोड़ के व्यय के लिए, जिसमें आदिवासी समुदाय के लिए 14,925.81 करोड़ का आवंटन सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए दर्ज किया है, ये बहुत गौरव की बात है। और निश्चित तौर पर विपक्ष के लोग कहते हैं कि आदिवासियों के लिए कोई योजना नहीं है। मैं उन लोगों से भी प्रश्न करता हूं कि जो 11 करोड़ आदिवासियों को जो विश्वास इस बार व्यक्त हुआ है, जंगल और पहाड़ में रहने वाला है समुदाय,